Hello everyone. Good evening, good morning, good afternoon. जहाँ पर भी आप हैं, आप सबके लिए जैसे प्रॉमिस किया था, I am live. Okay, give me one second. All right. So yes, Vibhor is all right. पहले तो मैं इसी से शुरू करूंगा. Vibhor is all right. अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले actually, and he is actually wrapping up something. So जैसे ही उनका वो काम खत्म होता है, we all know how things are and what all he is doing right now. So he is into too many things right now. So एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, आप जहां पर भी हैं, hope you are safe and sound. um, you know uh, Obviously, apart from what is going on, and of course what we all are here for, there's this issue of covid. So I hope wherever you are, you're staying safe. Especially India में मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत ही ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं. So please, all of you, take precautions, stay safe. uh, if possible, don't get out of the homes, and take care of your family. Recently abhi main dekh raha tha, a friend of mine lost his dad due to covid. uh, and a lot of people are getting impacted, so please stay safe. और दूसरा सबसे important, yes, Vibhor is also good. थोड़ी देर पहले बात हुई थी. He was actually in the middle of something, और फिर भी he chatted with me. He said, give me some more time, I'll be online. uh, yes, आप सबको live link देंगे. One of the things which we saw last night, आप लोगों की night, मेरी morning में, there was a lot of traffic, and looks like there were people obviously trying to access the link, and couple of things. So उस वजह से my internet got impacted, but right now everything is all good. I'm hopeful that we will again not be bombarded. तो वो link थोड़ी देर में आपको दूंगा जब Vibhor is here and Vibhor has shared some details. uh, and all your questions, बहुत सारे questions आ रहे हैं. Yes, I can see those questions. So आज tonight, और आप लोगों की morning है वैसे, तो आज all I'm gonna do is I'm gonna be just the moderator. I'm gonna make sure all your questions are answered. आप सबको मौका भी दिया जाएगा बात करने का विभोर के साथ. But most importantly, आप जितने भी ये questions लिख रहे हैं इस time पे, आपके सबके questions I'm gonna flash on the screen one by one. So expect a lot less talking from me tonight. Because last time से मैं observe कर रहा हूँ बहुत सारे questions होते हैं session के बाद. मैं देखता हूँ, और there are some good questions actually which should definitely be put forward to Vibhor. So हम जरूर उन questions को विभोर के सामने लेके आएंगे आज. So that's gonna be my goal tonight. But I would expect a lot of patience and a lot of support from you all, कि हम आज आज और भी डिटेल्स निकाल पाए. कल रात को बहुत बड़े खुलासे करे हैं विभोर ने. एंड that's another big thing. ये PUBG का बंद होना, और this new game coming out. It's real. I mean, it's not a coincidence. ये फौजी गेम बनाना, और बहुत सारे लोग, मैं भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, यहाँ पर एक रिलीज करना, एक 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 प्रोडक्ट का लॉन्च करना, इट्स अ ह्यूज टास्क. कितनी सारी चीजें, कब से उन चीजों को हमें देखना पड़ता है, कब से हमें उन्हें टेस्ट करना पड़ता है, पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ हमें ट्रायल करने होते हैं, इंटरनल टेस्टिंग टीम्स के साथ हमें टेस्टिंग करनी होती है. You cannot just release a game like that. So this is something which has been going on for a very long time. And when Vibhor जब join करेंगे, I think we'll be able to get those answers, because uh, it cannot be a coincidence, for sure, कि एक दिन तुम PUBG को बंद करते हो और अगले दिन फौजी आ जाता है. So I think there is definitely something behind it. And I am not the expert. I don't know the details. जिसके लिए we have uh, Vibhor, who will be talking about it. So we are definitely waiting for Vibhor to join. But आप सब जो इतने questions दे रहे हैं, I would request one more thing. Uh, CBI is still doing the investigation. So, at this point of time, मेरी personal जो एक
एक जजमेंट है या मेरी एक पर्सनल जो assumption है वो ये है कि we should still trust the prime organization. CBI will definitely do what is right. They will definitely you know get the stuff out. बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, and we all have to understand as well, just like you, I also kind of sometimes feel frustrated, I sometimes feel scared कि I don't know what is right, what is wrong, whether CBI is uh, अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरह से कर रही है कि नहीं कर रही है, I don't know. But at the same time, at this point of time, they are the prime authority, and we have to put trust in them. हर country के एक leader होते हैं. कुछ लोगों को वो पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं. But at the same time, you have selected those people to do a certain job. So I think we should definitely put full trust in CBI. We will definitely uncover a lot of mess. This case has brought up so much dirt, so much वो गंदगी जो छुपी हुई थी is really really scaring everyone, each one of us. इतना सारा कंटेंट लास्ट एक महीने में, ऑलमोस्ट 1.5 महीने में बाहर आया है जो I did not even anticipate, did not even expect. uh, okay, so let me see, I think Vibhor is messaging me. Okay, so looks like there is some more stuff that will come out tonight. uh, he has pinged me few things which I will be, looks like we'll be sharing on the screen. So jitne bhi aapke question hai, again, I am not the expert, I'm not going to be the one who's going to answer these questions. The moment Vibhor is here, we will definitely uh, talk about your questions as well. Yes. So jahan tak rahi ye Jigar, I'm going to flash your question right now. I just messaged to Vibhor. Please advise him to provide all the proofs to magistrate so that gets a closure soon. Absolutely, Jigar. I mean, it goes without saying. Right now, विभोर के पास या किसी के पास भी कोई भी प्रूफ होंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, I am very confident that they will pass on to the supreme authority. So don't worry about that. For sure, it will definitely be taken care of. And let me actually make sure I have all of this on my screen. Okay, you know what? I can show it from my. Yeah, so he sent me some details. I am gonna keep them handy for you all. Uh, so going back to your question, yes, I think he will definitely do that. Or not only Vibhor, right? I mean, Vibhor की तरह और भी बहुत सारे ऐसे warriors हैं जो इस टाइम पे इस इन्वेस्टिगेशन को अपने अपनी तरीके से कर रहे हैं. आई स्टिल रिमेंबर द डॉक्टर हियर इन यूएस who sent his preliminary kind of report के सुशांत के नेक के मार्क्स को देख के उनको लगा कि टेजर गन यूज हुई है and all that. So everybody is doing whatever they can. They will definitely share all the documentation. But at the same time, more than that, right, what this death has done is इतने सारे और गंदे सीक्रेट्स बाहर आ चुके हैं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के एज अ फैन बॉय ऑफ सो मेनी स्टार्स, आई हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम. एंड आई एम श्योर आप सबके साथ भी यही हो रहा होगा. पर अभी भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे देर आर सम फैंस इन स्टार्स के जो इनको तो स्टार भी कहना नॉट इज नॉट समथिंग हमें कहना भी नहीं चाहिए. ऑलराइट, लुक्स लाइक विभोर इज हियर बिफोर टाइम. हालांकि उन्होंने थोड़ा टाइम बताया था, बट आई एम श्योर ही इज गेटिंग फ्री. सो एंड आई एम गोना टेक हिम लाइव राइट अवे. नॉर्मली हम शो से पहले थोड़ा सा बात करते हैं, बट लेट मी सी इफ ही इज अवेलेबल. Okay, let me ping him. So looks like he's here.
Okay, let me get a green sign from him. Are we all good, Vibhor? Perfect. All right, here we go. So let me add him. And all right, welcome. Good morning, Vibhor. How are you? Good morning, Varun. Good morning, America. Good morning, India. Good morning, And entire good world. morning to Good and good morning. morning to entire world and all the Cesarians across the world. एब्सोल्युटली सब लोग बहुत देर से आपकी वेट कर रहे हैं. सब लोग बहुत डर भी रहे Uh, थे. Let me be very honest. तो मैंने उन्हें बताया कि you are in the middle of something, so आप अपने काम खत्म करके ही ज्वाइन करेंगे. So thank you for joining. Thank you so much. And I'm really sorry to all the people who have waited. I would surely make up for your delay in All this right. interview. Don't worry. Yes. So Vibhor, I think let's start. And a lot of people have been waiting, so let's not waste any more time. पहले तो हम एक बार फिर से शुरू करेंगे कि big success. The two of the culprits have been. One second, I think he's getting a call. RJ Rav Uh, Varun, just give me a second. Just give me a second. Sure, I'm getting an important call and I sure, need to take this one. sure. All right. So while we wait for Vibhor, last time he did reveal a lot of big names. He mentioned, and we all saw online around Amitabh Bachchan and Akshay Kumar and a lot of many stars. और उसके बाद से social media पे एक झड़ी सी लग गई है उन photographs की, where a lot more stars are seen with those ISI agents. And I like to call them terrorists, but बहुत सारे stars उनके साथ lunch, dinners, parties, car drive पे and what not, हर जगह दिख रहे हैं. So he kind of started that storm. Or आज भी looks like what he shared with me is something which I will share with all of you once he gives me some background. So एक चीज मैं पहले एक बार फिर भी clear करता हूँ. uh, uh, the Varun Kapur show is just a platform, and मैंने पहले भी एक बार ये बात करी थी और मैं अभी फिर वही करता हूँ कि it's just a platform. So Aj, we've been talking to Vibhor, but maybe tomorrow there would be somebody else who wants to talk and leverage this platform. So I encourage each one of you to please share this as much, ताकि जो भी सच्चाई को सामने लाना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, please go ahead and connect with me. I would love to have you on this platform. So this is just a platform. I have no affiliation to anything that is being said or done on this platform in a way के facts जो हैं वो उनके proof आपके पास उस speaker के पास होंगे. I am just gonna be a moderator, so I'm really making it very clear. At the same time, अगर आप लोग भी कोई बात, कोई topic, कोई छेड़ना चाहते हैं, I am available for you. So I will always make myself available whenever you want and whenever there is anything to be talked. All right, welcome back, Vibhor. I hope everything's Yeah, okay. आप जब भी ऐसे कहते हैं, absolutely. हम सबको डर लगने लग जाता है, सब लोग थोड़ा घबरा जाते हैं. But 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 I would have surely a very good news for you and all the Cesarians in next few hours. perfect. Let's start with where we left, and then we'll get on to the new things that maybe you want to talk about. But last night, couple of arrests. Again, your opinion, your thoughts, your what do you want to say right now? As I said yesterday also, Varun, it's just a start, and already Mumbai is shaking now. Okay. Let me tell you, the last night internet services were disabled in some of the areas in Mumbai because of there was an intelligence report of the riots being planned. Paramilitary forces is on standby in all the three adjoining states as well as Mumbai, जो उनका headquarters है. A lot of things are happening right now in Mumbai to save the mafia. So I would like to say I had a talk with Delhi a few minutes back, and I said, मैंने मजाक मजाक में कहा that sir, people are calling me opportunist, and she said, सही तो कह रहे, the person who was I'm talking to, and I was like, what, sir? कहता है, you have seized the biggest opportunity
to become a vital part of the campaign, which would end up in Mafia Mukt Bharat. So can we have this hashtag running? Mafia Mukt Bharat. क्या बात है. I would I would request every SSRian to tweet with hashtag Mafia Mukt Bharat. This is the plan of Delhi right now. We are working on it. Okay. All right. So So this makes me the biggest opportunist. absolutely, that's a very common thing. आजकल जो भी चल रहा है around the world regarding this सुशांत सिंह राजपूत case, बहुत सारे लोग बहुत सारे फिंगर्स उठा रहे हैं. नॉट ओनली ऑन जस्ट ऑन यू, राइट. आई मीन जो इस मुहिम में लगा है किसी ना किसी तरह से, चाहे वो मैं देख रहा था, आई फॉलो एवरीवन, राइट. तो मैं इश्करण भंडारी के पेज पे जाऊं तो वहां पर भी देयर आर पीपल हु सपोर्ट हिम, एंड देन देयर आर पीपल हु आर लाइक टॉकिंग a lot of nonsense. Everyone, So I mean, everyone is playing. you, Everyone is yeah, everyone is playing his own part. exactly. Now the point is who is playing good part and who is playing bad part. And but let me assure you, the bad part also plays an important role in realizing the ultimate goal of Mafia Mukt Bharat. Because So we should appreciate the bad part also. absolutely. Because उनके बिना तो हम काउंटर कर ही नहीं सकते. Okay. So let's before we get into the new stuff, बहुत सारे लोग बहुत से questions भेज रहे हैं, and I promised them today or tonight that I am just gonna be a very quiet spectator. I want them to talk to you directly. I really want them to address their questions. And I have been missing on this. I'll be very honest, क्योंकि हम जब बात करते हैं, I definitely am not able to take all the questions. But आज मेरा गोल रहेगा कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ला सकूं, एंड आई वुड लाइक यू विभोर टू हैंडल देम ऑन योर फेस एंड गिव अ रिस्पांस. सही गलत जो जवाब है इट्स ऑन यू. So let me kind of scroll up, but I have already posted one question. So Nico कह रहे हैं, hi Varun, Vibhor ji told yesterday that things about Akshay is an eyewash by PR, being a waiter, martial art, blah blah. So please ask as to why was that an eyewash. Truth needs to be out about those buggers. No, I didn't say that the entire truth of entire thing was I was waiter, martial art. I have no idea about it, and I'm least concerned with this person's life right now. My concern is his PR campaign about being portrayed as a nationalist in the grab of an anti-national activity. So the PR was needed to establish a new person into the national foray who would be treated as a full-on patriotic nationalist person. Got it. All right. What about Dhoni's silence? Well, I'm not Dhoni, so I won't comment on Dhoni's silence. It is up to him to speak or not. And if he doesn't speak, then it is on him. If he speaks, then it is on him. So let us give him the benefit of doubt why he is not speaking. So ये जो फौजी गेम है इसके डेवलपर एसएसआर थे या चोरी किया हुआ है बाय अक्षय कुमार? देखिए, as per our information, the original coding of the very same game, अब हमें नहीं पता कि इन्होंने खुद बनाई है. That is why I asked Akshay Kumar to give us the original codes so that we can investigate कि इसका original developer कौन है, और हमें पता है इसका original developer कौन है. We are still giving Akshay Kumar an opportunity to bring himself clean in this entire mess if he is not involved. I am saying it on record. अक्षय कुमार जी, अभी भी मौका है. प्लीज कम क्लीन एंड सेव योर इमेज जो बची कुची है, वरना आपको भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता. मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ. ओके, ऑलराइट. बहुत सारे लोग लिंक्स मांग रहे हैं इस वीडियो के. फर्स्ट लेट्स एड्रेस दीज क्वेश्चंस, उसके बाद वी विल गिव यू द लिंक. इट विल बी पोस्टेड ऑन द स्क्रीन. विच? हाँ जी. गेम का लिंक? नहीं, गेम का नहीं. सो बेसिकली एवरीबॉडी वांट्स टू जॉइन दिस सेशन. दे वांट टू टॉक टू यू वन ऑन वन. सो अभी थोड़ी देर में करते हैं. आई थिंक एवरीबॉडी appreciates that, so we'll do that but a little later. All right, any photos for Salman Khan marriage? Can't disclose right now. Okay. एक बार
as per the UAE laws, माइनर्स की उनकी पेरेंट्स के कंसेंट के बिना नहीं कर सकते, और क्योंकि उनकी वाइफ हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से नूर जी हैं, उनकी कंसेंट के बिना तो हम उनकी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो शी इज अ टॉप शॉट. Okay. So let's on that topic एक बार फिर से for the people who did not join that session, एक बार आप फिर से वो खुलासा एक बार फिर से कर दें कि सलमान खान की शादी कब हुई थी and about 2001 दुबई. okay, and what about his And family? 2001 Dubai. And he has two kids. One is a daughter named Aisha, and one is a son named Razak. Daughter was born in 2002. Looks like we lost Vibhor again due to bad network. So जैसे ही वो वापस आते हैं, we will definitely continue this conversation. Okay. I am flashing, but as soon as I get Vibhor, I will have him back. At this point of time, looks like he has lost his connectivity. So yes, that was a big revelation that I'm Salman. back. Okay, are you back? Yes, looks like you're back, right, Vibhor? Can you hear us? Yeah, I can hear you very loud and clear. Some internet problem again comes up. We Okay. are being a lot of cyber attacks on our network also. That is true. That is very true. Okay, on to the next question. If we boycott films, a lot of people associated with the industry will get affected. Government also gets a lot of tax on the. Can we actually do this? I couldn't hear you. Okay, can you hear me now? Okay. The voice is breaking a lot. There are network issues right now. Okay. Can you refresh? Can you disconnect and refresh again? Yeah, I. Okay. So let's wait for him. Looks like, of course, he's in a hilly area, and network ka to hum sabko pata hai कि it can lag a little bit. All right. So in next, I would say 15 minutes, I'm gonna post a link on the stream. तो आप लोग join कर सकते हैं and ask your questions. I'm still going through the list, and I'll try to take all of your questions that you've posted uh, on the chat itself. So let's wait for Vibhor. I don't see him here yet. So जैसे कि आपने सुना सलमान खान के बारे में, सलमान खान के मैरिज के बारे में, and pretty soon I think this all will come out. It would be really nice if Salman Khan himself discloses everything. Otherwise, you know how the media is, and they won't shy away. Once this is publicly out. All right, let's see. All right, Vibhor. Yeah. Oh, the screen looks better now. Actually, it's less pixelated. It's on the mobile data now. Okay. All right. Cool. Chalo. Next question is if we boycott the films, this will impact the Bollywood industry, right? So I don't know if this is a question or a comment, but I think that's a very logical thing to do. Absolutely. Can we actually do it? This is the question. This is the question that we should ask to all the 138 crore people of this country. Would they support anti-national activities, or would they support nationalist activities? Would they support an anti-national like Akshay Kumar, Sonu Sood, or any other Salman Khan, or would they support a nationalist, true patriot like Sushant Singh Rajput? This is the question that needs to be asked to the people of this country. Correct. Would like to understand how IPL and narcotics mafia connection gets exposed. Is there an IPL connection, Vibhor? Absolutely true, and I have already exposed how ISI, IPL, Bollywood are closely connected. All the top bookies are from Bollywood, including Arbaz Khan,
Bunty Sajde, they all are a part of a big betting nexus running into billions of dollars. Okay, that's big as well. तो जो आईपीएल जो अभी हो रहा है या प्लान्ड है अभी दुबई में, Hmm. so Hmm. all this is a very planned strategy, is what you're saying. All the top bookies are right now in Dubai, Okay. and the place is the same where Shah Rukh Khan owns a very big villa. The Uh-huh. same place, Palm Jumeirah. Okay. They are right now there, and we have all the eyes on them. And So yesterday only there was a big meeting between top cricketers and top bookies, as per my information. wow. So Vibhor, one question which is very common is trend में, वो ये है कि ये सारी information अगर आपको पता है, तो why is no action taken? Why does this not come out so openly, and why no action is taken on this? Who says that action is not being taken? The action is being taken, and if I'm getting notified, then it means that action has been initiated. Okay. All right. And the other question which he's asking is, why is Amitabh Bachchan quiet? I mean, I think it's a very common question now. इतने सारे Bollywood के stars जो भी थे, so called, everybody has been quiet for a certain reason. और एक reason तो विभोर ने कल रात को दिखा भी दिया, right? You wanna talk about that as well? Absolutely, they all are connected to ISI, and it is very and why they are quiet is not a issue. The reason behind their silence is an issue. The reason is if they speak, they would again end up doing a new mistake. But at the same time, being silent is also a big mistake. They are not understanding that. I don't know who is actually advising them. If I would have been an advisor, I would have told them to go and give a press statement. Being a Amitabh Bachchan's lawyer, I would have advised him honestly Correct. that it was such a come on, he's the star of the millennium. Most of the people would still go and watch his movies. Exactly. Anyway, so सब लोग वही कह रहे हैं कि this is looks everything is stolen. ये जो Fau-G बना है from PubG, it is definitely not something that could be done in like a week's time. This I has have a been question. I need to take a question on chat. Simple Minds. sure. Is Vibhor not warning the culprits? मैडम मैं उनको वार्न नहीं दे रहा, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि मैं आपसे 2 कदम आगे हूँ, आप कुछ भी कर लो, मैं आपसे 2 कदम आगे ही रहूंगा. So it is a part of strategy. Don't worry. And I'm not disclosing anything related to investigation. I'm only disclosing which needs to be come into public domain. And secondly, मैं उनको ये भी बता रहा हूँ कि आप अपने दिन गिनने चालू कर दीजिए. हो चुके हैं खत्म आपके दिन. The Bollywood started in 1930 and it ended on 14th June 2020 with the death of Sushant Singh Rajput. That is for sure. Right. I flashed the question here as well. Simple Minds ने लिखा है, Vibhor, what about proofs? How to trust you? Don't trust me. When did I say trust me? Don't trust anyone. Actually, I would say that. And the proofs, when the time comes, I would surely give it to the court. Because अगर ट्विटर कोर्ट होता तो शायद मैं ट्विटर पे डाल देता. ट्विटर is not the court. As simple as that and as blunt as that. अगर आपको ट्रस्ट करना है, it's your wisdom. If you can connect the dots with my narratives, then the people would trust me and they are trusting me. इसलिए 1 महीने से लोग ट्रस्ट ही कर रहे हैं मेरे. And that is the reason. पिछले 10 दिन में शायद ये चौथी बार है वरुण we are meeting. Yes. This is the fourth It one. is because of the trust that people are loving this show also. Am I right, Varun? Absolutely. A lot of Across, support, across, lot the, of lot across of the world. across the world, exactly. No, I completely agree, Vibhor. I think it's a matter of choice as well. जैसे आप हमेशा कहते हो कि we will bring certain things to the forefront. बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, और वो सबके लिए है. वो सिर्फ एक विभोर आनंद के लिए नहीं है. वो
वो एक मैं प्रूफ दे भी दूंगा तो कहेंगे व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्रूफ। राइट। हाँ, जिसको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन करता ही है। ओके। जिसको ट्रस्ट करना होता है वो पहली बार में ट्रस्ट कर लेता है। Absolutely, absolutely. All right, let's go to the next one. Are they doing arrest via NCB so that bail will be difficult to get? एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स अ वेरी स्पॉट ऑन एनालिसिस। एनसीबी में बेल ग्रांट नहीं होती, सालों साल नहीं होती, बाकियों में तो फिर भी हो जाती। सेक्शन 24, 20 एंड 27 जो लगाए गए हैं, नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड बेल इन दिस सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम So अनलेस एंड अनटिल। can you elaborate a little bit? What is NCB for वो लोग, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदी में बात करो, बहुत सारे कह रहे हैं इंग्लिश में बात करो, तो आई थिंक ट्राई करो कि आप दोनों में इन दोनों को जवाब दे सको कि एनसीबी क्या है, व्हाट इज दिस एक्ट, और कौन कौन कैसे कैसे इसमें NCB फंस is the सकते Narcotics Control Bureau of India, and हैं? it Okay. is governed under the provisions of the National NDPS Act, जिसका नारकोटिक्स का प्रिवेंशन का एक्ट है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट। सेक्शन 20, 24, 27, 21, 42 बहुत कैटेगोरिकल है। इतने स्ट्रिक्ट लॉज है कि 10-10 साल तक बेल नहीं होती। ओके। और इसके अंदर अभी तो किसको कौन कौन अरेस्ट हो चुके हैं इसके अंदर? अभी 24 24 हो चुका है, ओके। एंड सिद्धार्थ पिठानी हो चुका है, एंड इनकमिंग डेज बहुत सारे होंगे, सबको इसी में लपेटा है। मर्डर में जाए ना जाए, उम्र कैद में तो जाएंगे ही जाएंगे। और दिस इज अ बैकअप प्लान लीगली स्पीकिंग, कि ऐसे नहीं फंस रहे तो ऐसे फंसाओ। फंसाना तो है इन्हें, खत्म तो करना है इस माफिया को बाय हुक और क्रुक। साम दाम दंड भेद, ये हमारे पुराणों में लिखा है, हर चीज यूज हो रही है इस टाइम। राइट। तो साथ साथ आपके लिए ऑब्वियसली विशेस प्रेयर्स भी आ रही हैं, सो आई रियली वांट टू शो दैट एज वेल कि जहां थोड़ी बहुत हेट्रेड आती है वहां थोड़ा काफी सपोर्ट भी आ रहा है, सो यू नो बी एन Hatred is also very important. Critics are very important. This is not hatred. These are critics. They tell us to work hard more to gain their trust. These are the people who, अब मैं मोदी जी का सबसे बड़ा क्रिटिक होता था, तो उन्होंने काम करके मुझे अपनी तरफ ले आए ना, एंड नाउ आई एम ए सपोर्टर। नाउ आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर, आई एम अ मोदी सपोर्टर। आई डोंट वर्क फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके। बहुत सारे लोग अब तो ये कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आर सपोर्टिंग यू एंड दे आर शोइंग यू योर लव। सॉरी, गो अहेड। यस, माफिया मुक्त भारत, लेट्स मेक इट द नंबर वन ट्रेंड टुडे। कम ऑन एसेसारियंस, या ये मेरा ट्रेंड नहीं है, ये दिल्ली का ट्रेंड है। दिल्ली वांट्स इट एंड दे वांट इट फॉर एसएसआर। ओके। एंड आदित्य ठाकरे के बारे में भी पूछ रहे हैं। बहुत जल्दी उसका भी खुलासा कर दूंगा, डोंट वरी, ओके। वी आर आपको ऑन भी इट। और हमें भी सबको हैप्पी टीचर्स डे। Happy Teachers Day, Happy Teachers Day, and I take this opportunity to all the teachers who, because of whom I am sitting here with you all. उन्होंने ना पढ़ाया होता, उन्होंने सोटे ना मारे होते, तो आज विभोर आनंद ना होता। ऑलराइट, सो आई एम गोना कंटिन्यू स्क्रॉलिंग। मैं सारे के सारे ओके। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, यू नो दिस इज ट्रू। निखिल माथुर जो अभी शायद हमारे साथ सेशन पे भी ज्वाइन करेंगे, हाउ कैन somebody tag PM for a game? पीआर स्टंट, क्या चीज? पीआर नहीं। आत्मनिर्भर भारत में भैया, हाउ डू यू नीड टू बिकम आत्मनिर्भर? आप एक्टिंग से हर 4 साल में 4 बार बना के हर पिक्चर में 500 करोड़ 2000 करोड़ का बिजनेस कर देते, तो अभी भी आपको आत्मनिर्भर है। आपको औरों को बनाना है। द द द concept of Atmanirbhar Bharat was not to make yourself Atmanirbhar, to make others Atmanirbhar। आप गेमिंग प्रोजेक्ट से आप पैसा कमाओगे खुद, और बाकी लोगों को टाइम वेस्ट करने के लिए कहोगे। बट इट इज अ, अगर ये कोई नौसिखिए ने किया होता तो आई वुड हैव सपोर्टेड हिम। ये एक नया बच्चा आ रहा है, अपने आप को कर रहा है, लेकिन अक्षय कुमार, उनको क्या जरूरत है गेमिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की, पैसा लगाने की, या फिर मैं कहूँ चोरी करने की? आई वुडंट कॉल हिम अ चोर राइट नाउ, जब तक प्रूव नहीं हो जाता।
चोर वही जो पकड़ा जाए, पकड़े तो गए लेकिन हमें सबूत चाहिए, और उनके बाद एक मौका है अपने आप को साबित करने का कि वो चोर नहीं है। बाकी जनता की अदालत में तो वो ऑलरेडी गिल्टी प्रोनाउंस हो चुके हैं। अब राइट। एक्चुअल कोर्ट में ही बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट मुंबई पुलिस? बहुत चल रहा है इस टाइम पे कंगना और मुंबई पुलिस का आपस में फाइट, लिटरली फाइटिंग, और धमकी भी दे दी है। अब तो मैंने देखा था एक ट्वीट आया है कंगना का, आई थिंक दिस मॉर्निंग, कि मैं 9 सितंबर को लैंड कर रही हूँ मुंबई में, जो रोक सके तो रोक ले, किसी के बाप की मुंबई नहीं है, एंड ऑल दैट। दैट इज a little ferocious and little but what He's do a you tigress. He's a tigress. He would be ferocious. she is, and we all kind of Absolutely. support her, but can legal action or can any action be taken against Mumbai police? Mumbai police on what grounds? I mean, many actions can be taken, लेकिन कौन से फैक्ट कौन से उसमें देना चाहेंगे आप? Yeah, I think सबसे बड़ी बात जो आ रही थी कि the botched up investigation जो हुई है, जिसमें बहुत सारी That चीजें। is for that we are already working on the PIL, and Okay. a legal notice representation and oblique legal notice has already been served by two of us, Minu and me, to the Prime Okay. Minister office, and soon we are going to have a collective joint notice to them, and after that we file a PIL on behalf of all the people. Right now we have already got 3,500 signatures, and if you want to go to my pinned tweet and join the petition. Correct. तो वो भी हमने थोड़ी देर शुरू And किया था। Yep. Go ahead. if you want, you can flash the link of that tweet so that people can join. Sure, sure. We'll show that in few minutes. अभी बहुत सारे और क्वेश्चन आ चुके हैं. So what about Disha, Gopal Dalvi, NCP leader? It's a matter of investigation. Joy, I can't comment on it, but I can assure you that the investigation is going on in a full swing. Okay. Everybody wants to know. I think ये और भी कमेंट में देख रहा था, पहले भी देख रहा था, कौन कौन है ये pedophiles? I would love you to kind of speak about that as well. कौन नहीं है, सारे ही हैं. I think you've named few of them in the last session also. Hmm. सारे ही हैं. Everyone is fond of this kind of. This is actually problem. ये है वरुण कि in that society this is not seen as a crime. It is seen as a status symbol. उनको लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम वी वुड बी आउट, हमें एक अछूत मान लिया जाएगा सोसाइटी के अंदर. अरे तू ये नहीं कर रहा, तू कोक नहीं कर रहा, यू आर नॉट हैविंग चाइल्ड सेक्स, यू आर नॉट रेपिंग. So these are not considered as crime in Bollywood. ये तो आपका स्टेटस सिंबल है. Shameful, very shameful. Okay. Absolutely. सब लोग And आपको, and yeah, go more ahead. more simple is when a person from a humble background like Vicky Kaushal comes into it and becomes a part of it. Yep. I know. विक्की कौशल जी को अब शायद प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज द न्यू पैट्रियट. उड़ी के बाद अब सैम मानिक शाह के ऊपर पिक्चर बना दें, तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ पीआर. आपने उनको वीडियो में देख ही लिया था किस तरह से ड्रग्स कर रहे थे. Right, right. Okay. Uh, एक्चुअली रियल लाइफ हीरोज के ऊपर फिल्म बननी ही नहीं चाहिए एक्चुअली में, ऐसे लोगों के साथ. अगर आपको रियल लाइफ लोगों पे फिल्म बनानी है तो टेक रियल लाइफ पीपल ऑल्सो. right. आप इन बॉलीवुड के रील पैसा कमाने वाले लोगों को मत लीजिए. टेक टेक वरुण कपूर, टेक एनीवन. Varun can be a good actor. सही बात कह रहे हैं. You know. I mean, I'm also a good actor. All right. On a lighter note, I'm not. तो एक बार फिर से आई थिंक ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. नानी रेवंत ने जो लिखा है, आई थिंक लेट्स एड्रेस दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम. हाउ इज सोनू सूद रिलेटेड टू ऑल दिस? How is Sona deliberate? Absolutely, it was a very deliberate move in advance to convert a crisis into an opportunity to portray a new savior of the humanity. As simple as that.
COVID was a crisis. They needed a new face क्योंकि अक्षय कुमार की एंट्री बंद हो चुकी थी पीएमओ के अंदर. उसका उसको कुछ नहीं दिया जा रहा था. Neither he was being given anything. तो एक नया हीरो पोर्ट्रे किया गया. और मैं चाहूंगा कि एक दो फोटोग्राफ जो मैंने आपको भेजी हैं फ्रॉम इट इज फ्रॉम प्री कोविड टाइम्स, लेकिन उसमें जो बंदा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद सलमान खान एंड सोनू सूद. वी कैन फ्लैश द Okay, फोटोग्राफ्स. perfect. So let's yeah move to the thing that you shared, and why don't you talk about it? ये कौन है, क्या हो रहा है? The person, yes, the person in the black with Sonu Sood is none other than Yusuf Nurani, from a top shot from Mumbai who holds a fashion house also and the clothing chain across the world. Sonu Sood was with him for 3 months in COVID times, uh, before COVID and during COVID times in New York at his home. These are the photographs. कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स ही हमने निकाली हैं इनकी, तो कुछ नहीं है. And this man is a childhood friend of Amir Khan, Salman Khan, and a adulthood friend of Shah Rukh Khan. Very closely associated with both Anil Musarrat and Tony Ashai. Closely associated. All the works, all the Hawala network is by these two people. Are also managed by him. They are not all the, but he's a part of it. अचानक से वहां पे एक मीटिंग होती है सोनू सूद के साथ और मनीष मुंदा जी वहां पे उनके बारे में पता किया जा रहा है अभी. We will get a lot of details by today's evening. So he is flown back to India on a special flight, and all the charity works begin. रातों रात इनकी चैरिटी शुरू हो जाती है. रातों रात इनका सब कुछ हो जाता है. अप्रूवल्स आ जाते हैं, बसेज अरेंज हो जाती है, ट्रेन अरेंज हो जाती है, ऐप बन जाती है. And we have a record number of downloads on that app. And he is certainly the new savior of humanity during COVID times. Isn't that fishy? Yep. तो कई लोग कहते हैं ना प्रूफ दो, ये प्रूफ है. 25 साल की प्रूफ निकाल दी अब तो. All right. So with this, ये जवानी की फोटो है. इन सारी चीजों के साथ साथ आपने और भी बात करी थी कि मन मुंद्रा उनके बारे में थोड़ा सा कम बात की थी. तो मे बी इफ यू वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हिम, who is he and how is he part of this? He actually क्या है, he is a producer and owner of this Drishyam Films production house, and he was all the time during COVID. जब initial lockdown था, now he's in India, but at that time he was working from there, and suddenly out of nowhere he comes into picture, or all the people he pours in crores of rupees into COVID times as donations from US. उन्होंने, but at the same time he made it into a business. ऑक्सीमीटर बेच रहे हैं आजकल. अच्छा. आजकल सब कुछ कर रहे हैं. Okay. मास्क हैं, बेड्स हैं. एज पर आवर इंफॉर्मेशन उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने जो दिया वो महाराष्ट्र सरकार को दिया. बाकी जगहों पे तो दिखाया कि दिया, लेकिन 10% वहां दिया, 90% उन्होंने महाराष्ट्र को दिया. तब भी देने के बाद ना महाराष्ट्र में बेड्स है, ना महाराष्ट्र में पीपी किट्स हैं, और नंबर 1 तो कोविड में चल ही रहा है महाराष्ट्र. तो व्हाई वाज दिस ओवरऑल? मैं एक ना, can we flash a question for all the SSRians and all the people around the world? How many of people actually got help from Sonu Sood and Manish Mundra? Let's flash this question to people. आपने मांगी
मेरे पास 10-15 लोगों के तो मैसेज आ चुके हैं कि सोनू सूद और उनको हमने मैसेज किया. Let's start this question on Twitter also, and I'll tell my team to flash this question on Twitter, on my Sure. Twitter feed, whether they actually got any help from Manish Mundra or Sonu Sood in reality or not. ये मुझे पता है उनकी जो हैं वो सारे के सारे टॉप एक्टिविस्ट हैं जिनको मिली थी, जिन्होंने धंधा बनाया है. Got it. Okay. So let's take a public opinion Okay. on the Yeah. reality. Pranil Pratik. Okay. He's saying me. So Pratik, अभी हम link join करेंगे. Would love to hear from you as well. कि कैसी हेल्थ थी, and we'd love to hear from you. So Pratik, जब भी आप अभी we'll put the link. Please do join. बहुत सारे लोग बाकी कह रहे हैं कि nobody, and और भी बहुत सारे questions हैं जो आ रहे हैं, but yeah, let's wait for some responses. No, nope, बहुत सारे आ रहे हैं, and और भी questions हैं anyways. So yeah, we'll continue. I'm muting the mic. I'm muting. Okay. So yes, please go ahead. आप सब जवाब दे सकते हैं, और इसके बाद we will go back to some of these pictures again or some details around this. One second. Yeah. So we will talk more about this, and we'll continue to take you within the next 5 minutes. I'm going to put the link. तो आप लोग जो आप online आना चाहते हैं, connect करके इनसे बात करना चाहते हैं, we'll open the floor for you guys to join. And let's wait. He's a businessman. Okay. Yep. बहुत सारे comments भी हैं. Oh, this is huge. I asked for help for my employees. I owned a small restaurant. He did not get help. So आप लोग please. Can we get the Yeah, Mana Parvez ji, please. Please come online with us. Yes. So आप लोग please आएं, और आप मुझे Facebook पे भी tag कर सकते हैं. For everybody who's either saying a yes or a no, just make sure you try to join, and we'd love to hear from you live on air for these questions as well. Okay. You know what? I'm gonna flash the link for you all. Please go ahead and join. And एक बार मैं फिर से, before I flash the link, I'm gonna tell you one basic rule. We will only take those people who have their identity in front of us, who are not covering their face, who are not just an audio. We will only take those people. I apologize. Reason being, last time हमने किया था, and there was this mask man, and we really want to make sure कि जो हो रहा है ये public forum में हो रहा है. We would really want to appreciate your honesty as well. So here we go. I will flash this link now. Please come on in and ask your questions to Vibhor directly. All right. And yes, we are not going to stop till we get एक बड़ा common question आ रहा है, and I'm going to, instead of flashing right now because I'm flashing the link now, Vibhor, what about anything that has to do with Ajay Devgan? I don't know why this question is, but maybe you know it better. Has Ajay Devgan to do anything with all this? I'm back. Sorry, what? Can you hear us, Vibhor? Yeah, network issues, okay, as usual. So what about has Ajay Devgan? Can you hear me? No, it's cutting in and out. बहुत कट रही है बात. So maybe आप refresh करें while we start getting people to join this link. All right. I see people starting to join. Hello, Ganeshan ji. Hello, sir. Hey, minute, I'll just hold on, sir. Hold on. I think your YouTube is on the background running. I'll just pause it. Sure. Yeah.
Welcome back. Namaskar. I I'm think am I audible? yeah. Am I audible now? Yes, आपकी Yes, आवाज. sir. Yes. मुझे विभूर जी से एक विभूर जी ने जो कल या विभूर जी नमस्कार. कल विभूर जी ने एक डॉट जो मैं आई मीन रिविलेशन थे to mafia and how they were in continuing उससे related एक डॉट टॉपिक इंसिडेंट बताना चाहूंगा. In 2000, because as I said, I was brought up in Bandra. So there are a lot of incidents. One I will like to share with your permission if I can. Go ahead. Uh, around 2001 or 2000 or 2001, there's I mean, those days there was no Manse, there was one Shivsena party. और उसमें एक अभी अभी करंट एक मनसे में युवा नेता है. Okay, and he had I mean he was very young. He was a college junior to me, and he had an some I mean very petty fight with a peddler who is well known. I don't know his real name, but आपको पता होता है ये सारे peddlers के उर्फ नाम होते हैं. उर्फ नाम जो काफी पॉपुलर होता है. तो his उर्फ name was सांबा. सो ये जब हुआ था आई मीन कुछ हाथापाई या कुछ हो गया था. यू विल नॉट बिलीव कि इसका कॉम्प्रोमाइज या जो मांडवली बोलते हैं बॉम्बे लैंग्वेज में, दिस हैज हैपेंड इन द बंगला. आई मीन व्हेन आई से बंगला इट्स वेरी वेल नोन विच बंगला. तो इस इंसिडेंट से पता चलता है कि व्हाट कंट्रोल दे हैड. और जो भी ये चलता था, आई मीन एज विभू जी ने बोला है कि ये जो आई मीन whoever is in Bombay, whoever is in Bandra, they it's not a revelation for them because they know कि बॉम्बे में अगर कुछ चलना है, बी इट वाइट और ब्लैक और कोई भी धंधा, तो दोस आर द डेज जब तक बंगले का इन्वॉल्वमेंट या परमिशन नहीं होता है तो वो नहीं चलता है. हर चीज में तो इन्वॉल्व रहते हैं. हेलो Absolutely. हेलो. Yes. Yeah, तो yeah. ये एक डॉट था. तो आई मीन आई एम नॉट श्योर इफ ही नोज दैट नेम. सांबा करके एक वेरी वेल नोन पेडलर दोस डेज and very well connected. I don't know his real name. So this was one of the dot. Second, एक विभूर जी मुझे बोलना था. I mean, कल आपने ट्वीट किया था कि there are some people around. So I just wanted to know and or maybe give us कि आप अकेले I mean, I mean, there has to be people around you. I mean, good people around you. I don't know. I mean, staying नेटवर्क बहुत आपका चॉपी आ रहा है. बट आई थिंक what you're asking him is, the people around him. I hello. think he was able to figure it out, and he's been given some protection already. I'll speak on his behalf since he's not here. And Hello, am I? no, you're cutting in and out. Yeah, I was saying, Vibhorji, why you are staying alone? I mean, why are there people not around with him? I mean, it's Yeah, just a suggestion. we've lost him right now. I don't see him on the stream, so looks like he's definitely having some technical issues. But as I said, the last I know from him is he is right now safe. He is at a place where uh, he's been given protection as well. So I think we should be okay, and happy to know that. But at the same time, क्योंकि वो hills में है, so the network is definitely a big problem with him, and especially his time pay. And So is there anything? Varun, is there any Varunji, is there anything where there are many groups, many platforms which been done? Isn't anything which can be made to who? I mean, it's a voluntary thing where we, if help needed through an volunteer or an assassin who is around somebody. So ऐसा कुछ हम प्लान कर सकते हैं जहाँ voluntarily किसी को I mean who want to risk or not risk, that's voluntary call. But अगर कुछ
हम बात कर रहे हैं, बट बात के अलावा हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर कुछ एसओपी बना सकते हैं, या फिर वी वी वांट टू Right. on the ground, I Yeah. mean, not by just by talking, but Absolutely. No, I think I get your point. I think we can definitely, I think there are certain groups as well. And recently, of late, I've also been started, people have started adding me to those groups. So बहुत सारे ऐसे groups बने हुए हैं WhatsApp के and whatnot, जहाँ पर लोग share करते हैं कि क्या कर सकते हैं और, so definitely we can start that as well. That's a very good suggestion. And maybe what I'll do is and I I will. mean to be in specific, I mean to be in specific of protection assassin, which also related to be very specific, when there need to be a support on the ground rather than No, absolutely. We can definitely connect offline. Let's take it offline. We'll talk about it I and think मैंने काफी टाइम ले लिया. हाँ. तो अभी मैं वैसे भी I think Vibhor is off right now. Vibhor has been again Okay. disconnected. So जैसे ही वो आते हैं, I will make sure Okay. Okay. that those are addressed. But yeah, but let's chat offline. Okay. Thank you. Thank you for joining again. Okay, so before I take others or before I add anybody else to the stream, एक बार फिर से मैं request कर रहा हूँ, I will not add anyone who doesn't have a camera on. We cannot really take that risk again. एक बार हम कर चुके हैं already, so I'm not going to do it again. So please make sure when you join, you have your camera on. Vibhor will be back again in a minute. And so at that point of time, I think I'll start with you, Randeep Singh Thakur. So you'll be next. So you can put your question and your comments. Okay, so looks like Randeep. Is everyone else able to hear me? Yeah, Varun. Okay, all right. Looks like so. In that case, Yogesh, you'll be next now, and I'm gonna add a Yeah, few more people now to the stream. I'm just waiting on. I am waiting on Vibhor. So at this point of time, I'm gonna make sure I just have few people in the stream so that I can add him once he joins. So. Yes, I know a lot of people want to join, and the stream is definitely getting choked. But I will take you guys once Vibhor is back. Also, itna मैं जरूर बताना चाहूंगा. Vibhor has been constantly getting calls and he's constantly getting being pulled into certain things. उस वजह yeah. से भी ये session में ये बार बार होगा that he will come back and he will have to take those calls, and it is something which is important as well. So please bear with us as we continue to do this. And And I waiting for sorry him. to interrupt you, Varun. Actually, one thing I would like to know that Vibhor is secure now. He's getting threats, and some people are roaming outside his Yeah, home. yeah, So yeah. he Right. is secure At this right point of now. at this point of time, जितना उन्होंने मुझे बताया है, जितना मुझे पता है, उसके हिसाब से yes, he's been given some protection as well, and he is all good for now. और Okay. last night जो हुआ था वो भी I think it was not like a fake call, but basically there was protection in not in uniform. Let me put it that way. जो already they Okay. were kind of taking care of this because looks like he has a lot of stuff that he wants to share Yes. and he wants to talk. Yes. Correct. And anybody who does that is always at risk. So, Yeah. That's why we are worried. like somebody started. Let me others please mute. Okay. I see someone. Okay, I'm gonna mute all of you who are in the waiting list. I still hear my own echo. Okay. Okay. So I'm okay. I'm still hearing. Who is not Yeah. mute? Who is not mute? Okay. Okay. Now it's fine. So yeah, we're just waiting for Vibhor. Who is? Okay. So Kailash, I think you are the one who is having those issues. आपकी वजह से वो echo आ रहा है. So please join back again. Okay.
Now it's fine. So, guys, I'm so sorry. He had to take this call and he is off the stream. As soon as he joins, I'm gonna pull him in, and then we'll continue this conversation. But as I said, right now he is safe. He is definitely addressing all your questions. He will be, and जैसे ही वो वापस आते हैं, I will take him into the stream. So I appreciate your patience, everyone. And I know a lot of Yeah, people are yeah. trying. Thank you. A lot of people are trying. So let me do this for a minute. Uh, I'm gonna stop the stream link because I think people are definitely not gonna stop right now. So थोड़ी देर में आपको मैं stream फिर से दिखाऊंगा so that you all can also join. But this is definitely a tough job today. बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, which is understand. I can really understand your point. Uh, Varun, can you please tell me that we have joined late? So, Vibhor has discussed something on that that game Akshay Kumar is launching. So he's going to initiate some complaint against him. So, did he discuss anything about that? What Uh, exactly? a little bit. He's already mentioned कि he's now at this point of time, the way जो मैं समझ पा रहा हूँ विभोर को और विभोर के काम करने के स्टाइल को is he whenever he gets any information, he gives an opportunity to the person who is either a culprit or is involved or has something to do with it. So I think Yeah. he's already done that yesterday, where he tagged Akshay Kumar and he's asking him for the code and all that stuff, right? We all know, Yes. Yes. I'll be very honest again, even though he's on my platform, I'll be very honest. Akshay Kumar is not gonna do anything like that. I would love him to do that, but I know he will not do that. At the same time, getting the code and all that is not a big deal. I think Vibhor already mentioned that he knows, and people know who is the actual developer who has developed, and which he will definitely Hello. disclose very soon. Can you hear me? Hello. Okay, okay. So maybe Yeah. Yogesh, you're also having some internet issues. So people are saying I'm okay. So So, so yeah, so so basically we know who the developer who was working on it. We already, I think he knows it. Let me put it that way. And okay. all that information will come into public domain very soon because जहां तक मुझे अभी तक पता लगा है और जितना मुझे ये समझ आ रहा है विभोर के रेवलेशन से, a big factor in this death was this game. I leave it up to Okay. Vibhor, but I think it's all about money, drugs, all this nuisance that's going around, जिसकी वजह से we lost Sushant, Sushant. which is very Oh sad. my God. They are just like a devils. They are not hero. They are Absolutely. just devils. And वही लगे हुए We हैं, I can't. think सारे लोग मिलके इस टाइम पे we are everybody is fighting this battle together because we really want to get the culprits out. बहुत देर हो गई, बहुत साल हो गए, बहुत ही lives हमने lose करी है, and there was one news yesterday. Looks like somebody has also spoken about Jia Khan's death also. So some Yes. relation on that side as well. So सारे सच अब बाहर आएंगे और बहुत सारी बातें और भी बाहर आएंगी और इतना mud slinging होगा एक टाइम पे आके that we don't know what will be the, but one thing which is very clear that this Bollywood has really, जिसे कहते हैं ना, वाइप करके स्क्रैच से शुरू करना चाहिए. That's where it looks. Literally. We can't afford these kind of heroes. We want just want a, you can say, raw talent. Not every time this kind of nepo talent and devils. Exactly. We have actually government. If you can raise some question that government should follow some rules and regulations, should apply some rules and regulations because they are free to do anything. They don't have any regulation. They don't have any set of uh, anything. So Right. contract should be designed by government. Everything should be designed. Some testing should be happen like players. We have dope tests. So Yeah. some set of rules should be there for Bollywood. Right. Exactly. Without this, we can't make them because they have money, they have power, they have connection. They can do anything. True. True. No, absolutely. I think government agency, yeah, एक neutral agency. All right. Welcome back, Vibhor. Can you hear us? Vibhor? Yeah, the network.
Yeah, we can hear. Yeah, just checking with Vibhor. So Vibhor, अगर आप सुन पा रहे हो तो okay, he's definitely having some technical issues. Looks like Aj. Uh, so let me check if he can connect with some other network. Okay, Vibhor, can you hear us? Yeah, loud and clear. Perfect. और अब better है. All right, Can guys. you, So we are back in business now. can Looks you, like yes. please? All right, go ahead, Yogesh. You were next. Hi, Vibhor. Thank you for your time. I have just a very small and 2 दिन से एक क्वेश्चन मुझको सोने नहीं दे रहा है. जैसे आपने पहले बोला था कि इम्तियाज खत्री और सूरज पंचोली को अनऑफिशियली उठा लिया गया है. बट आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट कि अगर अनऑफिशियली किसी को कस्टडी में लिया है तो उनके पास अपने वकील होंगे, तो वो बेल ले सकते हैं. या तो विदाउट एविडेंस उनको उठाया गया है तो बेल मिल जाएगी. अगर एविडेंस है तो ऑफिशियली क्यों नहीं लिया गया कस्टडी में, अनऑफिशियली क्यों लिया गया? तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को. अरे यार, looks like we lost him again. ओह सॉरी. Yeah, so I think he's आप been वरुण आप समझे क्वेश्चन को मेरा right. नहीं आप कि अगर उनकी yeah. Now I get your question, and it's a very valid question. I think a lot of people would have the same question. So I think let the expert answer that question. Okay, Vibhor, can you hear us without the video? Maybe you should just turn off your video for some time so that you can answer the questions. Okay. Yep. I think we'll have to wait for him. I'm so sorry. Nothing in our control. yeah. So जैसे ही बातें हैं, I think I'm gonna suggest him not to turn on the video so that थोड़ी bandwidth तो बचेगी. And Yes, that correct. we can at least answer the and we can have him only without the video. So Vibhor, if you can, let me actually ping him. Oh wow. Okay, so let me see. Now I'll have to look for him again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. All right. Sorry, guys. I will have to stop this while we wait for Vibhor to join. I only have one open window, so I don't want to kick anyone out. Okay, he's checking. He's gonna reset and then come back again. So meanwhile, I see a lot of questions already, and we will continue putting those questions also to him. But just hold on for Vibhor. Okay. Okay, he's trying to join again. Okay. So meanwhile, while we're waiting, right? I mean, while we're waiting for him, I would love to know, आप लोग कहाँ से हैं? You know, all the SSRians. Let's start with you, Yogesh. Where are you from? I think you forgot me recently. I think yesterday or day before yesterday, I am from Mathura. Oh, And Mathura. Right. yeah, अरे यार, yeah. I've been meeting So I'm thousands following. of people right now. मेरी brain Yeah, बिल्कुल fry हो चुका है इस time पे, to be yeah, following honest. you hardly. You can say very, very deeply. We are following you, watching your channels and watching the Vibhors. Yeah. So you can say we are also part of your team. Absolutely. So yeah, directly, indirectly, we are Yep. connecting with you. And it's just not So about this, right? I mean, even though we are still doing the
Sushant Singh, I'm anyways an RJ. I also have another show. Do join on Sunday as well, where I am interviewing Yeah. Salim Suleiman and and Okay, singers as well. great. So वो भी आप जरूर join करें. I would love to have you Yeah, guys. definitely, बहुत प्रेशर हुआ definitely, हुआ है definitely. सारों के ऊपर, बहुत सारे लोग हैं, everybody is tense these days. COVID है, all the jobs की tension, family में, घर में सब लोग frustrate हो चुके हैं. So I think that's a good, Yes. a way to keep yourself charged. So I'll share more details later. But all right, thanks, Maddie. Where are you from? Hi, Varun, how are you? I'm from Melbourne. Hope you're doing well. You're from Melbourne. All right, great. Anirudh, where are you from? Sir, I'm from Delhi. All right. वरुण है यार मेरा नाम. No sir. All right, श्रुति जी, आप कहाँ से हैं? I'm from New Jersey and my cousin is from Boston. Hi, हम लोग सब अभी यहाँ पे 2 बजे. We're with you, Varun. Our brain is fried too. Wow. So. And good job Appreciate here. Very proud of Very you. proud of and, you, and we stand with you, and we are with the SSR family. and happy to be here with all the SSRians. I know. Good luck. Good job, guys. Absolutely. No, I think that's what keeps everyone motivated, right? And keep going, because we are all getting a lot of heat from a lot of sides, and okay, Vibhor is back. ये जो billboards उतार रहे हैं and all that, they are trying to kind of break us. But आपसे पूछना था वरुण कि हम लोग भी सोच रहे थे, एक्चुअली हम अपनी तरफ से जर्सी में, बॉस्टन में लगवाना चाहते हैं. जितना उतारना चाहे उतार सकते हैं. हाँ, but हम और लगा देंगे. Yeah. बट जिन लोगों ने लगवाया है, जैसे लवली हैं और भी लोग हैं जिन्होंने अटलांटा वगैरह में लगवाया, तो we want to find out कि how did they go about it. Yeah. And I will कैसे connect you. Just हाँ. ping me offline. I'll connect you with Lovely. Okay. And हालांकि जर्सी में I think there is one location already up, but yeah, more than happy to जर्सी में कहाँ पे? Oh, हाँ, तो any idea which वो location? उतरवा देंगे तो हम दूसरा लगवा देंगे ना, तो वो जितना उतरवाना ping you. चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं. Ping me offline. Just ping me offline. I'll connect Okay, you we and send you the location as well कि कहाँ पर है अभी. We will. Sounds Thank good. you, Varun. Thank you so much. Thank you. Stay tuned. I'll Yes. quickly go over. Vibhor is back, and I will get back to you, Jitesh, Anoop, and Bhushan. I will check with you guys later. कोई पता नहीं Vibhor का network कब बंद हो जाए. So let's go ahead with Vibhor and the question. Yogesh, go for it. Problem Vibhor network sir. ही नहीं है, problem is some calls here. There are thousands of I calls. know. We know. Actually, thank God that you are safe, and we have. Please be clever and be. You are very much. So बहुत safe रहना आप. तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को चिंता हो गई थी लास्ट जब हमने मैसेज सुना था आपका. तो एंड एक मेरा क्वेश्चन था जो मेरे को बहुत 1-2 दिन से परेशान कर रहा है. जैसे आपने बोला था इम्तियाज खत्री और सूरज पंचोली को अनऑफिशियल कस्टडी में लिया गया है. तो वी नो दैट दे आर पावरफुल. जो जब उनको अनऑफिशियल लिया गया है तो उनके वकील ने उनको जमानत क्यों नहीं दिलाई? अगर विदाउट एविडेंस लिया गया है तो वो बहुत जल्दी मिल जाती. और जमानत तब होती है जब ऑफिशियल अरेस्ट अनाउंस होती है. तो ऑफिशियल अरेस्ट ही अनाउंस नहीं है, कानूनी तो तौर फिर पे लीगली वो लोग अभी भी फ्री हैं. हमें पता है कि वो नहीं है. यानी कि वो फ्री हैं या कस्टडी में? समझ नहीं आया, कंफ्यूज. मैं कह रहा हूँ कानूनी तौर पे दे आर फ्री, लेकिन Okay. अनऑफिशियली दे आर इनटू विद द कस्टडी ऑफ सीबीआई. प्रॉब्लम क्या होती है तो जब ऐसे- हार्डकोर क्रिमिनल, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ योगेश. जब हार्डकोर क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है तो उनके लिए बहुत सारे बड़े बड़े हमारे प्रोफेशन के लोग खड़े हो जाते हैं. तो उनसे बचने के लिए क्योंकि पुलिस कस्टडी कभी भी 3-4 दिन से ज्यादा की नहीं मिलती, तो इट इज नॉट नहीं पॉसिबल मिलती है. फॉर. करेक्ट. और ऐसी कॉन्स्पिरेसी को सामने लाने के लिए कम से कम 25 से 30 दिन की कस्टडी चाहिए होती. तो हाउ डू वी गेट इट? कानून के हिसाब से 14 दिन से ज्यादा की कस्टडी नहीं मिल सकती, वो भी टुकड़ों में मिलती है. ओके. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी. इसलिए हम लोग अनऑफिशियल कस्टडी लेते हैं कि उन्हें उठा लेते हैं और डिक्लेयर नहीं करते. लोगों को लगता है अभी भी भागा हुआ है, अंडरग्राउंड है, लेकिन वो हमारी कस्टडी के अंदर है. ओके. यानी कि उनको उठाया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बट लोगों को लगता है कि दे आर आउट या अंडरग्राउंड. एब्सोल्युटली. पर उनके फैमिली मेंबर्स तो कंप्लेन लिखा सकते हैं, एफआईआर बाय लॉस्ट की और समथिंग, कि दे आर लॉस्ट और वो लिखाते रहे किडनैप्ड. जब तक
जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, हमारे पास जब हम ही डिनाई कर देंगे हमारे पास है ही नहीं जी, ढूंढते रहो। ओके 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 जब ओके, थैंक यू। ये थोड़ा सा अगर ये क्रिमिनल्स अपने आप को शाणा समझते हैं तो हम इनसे ज्यादा जेल से आने हैं। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को वो कर रहा था। थैंक यू विभोर, और बी सेफ प्लीज। या Thank you so much. Absolutely. Thank you so Thank you much. for joining. Thank you once again. All right. Randeep, you want to go next, please? Hi Varun, hi Vibhor. Hello. Hi Randeep. Congratulations on this at the outset. Varun, thanks for moderating this. Vibhor, thanks for spearheading this. हम सब लोग lost थे कहीं ना कहीं, and now we are all united. I have a couple of things. Will not take much of a time. First thing, Vibhor, आपको मैंने personally email करा है। आपको शिमला में, हिमाचल में कोई इशू आता है, just let me know. In case of SOS, let me know if I can be of any help. Second thing, Vibhor, my query is on जो अभी अक्षय कुमार का इशू सामने आया। Somebody, अक्षय कुमार Guys, Good. everybody else, please Hello. mute yourself. All right, go ahead. Yeah. Please mute, yeah. So, Vibhor, अभी जो अक्षय कुमार का इशू सामने आया है, अक्षय कुमार जी बहुत कन्वीनियंटली यूके भाग चुके थे इस इशू से पहले। Now what I doubt is there any possibility that he is directly involved in the murder and probably he took some data with him outside At India? this time, Is there a at this possibility? point of It's time, just we are not ruling any possibility. कोई भी involved हो सकता है। Everyone is under the radar, everyone is under the scanner. right. सबूत मिलेंगे तो उनको उठाया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। कोई अक्षय कुमार कानून से बड़ा नहीं है, कोई सलमान खान कानून से बड़ा नहीं, कोई विभोर आनंद कानून से बड़ा नहीं, कोई नरेंद्र मोदी कानून से बड़ा नहीं। Everyone would face the wrath of law if they have done anything wrong. Let me assure you that. Right. And I'm glad this is coming up, Vibhor, through your resources. One more thing, Vibhor, पता नहीं ये हमारा जो ट्विटर पे ये जो यूनिटी चल रही है कब तक चलेगी? My suggestion is there is like एक official association. Absolutely, we can make it absolutely. and We would. share our लेकिन resources उसके लिए possibly. family को सामने आना पड़ेगा. We cannot do it on our own part. Let me talk to the family members. I'm in touch with few of them. Right. And this is not the only cause. This will go on. Absolutely. This is the beginning of it. Thank you Jai so much. and I'll call you back. Thanks a lot. I have your Thank number. you. All right. Thank you so much, Randeep. Really appreciate it. All right. Shruti ji, go next. Shruti and... Hi, can you hear us? Yes. Absolutely. Okay. Loud. Hi, Varun. This is Shruti. I'm Sunandini. हम दोनों अभी जर्सी में हैं. Hi Varun. Hi बोल चुके हैं. Hi Varun. Hi Hi Vibhor. Hello, पहले Shruti. विभोर जी आपको बताने पड़ा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, and like we are very impressed और आपको एकदम follow कर रहे हैं, and like really we praying for you and praying for success with all the SSRians की justice मिल सके, and we are with you, but please stay safe. And without taking more time, हम दोनों के पास एक question है, तो Shruti, you want to go first? So thank you, Vibhor, for standing up for this whole cause. And my question to you is, Jia Khan case में, that's so clearly a murder. That's what we feel. And CBI had investigated that case too. लेकिन वो क्यों दब गया? वो despite a CBI, उस टाइम पे पावर में ऐसे लोग थे जो सलमान खान एंड गैंग के पूरे कंट्रोल में थे. लेकिन अभी देखो तो वो अभी भी कंट्रोल में है, सलमान खान वगैरह. वो दौर चला गया जब सलमान खान किसी के ऊपर गाड़ी चला के ये साबित कर देता था कि गाड़ी पता ही नहीं किसने चलाई है. अब वो छीकेगा भी ना तो पता लग जाएगा. जी hopefully हाँ. So I would get to know that he is sneezing. Okay, good. तो कल मैंने यही तो बात बोली थी रात को लाइव में. मैंने कहा अक्षय कुमार जी बेल बॉटम की शूटिंग में बहुत दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो. अच्छी से आप मेरे पे नजर रख रहे हो, मैं आप पे नजर रख रहा हूँ शिमला में बैठे. सलमान तब तो नहीं बच गया जेल जाने से, इस बार तो होपफुली नहीं बचेगा. एंड तो विभोर जी, मेरा
क्वेश्चन ये था कि आई एम वरीड कि ये सुब्रमण्यम स्वामी का जो एंगल है, पहले उन्होंने ही वाज अ बिग वॉइस, ही वाज, उतना तो क्रेडिट डेविल को भी देना चाहिए कि ही हैड अ बिग रोल, है ना, कि ट्वीट किया उन्होंने, जिसकी वजह से मूवमेंट काफी आगे बढ़ी और मीडिया लाइमलाइट में बात आई। लेकिन अब उन्होंने ऐसे पलट मार ली है, थोड़ा लाइक अलग कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ही स्टिल हैज अ मास फॉलोइंग, अभी भी काफी लोग उनकी काफी बातों पे, तो ऐसे स्प्लिट आ जाता है नहीं फैक्शन में। तो मेरा सवाल ये है कि उनको कैसे अपनी तरफ किया जाए, थोड़ा वो आएंगे नहीं जी, वो मैकियावेलियन। आएंगे नहीं, उनको अपनी तरफ किया ही नहीं जा सकता, वो किसी की तरफ नहीं आ सकते, वो सिर्फ खुद की तरफ होते। जहाँ अगर उन्हें लगेगा उनका फायदा है तो वो आ जाएंगे अपने। होपफुली जस्टिस की तरफ, मतलब विश्वास कैसे करें, राइट? एक जना जो शुरू में इतना लगा देखिए, कि बार बार ना मुझे पिन मार देते हैं आप लोग, और मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी के नाम पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, हाइपर हो जाता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक केस बता दीजिए जिसमें उन्होंने कंप्लीट किया हो, नेशनल हेराल्ड से लेके राहुल गांधी तक, पालघर से लेके सुशांत सिंह राजपूत, निर्भया में आए, निर्भया केस में आए, जब वो भी जुवेनाइल के लिए लॉ मेकर होते हुए उन्हें ये नहीं पता था कि कानून क्या है, तो पब्लिसिटी के लिए डाल दिए कि उसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, जबकि उन्हें सब कुछ पता है, लॉ बैकग्राउंड से हैं, पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से हैं, कि कानून में लिखा था कि 3 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती, फिर भी पब्लिसिटी के लिए निर्भया केस में घुस गए और बेमतलब में बेइज्जती करवाई। तो ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ जंपिंग इनटू हाई प्रोफाइल केसेस। मेरे पास एक फोन आया था पालगढ़ के लोगों, पालगढ़ साधुओं के लिए जो काम करते हैं, वो कह रहे सर पिछले 3-4 महीनों से इस बंदे ने हमारा फोन नहीं उठाया, एंड ही, और ओपनली कहा था मैं सीबीआई के लिए डिमांड करूंगा। तो उनको जस्टिस नहीं चाहिए क्या? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है सर सुनना, बिकॉज अंदर की बातें तो हमें पता नहीं है। आई रियली वांट, आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन, बड़े हैं सब कुछ है, लेकिन मैं उनके नैरेटिव्स के सख्त खिलाफ, बिल्कुल मैं उनकी इस चीज के सख्त खिलाफ। if you are giving hope to people, don't break that hope. एग्जैक्टली, या जब से ठीक है ना। मैं मुझे आज एक ना एक दिन हो गया आए हुए, मेरा नैरेटिव अगर बदलाओ तो मुझे बता दें। वेल इंशाल्लाह यू कीप गोइंग एंड आपका सक्सेस मिले, आपकी सक्सेस हम सबकी सक्सेस है। एग्जैक्टली। आपकी सक्सेस मेरी सक्सेस है। एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ विभोर जी और वरुण जी, आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहीं पढ़ा था रूमर में दैट ये जो ठाकरेज हैं उन्होंने दे वेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेट अमित शाह एंड मैंने कहीं पढ़ा था रूमर दे ट्राई टू मीट, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। ओके गुड। वो मैंने ब्रेक की थी कि पहले संजय राउत को भेजा गया, उसके बाद उद्धव ठाकरे खुद गए। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। तो उस समय स्थापना कर दिया गया था, वी डोंट वांट टू मीट यू। बहुत बढ़िया। Okay, perfect. We are glad that it's going in the right direction. Thank you so much. Thank you, Varun. Thank you, Vibhor. Thank you, Thank you Varun so much. Thank you for joining. All right, let's go. Maddie, you're next. Hi, Vibhor and Hello. Varun. Firstly, congratulations. You've been doing a great job. Last 1 week से follow up कर रहा हूँ आपको. Firstly, good job. आपका ये देख रहा था अभी अक्षय कुमार जी ने जस्ट अभी 20 मिनट पहले ट्वीट किया है, काम पे ध्यान दीजिए, दाग पे नहीं, #निर्मा एडवांस। ये कुछ सरकास्टिक लग रहा है। 5-7 करोड़ रुपए आ गए होंगे पब्लिसिटी के लिए निर्मा की तरफ से, ट्वीट मार दिया, पेट ट्वीट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना वो कल फौजी का हिसाब से आपको ट्रोल हो गए, वो उसका जवाब दे रहे हो? देखिए, जवाब देना ना देना के ऊपर है। अब जवाब मेरे को देंगे तो जनता को देंगे, जनता को नहीं देंगे तो कोर्ट को तो देंगे। और शो। अच्छा, और दूसरा एक सवाल था, ये जिस स्वामी जी है क्या बेबी पेंगुइन को बचाने में लगे हुए हैं, क्या है आपका? आप बेबी पेंगुइन तो बोलते हो, क्यों पेंगुइन को बदनाम करो? बड़े प्यारे हैं यार वो लोग। पेंगुइन एसोसिएशन आप पे केस कर देगी, और अगर किया तो मैं केस लड़ूंगा।
एक्सटिंक्ट क्रीचर है ना, वो दूर से आए हैं, दूर में रहते हैं। नहीं यार, पेंगुइन बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं, उनको इतना बदनाम मत करो। आदित्य ठाकरे बहुत अच्छा नाम है, आदित्य ठाकरे बोलो, नेम एंड शेम देम। तो आपको क्या लगता है, स्वामी जी बचा रहे हैं उनको, क्या है, डील वील हुआ है ये कुछ? बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखना ये एक तरफ वो है, एक तरफ हम लोग हैं। ओके, अभी शतरंज की बात ही चल रही है, वो अपने दाव खेल रहे हैं, हम अपने दाव खेल रहे हैं। और एक से लास्ट क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई नो देयर आर अदर पीपल वेटिंग। देखो, आई श्योर लाइक अर्नब जी एंड यू नो अदर पीपल हैव ऑलरेडी गॉट सम इनसाइडर न्यूज़ लाइक यू आर हैविंग राइट नाउ, सो वो लोग कभी लाइक मीडिया में फ्लैश करेंगे या ऐसा कुछ वेटिंग टाइम है, क्या चल रहा है पीछे? देखिए, ये तो अर्नब गोस्वामी से पूछना पड़ेगा कि मैं अर्नब गोस्वामी नहीं हूँ। ये तो अर्नब जी का डिसीजन है कि वो न्यूज फ्लैश करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। उनका चैनल है, वो एडिटर इन चीफ है, ही इज द अथॉरिटी। जब मेरे को अथॉरिटी आती है, मैं अपनी न्यूज फ्लैश कर देता हूँ। जब उनकी अथॉरिटी आएगी तो रिपब्लिक भी फ्लैश कर देगा। ऑलराइट, थैंक यू, होप यू हैव अ ग्रेट डे। Thank you for joining, Mary. All right, Jitesh ji, go for it next, please. Hey, Welcome back. Vibhor. Hey, Varun. वेलकम बैक। Hi, thanks. Yeah. मेरे दो तीन क्वेश्चंस है actually. So first is about the Shovik and Samuel Miranda. अभी ये नॉन बेलेबल अरेस्ट हुआ है कि क्या? I mean, what is the from a law point of view? What is जो सेक्शन लगे हैं वो सारे नॉन बेलेबल है, जिसमें इनको जमानत ना मिलती। okay? Because that was I heard it's a non-bailable. But again I heard like if Ria get arrested under these clauses, being lady, she can file ऐसा bail कुछ भी नहीं actually. है। Is it like there is? तिहाड़ जेल में जाकर देखिए, बथेरी औरतें Okay. 5-5 साल से पड़ी हुई हैं जो ड्रग पेडलिंग के केसेस में। अभी Okay. Then my second question, somewhere I was reading, I think I was reading on the Ujjwal Trivedi's blog or YouTube, like they are trying to turn Dipesh Sawant as a upward. तो उसमें कुछ ट्रूथ है? Is there any truth in that Dipesh Sawant they are trying to मैंने turn? बहुत पहले से ही बोल दिया था, दिपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, सब लोगों ने अप्रूवर बनने के लिए हाँ कर दी थी, या ने भी हाँ कर दी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीबीआई कि वो किसको अप्रूवर बनाता, किस पॉन को बचा के वो बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे। ये सीबीआई के ऊपर है, आरटीबी के ऊपर। लेट अस वेट फॉर देयर डिसीजन। But that is a possibility, right? I mean, somebody can turn it up. Absolutely. And that is not a bad thing. अगर हमारे पास थोड़े एविडेंसेस कम है, we can use their services. Okay. और मैं होप करता हूँ संदीप सिंह will be get someone quickly. देखिए सारे के सारे जीते जी, संदीप सिंह के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए हो? Because I think संदीप सिंह हार्ट अटैक आ जाएगा, हमारा काम खराब हो जाएगा। थोड़ा शांत रहो। मुझे लगता है संदीप सिंह की दिशा ये इस केस को सही दिशा दे सकते हैं, संदीप सिंह बिल्कुल दे रहे हैं जी, वो बिल्कुल दिशा दे रहे हैं। अब मैं सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके। और मैं नाम चीजें पब्लिक डोमेन में हम नहीं बता सकते। राइट करेक्ट या और मैं नाम भूल गया, सोनू सूद के साथ किसके साथ पिक्चर खिंचवाए थे न्यूयॉर्क में? अभी आप बोल रहे थे मोरानी, यू सेड यूसुफ नूरानी। यूसुफ नूरानी, और ही इज आल्सो पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर। नहीं, ये मुंबई का है जी, मुंबई का है। ओके, ये तो मुंबई बेस्ड आईएसआई हैंडलर, ये बोलो। ओके, that's a news actually. I never heard about that. At least टोनी आशाई का सुना था, इसका सुना था, बट सोनू सूद है। हमारे देश एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान की बर्बादी में हिंदुस्तानियों का ही सबसे बड़ा हाथ। ओके, You have to accept this reality. यही है जिनको जयचंद बोला था। Right. And I have another question for Varun. I mean, the billboards actually in Indianapolis, if I have to do it, I'll message you or I'll try to reach out to you. Please connect offline. आप सबको मैं यही बोलता हूँ, जो बिलबोर्ड या अदरवाइज और भी ऐसी कोई चीजें हैं जो करना चाहते हैं, connect with me offline. As much as I can help, as much as I can connect you, I would love to do that. Sure. Okay. Yeah. Take care, guys. Thank you. Sure. Thank you so much.
All right, Arup, please go next. Yeah. Hi, Varun. Hello. Vibhor ji, namaste. नमस्कार अरूप जी. वरुण जी वरुण जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई गॉट कनेक्टेड विथ योर चैनल ओनली यस्टरडे. तो मैंने कल ही थोड़ा सा सुना विभोर जी का. जब मैंने सुना द काइंड ऑफ रेवलेशन व्हिच आई गॉट टू हियर फ्रॉम विभोर जी, व्हिच वाज लाइक मेरा दिमाग सिर्फ आपका नहीं, आई मीन आई स्टार्टेड हैविंग या क्योंकि ऐसा चीजें दिस काइंड ऑफ रेवलेशन आई हैवंट हर्ड फ्रॉम एनीबॉडी एनीवेयर इन एनी ऑफ दिस यूट्यूब चैनल. नोवेयर. न्यूज़ में तो खैर बोला भी नहीं जा सकता शायद दे हैव देयर ओन म्यूटेशंस और समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे में फिर ये लगा कि मुझे बात, अगर मुझे कहीं मौका मिले, if I could get an opportunity to speak to Vibhor ji, it will be really nice, you know, and I'm really happy and surprised कि आज मुझे ये कनेक्ट हो गया. मैं तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं पहले का सुना नहीं हूँ, कल ही मैंने जो भी सुना है थोड़ा बहुत कल ही सुना है, तो मुझे ये बात समझना चाहता हूँ कि ये मोटिव जो है, ये इज दिस द गेम एंगल or this has got to do with the child trafficking angle, या there is something more to it, या it's a combination of these two, या क्या है मतलब? I mean, this is something which I सर wanted to ask you मोटिव के first. पीछे ही तो हम लोग पड़े हैं, हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल मोटिव क्या है बेचारे की मौत का. इसीलिए तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. Okay. We are trying to find out, we are trying to connect the dots. What was the exact reason which led to his murder? We are very close to it. The entire story is Okay. coming out, and we would be hopeful Right. that you would be hearing from the direct from the official sources pretty soon. Okay. So मतलब the case is expected to be I mean finished by कब तक मतलब? I mean, can we expect to hear something closer to it the next 2 weeks? देखिए, if you want to ask me when would you get complete justice, so I'll be very honest, and I would not give any false hopes to any SSRian. It would take years to come. Indian judicial system को मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो. I'm still a young guy. So let us be very prepared to go for a long fight of years. अभी तो चलो हम अरेस्ट के ऊपर हैं, फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर मर्सी पिटीशन है, फिर रिव्यू पिटीशन है, फिर मर्सी पिटीशन है, फिर रिव्यू पिटीशन. दिस इज द पैथेटिक स्टेट ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम दैट वी हैव टू गो थ्रू. वी कांट हेल्प इट. आई वोंट गिव एनी फॉल्स होप्स टू एनीवन. कोई आपको फॉल्स होप्स दे रहा है कि जी हम 3 महीने में जस्टिस ले लेंगे, 6 महीने में ले लेंगे, मैं बोलने वाला था कुछ. So at least, I mean, we नहीं are on मिलेगा. the right path. The beginning has happened. Beginning has happened. We are on the right track, but it would take years of fight. This is just a start. अभी तो 3 महीने हुए हैं. 3 महीने में भी अभी 10 दिन है. तो you have to go a long way. सबसे पहले तो इनको अरेस्ट करवाना है सबको. उसके बाद चार्जशीट है. चार्जशीट में एविडेंस should be full proof. अरेस्ट होने से ये नहीं होता कि आप कन्विक्शन आ गया. लोग कहते हैं अरेस्ट हो गया कोई बात नहीं, बेल हो जाएगी. सबसे बड़ी दिक्कत है चार्जशीट शुड बी फुल प्रूफ. इसलिए सीबीआई टाइम ले रही है, इसलिए ईडी टाइम ले रही है, इसलिए आपका एनसीबी टाइम ले रही है. तो दे वांट अ फुल प्रूफ केस. इसके बाद जैसे निर्भया केस था, डिस्पाइट ऑल द लूप होल्स इन द चार्जशीट, किसकी वजह से जस्टिस मिला? जनता की वजह से. So we have to make sure that this momentum continues for next 5 years. उसी के बाद जस्टिस मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा. तो मैं कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहा हूँ. जस्टिस की पार्ट्स होते हैं, जैसे कल मिरांडा और पकड़े गए. दिस वाज अ पार्ट ऑफ जस्टिस. 1%, 2%, 3%, वी वुड हैव अ लंबी फाइट. मैं तो कहता हूँ अभी किसी को पूछ लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी से कितने, अगर वो लड़ते हैं केस, तो कितने महीनों में जस्टिस दिलवा देंगे, जेल करवा देंगे. जरा उनसे सवाल पूछ लीजिए. नहीं, अभी कल से तो मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में भी आपके मुंह से जो सुनने को मिल रहा है, तो उसके बाद तो ये एक दूसरा गेम भी चल रहा है अंदर ही अंदर. ये तो उसका तो मुझे खबर ही नहीं था इनफैक्ट. सो वी हैव आई हैव बीन फॉर सुब्रमण्यम स्वामी टोटली एंड कंप्लीटली. लेकिन एक्चुअली अरूप जी प्रॉब्लम ये है, वी आर ब्लाइंड फॉलोअर्स. हम ब्लाइंड फेथ करते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ
यूज योर बेस्ट ऑफ द ब्रेन. भगवान ने मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं दिया, उतने 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 वो दिया, बस हम यूटिलाइजेशन के ऊपर. हाउ यू ऑप्टिमसली यूटिलाइज योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड अ फैक्ट. सबको दिख रहा था सोनू सूद, मनीष मुंद्रा, ये वो सारे बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन वी कुड सी द इंटेंशन बिहाइंड इट. करेक्ट. तो या हर क्योंकि मैं भी आया हूँ इस केस में, मेरी भी इंटेंशन है. देखिए, पकड़िए. अब हर चीज में अपने राज में मैं अपने मुंह से तो नहीं खोलूंगा ना. मेरे राज खोलिए. मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ. सर एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, ये अभी जो कंगना राणावत ने भी एक चैलेंज ले लिया है विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड शी चैलेंजिंग कि मैं 9 तारीख को आ रहा हूँ, क्या बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ लो, क्या कर सकते. आई मीन ये किस तरफ जा रहा है? आई मीन गोइंग टू गेट इनटू अ सिचुएशन कि सुशांत सिंह को भूल के सब कंगना राणावत के पीछे पड़ जाए, उनकी स्टोरी लाइमलाइट में आ जाए, ऐसा कुछ. या she is doing what is required to do. These people needs to be taken head on. करेक्ट. आई मीन दैट वे आई एम टोटली एंड टोटली फॉर कंगना राणावत. मैंने भी कल अनिल देशमुख जी को बोला. मैंने कहा, उन्होंने मुंबई पुलिस के ऊपर कुछ टिप्पणी की, बहुत अच्छी पुलिस है, ब्रेवरी, और मैं वो दिख गई हमें सुशांत के केस में. और रही बात आपकी कंगना जी को धमकी देने की, तो मैंने कहा जी, ना मुंबई आपके बाप की है, ना मेरे बाप की है, ना किसी और के बाप की है. मैंने तो ओपनली किया. So we need to take these people head on. Correct. Right. Arup, many Thank people you. waiting. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thanks. Yeah. Thanks. Bye. All right, Bhushan. Bye, Vibhor. Yeah. All right. Thank you. Bye Bye. bye. Go for it, Bhushan. Hey, can you hear me? Yes, loud and clear. Hi, Varun, Vibhor, and all SSRians. I am originally from Nagpur, but I've been based in Washington, D.C. for a long time now. Varun, I have a request that, if you need any kind of help in promoting the billboards or anything related to SSR case, I'll surely reach out to you on your Facebook page. Sounds good. Thank you. And Vibhor, आपने थोड़े टाइम पहले एक ट्वीट डाला था जिसमें आपने कहा था डिप्रेशन के बारे में. You were on the brink of suicide. I committed it. 2 बार कर चुका हूँ. एक बार 2010 में, एक बार 2019 में. I'm not afraid to accept it. नहीं. तो और उस वक्त पे मैंने आपको अपना नंबर शेयर किया था because I have lost someone in my family via suicide. So और तो I hope that अभी since it's a long battle and you have a lot going on your end, I hope that you and your family stay hale and hearty throughout this process. Thank you so much. एक बार मुझे फिर से DM कर देना. बिल्कुल. सारा नीचे चला. मैं आपको DM करता हूँ, आप unread रहता है. Probably many people are reaching out to you. So आपका हैंडल क्या है? अब डोंट टेल मी अगर anonymous हैंडल है. मेरा हिंदू सैफरन टाइगर. ओके, समझ गया. ठीक है, पढ़ा हुआ मैंने. राइट. I'll get back to you. Sure. तो मेरा आपसे ये सवाल है, 3 सवाल है, बहुत छोटे सवाल है. पहला सवाल ये है कि आपने इतने सारे क्लेम्स किए हैं या फिर आपने इतने सारे बातें कही है, बहुत बड़ी बातें कही है. यहाँ पे मतलब मेरे को रातों को नींद नहीं आती है सुन के. सही में मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ और इसलिए मैं अलग रूम में रहता हूँ, कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम देम. मेरा ये कहना है कि कुछ बातों पे आप जो कहते हो उस पर विश्वास नहीं होता है, बट कुछ बातों पे होता भी है. तो आप CBI के पास में प्रूफ्स खुद लेके जाओगे, क्योंकि देयर इज अ चांस दैट दे मे नेवर रीच आउट टू यू, बट सिंस यू हैव मेड सच बिग क्लेम्स विच आर लाइक, विश्वास नहीं होता है. आई मीन माइनर बॉयज फ्रॉम पाकिस्तान. सॉरी. या अब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी जो सोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज के. तो मैं सबूत लेके जाऊं ना जाऊं, वो मेरे पास आ जाते हैं, वहीं से आते हैं. मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है उनके पास. ओके. तो आप तो ये जो इन्फॉर्मेशन है भैया, मैं ख्याली पुलाव सपनों में तो नहीं देख रहा ना. राइट. और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई ऐसी बात कही हो कि जो पॉसिबल ना हो. पॉसिबल होने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें जैसे लाइक आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू
कि माइनर बॉयज फ्रॉम पाकिस्तान और ये सब चीजें जो है इट्स लाइक कभी भी सुनने में नहीं आया है एंड इट्स लाइक जस्ट सुनने में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कभी इस चीज की ओर ध्यान नहीं दिया। हम अपने, आप नागपुर में थे, आप पढ़े लिखे, फिर वॉशिंगटन चले गए, आप अपने करियर में सेटल हो गए। वी डिडंट रियलाइज कि ये सब भी चीजें होती हैं देश के अंदर। अब हमें मौका मिला ये सब चीजों को, मेरे को भी नहीं पता थी जब तक मैं इन चीजों में नहीं पढ़ा था 7-8 साल पहले। राइट हमें लगता था कि मनोहर कहानियों वाली शाहरुख खान की कोई लड़की आएगी, हम ऐसे करेंगे और वो आगे गले मिल जाएगी। हमें तो ऐसे सेटअप किया गया। इनफैक्ट मैं बहुत डाई हार्ट फैन था शाहरुख खान का। जिंदगी बॉलीवुड कहानियों में नहीं चलती। एब्सोल्युटली, वो तो है। और ससुरा हमारी जनरेशन को तो बर्बाद करने वाले शाहरुख खान ही है। वो तो है, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि आपको सुब्रमण्यम स्वामी से कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि नहीं, आप जिस एब्सोल्युटली नॉट। आप उनको मुझे उनके नैरेटिव से प्रॉब्लम, उनके नैरेटिव से प्रॉब्लम है। ओके। ये वो जो नैरेटिव दे रहे हो गलत है। और आप क्लेम करते हो कि आपका जो नैरेटिव है, हर चीज पर जो कह रहे हो आप, वो सब सही नहीं, है। मैं ये भी क्लेम नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरे नैरेटिव और उनके नैरेटिव को एनालाइज करके देख लो, जो सही लगे उस पर भरोसा कर लो। बराबर है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, ये मेरे एनालाइज करो, दिमाग इस्तेमाल करो, डॉट्स कनेक्ट करो जो मैं कह रहा हूँ और जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, फिर डिसाइड करो कौन सही है कौन गलत है। ओके। अंधभक्त मत बनो, ना मोदी के, ना स्वामी के, ना विभोर के, ना वरुण के। बराबर, अपना दिमाग यूज करो। बराबर। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि ओ गॉड, लाइक आई फॉरगॉट, इट्स अबाउट इम्तियाज खत्री। आपने कहा कि उसको अनऑफिशियल कस्टडी में रखा है, तो उसको समन किया जाएगा ऑफिशियली आपको लगता है, या उसको डायरेक्टली अरेस्ट किया जाएगा? डायरेक्टली अरेस्ट किया जाएगा। 99% समन करने की जरूरत क्या है जब उसके मर्डरर्स को समन नहीं किया जाता, उन्हें उठाया जाता है। राइट। और उठा चुके हम। ओके। और एक चीज, आई सेड दैट इट वाज माय लास्ट क्वेश्चन, बट एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही है कि शौविक और इनको उठाया, सैमुअल मिरांडा को, तो और सैमुअल, जब शौविक ने कह दिया था कि मेरी बहन भी सप्लाई करती थी, ड्रग्स लेती थी, तो उस वक्त पे रिया को क्यों नहीं अरेस्ट किया इन्होंने? व्हाई आर दे गिविंग हर? यार देखो कभी कभी ना इंसान कहता है अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पे ब्लेम डाल दे, तो हर एक चीज को एनालाइज किया जाएगा, सबूत जुटा जाएगा। करती थी और करती है में बहुत फर्क होता है। बराबर है। पास्ट और प्रेजेंट। अभी बराबर। रिया, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड गो बाय द एविडेंस विच इज प्लेस्ड बिफोर द सीबीआई और एनसीबी। Okay. That's all I had from my side. Thank you, Vibhor, and thank you, Varun, for the opportunity. Thank you, Bhujan. Thank you for connecting. All right, Sandhya, you want to go next, please? Oh, sorry, Vibhor. Nidhi. Sorry, This is Nidhi. Kailash. Oh, sorry, Nidhi. 1 second. We're going in a sequence. So yeah, Nidhi, go ahead. I don't know why I said Sandhya. Yes. Remembering someone, Varun? No. Go ahead. Yeah. Yeah, so first off, yeah, I just want to thank you for fighting for this cause. It's very important. We need people's support to, push this forward. So I just have one question for you. So do we know what's the role of Aditya Thackeray in this case, or like it's still being Well, I investigated? won't be able to comment on it. भावनाओं को समझ लो, इशारों को समझ लो तो अच्छा। So still under investigation. I am giving you a direct indication
I cannot say it on camera. Okay. Yeah, that's all I want. Reading between the lines and reading between the जो facial Great. expression is an art. Reading We should between the all screens. learn. यहाँ तो हम यही कह सकते हैं विभोर, reading between the screens. Reading between the screens. Absolutely. All right. Cool. All right. Thank you. Anything else, Nidhi? That's it? All right, thanks. All right, I'll Thank take you, Nidhi. next. 1 second. Sorry. Anirudh, please go ahead. हाय विभोर भैया, हाय वरुण सर, बिग फैन ऑफ योर्स Hello, Anirudh. एंड Hello. मैं आपको तंग अरे भी करता अरे रहता बहन क्या हूँ था? विभोर भैया फेसबुक पे। I know. सॉरी भैया, आपको मैं तंग करता रहता हूँ, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल होगा। नहीं अब बच्चों हाँ छोटे। भैया, पता नहीं है मौका कब मिले तो मेरे को बहुत नहीं और मैं लीगल फ्रेटर्निटी से भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, लुक्कड़ में ही है, तो मिलेंगे अपन जब ये सीन सॉर्ट हो जाएगा, पार्ट करेंगे भैया। कोई सीन नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आपके अंदर जब मर्जी इंटर्नशिप आ भी जाए, करूँ मैं, जब टू बी वेरी मर्जी आ जाए। ऑनेस्ट विद यू भैया, क्योंकि आपका जो ये फेस है ना भैया, आपने बहुत मोटिवेट करा हम जैसे जो यूथ है जो एलएलबी कर रहा है इसमें पूरे इंडिया का, आपने उन सबको बहुत अच्छा मोटिवेट करा, लिटरली अपने दिल से बोल रहा हूँ भैया मैं। और मेरे और फ्रेंड्स भी हैं 15-20 जो मेरे लीगल फ्रेटर्निटी के, वो भी ज्वाइन करेंगे अबे आपको, इतनी तो ऑफिस में उसकी भी जगह भी टेंशन नहीं मत है। लो आप। अरे भैया कोई नहीं, बाहर लगा लेंगे, वो टेंट कुर्सी टाइप, वो उसकी पिक्चर आई थी ना गोविंदा की, कौन कहता है मुंह काला है झूठ वाली मूवी जो आई थी उसमें, क्योंकि मैं झूठ नहीं कोई बोलता। उसकी चक्कर नहीं है भैया। मैं सीधे मेन पॉइंट पे आऊंगा। हाँ भैया, मैं सीधे मेन पॉइंट पे आऊंगा, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बिजी हो गए काफी भैया। ये जो विराट कोहली ने अभी एक वो करा है, क्या कहते हैं, पीआर स्टंट करा है, वो जो आपको पता है न्यूज में क्या 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 करा उसने, आप समझदार हो ही, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, ये इसने इस चीज को छुपाने के लिए करा, जिस चीज में जो नेक्सस का जो आपने ब्रेक ओवर करा था उसको छुपाने के लिए करा, जिसमें एकदम सेलिब्रिटीज एकदम से कूदे हैं, या फिर ये जस्ट एक क्या कहते हैं कवर अप देखो है? भैया, ऐसा है, आपका इन क्या लोगों टेक है के इस पे? जो भी काम होते हैं ना, बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ होते हैं। तो अब इनके पीछे की प्लानिंग क्या है इस पीआर स्टंट की, वो हम देख लेंगे और एक्सपोज भी कर देंगे। जब जब शादी शादी का खर्चा तक ऐसा ही उठा रही है उनका, तब तो सोच लो ना किस लेवल पे है। सही बात है भैया। और तूने अच्छा किया विराट कोहली का नाम ले लिया। हाँ विराट कोहली जी, आपसे एक सवाल है, कल की मीटिंग अच्छी रही? मैंने सुना डील फाइनलाइज होते होते रह गई। अरे भैया, आपको एक बात और बताऊं, मैंने ना विराट कोहली के उस पे फेसबुक पोस्ट पे कमेंट कर दिया था, वो जो आपने बोला था, तो उसके बाद ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 4-5 मिस कॉल आई थी, तो मैंने फिर नंबर को कॉल करा, उस पे कॉल नहीं आई, मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। बहुत तो चल रहा है गेम, बहुत तगड़ा गेम चल रहा है भैया, बहुत तगड़ा गेम चल रहा है, आप समझ जाओ, समझदार को इशारा ही काफी है भैया। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, चिंता मत कर, हाँ खेलता अरे है। कोई टेंशन नहीं है भैया, दिल्ली के लौंडे हैं हम, आपको तो पता ही है दिल्ली के लौंडे कैसे होते हैं, बदनाम है दिल्ली के लौंडे, दिल्ली और यूपी के लौंडे, आपको सभी पता है। ज्यादा चलो लाइट भैया चल रहा है, नेक्स्ट ज्यादा क्वेश्चन। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भावनाओं आता को हूँ मैं। कंट्रोल में रख। अरे नहीं भैया, पता नहीं अब दोबारा मौका कब मिले आपसे बात करने का, पता नहीं भैया। मेरे- भैया नेक्स्ट अभी क्वेश्चन अभी पे आता हूँ, ये जो अभी अभी सिमियोने फेसबुक पे खम्बाटा तो थी। रिप्लाई किया ना, क्या भैया? अभी रिप्लाई किया था ना, देखो मैंने। हाँ भैया, रिप्लाई करा था भैया, बस तो वो ही जब है ना, जब वो जब सपना करेगा ही देख रहा रिप्लाई हूँ भैया मैं। करेगा। अच्छा भैया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, वो जो मिस्ट्री गर्ल थी उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस उठे थे, तो उसमें एक यूट्यूबर था, इसका नाम अनुराग विश था, उसने सिमियोने कंबाटा का नाम लिया था, आपका क्या टेक है उसके ऊपर? वो दोनों लड़कियां कौन थी, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि वो चीज भी काफी दब गई यार है, जो एविडेंसेस को लॉ लेके कर भाग रहा है रही ना, थी। लॉ कर रहा है ना, अंडर क्या? इन्वेस्टिगेशन चीजों को क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं मतलब आपका क्या टेक है, मैं आपका एक व्यू पॉइंट लेना चाह रहा था उसमें। या मेरा व्यू पॉइंट वही होगा जो सीबीआई का व्यू पॉइंट इस होगा, पे एज आप कुछ सिंपल आने एज दैट। वाले इस पे आने वाले टाइम में आप कुछ कमेंट वगैरह या कुछ करोगे ट्विटर पे? अगर भाई मुझे बोला जाएगा, मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो मैं 10 मिनट, जब मैं रात को 3 बजे लाइव आके बात कर, रात को 10 बजे 11 बजे लाइव आके बात कर सकता हूँ, तो 3 बजे भी वरुण को उठा के लाइव आ जाऊंगा। क्यों? ठीक है भैया, ठीक है भैया जी, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर आपसे आपको फेसबुक पे तंग करता रहूंगा, सॉरी भैया। ठीक है, जितना भी अपने एंड से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भी अपनी छोटी मोटी टीम है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपको लीड्स भेजता रहूंगा भैया। भैया ये जो है सीबीआई ड्रग एंगल पे ही क्यों इतना फोकस कर रही है, मर्डर एंगल पे कब शिफ्ट करेगी अपना, ये थोड़ा मुझे इसके बारे में बता सकते हो? राजनीति का एक पुराना असूल है, भ्रम पैदा करना।
अच्छा भैया, दिखाओ कुछ और, करो कुछ और। तो अब ओके। समझदार को इशारा काफी। चाणक्य नीति भैया, भ्रम पैदा चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति। चाणक्य जो दिल्ली में बैठा है ना, चाणक्य उसी की नीति चल रही है। अरे भैया वो तो क्या ही बोलूं, उसके चाणक्य के लिए तो बस भावना में ज्यादा बह जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है भैया, भैया आपके टच में रहता हूँ। थैंक यू भैया अपना अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ठीक है भैया, चलो भैया, टेक केयर, बाय भैया। दिल्ली में मिलेंगे भैया किस दिन। एब्सोल्युटली, ठीक है भैया, बाय, टेक केयर। थैंक यू वरुण भैया। Sure, thank you, Anirudh. Very nice talking to you. Thank you. All right, Vineet G, please go ahead. इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपने कॉलेज के दिन याद आ गया। हम अपने सीनियर्स के ना ऐसे पीछे बढ़ जाते थे। It's a good thing. Yeah. Haan ji, Vineet. Can you hear me? Yeah, Vineet, loud and clear, please. Okay. Hi, Vibhor, and hi, everybody else. I'm from New York. I live in Manhattan, and I grew up in Mumbai. And it upsets me a lot to see that Mumbai as a city is Looks like is not we the city changed. I That's know okay. You anymore. go ahead now. Oh, there are two Vineetas. So sorry. Sorry. Oh, you're right. Oh, okay. Go ahead. Go ahead. Oh. Yes, please. Now you've started. Good. Is it okay? All right. Okay. So first of all, I want to thank Vibhor for starting the petition because against Parambir Singh, because I was looking into RTI, the Right to Information Act, to see what are the protocols and procedures police has to follow when they look at unnatural deaths, and to see where the breakdown happened and do some kind of legal proceeding to push a case in. So I'm so glad you did it, and I'm one of the persons who signed for that petition. So thank you very much for that. Second, I observed something. Your right hand shakes a lot. I don't know what it is. Are you on medications? I don't know. Vinita, let me Please take tell care you of yourself. one thing. When many people have asked me this thing on a personal note, I'm happy that you asked me live on camera so that people should know. I was 4 years old when, due to the negligence of the doctors, I went in coma, and the entire left side of my body was paralyzed, and I lost my voice also at that time. So that is why that is the reason there is a bit of shakiness in my body due to neurological problem, and that is the reason my voice is like a drunkard. तो कभी कभी ये होता है कि बंदा पी के तो नहीं बोल। नहीं ऐसा तो नहीं लगा। It acts as a blessing in बिल्कुल ऐसे नहीं लगा। it acts as a blessing in disguise sometimes. ये लोगों को पता नहीं लगता, जब पी रखी होती है तो पता ही नहीं लगता। अच्छी बात। Thank you so much for. और मुझे ये भी I am really thankful to you that you gave me an opportunity to clarify to the people of this country and across the world. बहुत लोगों के personally message आ रहे थे मुझे कि what is the reason because of that your hand is shaking or on medication. So it is a 28-year-old problem. Oh, 1993. ठीक है। 27 years. Wow. Okay, well, I've also dealt with many health issues, so and trust me, मुझे ये सब ज़्यादा दिखाई देता है। Trust me, Vinita. God, भगवान ने मेरे से मेरी फिटनेस छीनी, लेकिन मेरा दिमाग ना बहुत तेज कर दिया। दिख रहा है। तो इसलिए कभी वापस सुसाइड के बारे में सोचना नहीं। आपको ये इतनी अगर पॉजिटिविटी आप भी रख रहे हो, वैसी बस बरकरार रखना हमेशा। Absolutely, thank you so much, Vinita. और अभी मेरा सवाल ये है कि मैं ग्लास हाफ फुल में बिलीव करती हूँ। ये सब जितना भी सुना है, बुरा भी लगता है, धक्का भी लगता है, शॉकिंग भी लगता है, और आपका भी एक नैरेटिव है। तो मेरे हाथ में तो मैंने कोई प्रूफ्स देखे नहीं है, तो जब तक प्रूफ्स देखे नहीं है तब तक ना तो मैं बिलीव करूंगी, ना तो मैं उसको कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करूंगी। मैं सुनूंगी जरूर जो आप बोल रहे हो। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी बहुत हो रही है। कोविड के वजह से सब कुछ पूरे दुनिया में हो रही है, सब हमारे देश की बात नहीं, लेकिन हमारे देश से में बहुत धक्का खा रहे हैं। बहुत सारे हैंड टू माउथ अर्नर्स है, बहुत सारे डेली वेज अर्नर्स है। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे तो अरबों अरबों करोड़ों की बात है, ये पैसे का ही पूरा है। अल्टीमेटली मनी स्पीक्स। So and they must have stashed money in different special purpose vehicles across different islands around the world. बहुत सारे बिनामी अकाउंट्स होंगे। कैसे लीगली
उसमें से आधा भी पैसा निकालें तो हमारी जीडीपी 2 गुना बढ़ सकती है, ये मेरा एस्टिमेट है। एंड कैसे लेट मी लीगली टेल हम यू, जाएं इसके पीछे? लीगली करने की जरूरत ही नहीं है, द एजेंसी आर ऑन इट। आपको हर चीज पब्लिक नहीं की जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार काम नहीं करती। लेट मी टेल यू वन थिंग, 2014 से लेके अब तक ऑफिशियल फिगर मुझे नहीं पता कितनी आई है, मैंने चेक भी नहीं किया। अनऑफिशियली मैं आपको बता देता हूँ, मोर देन 3 लाख करोड़ ऑफ ब्लैक मनी इज हैज बीन ब्रॉट इनटू द कंट्री। That's wonderful. I just अब ये hope that ऑफिशियली it is utilized ऑफिशियली उन कितना लोगों डिक्लेयर के मुंह में जाए ऑफिशियली जिनको कितना जरूरत है। डिक्लेयर एब्सोल्युटली दैट, इसीलिए वी हैव अ गवर्नमेंट। आई एम नॉट अब मैं कई बार उनकी ज्यादा तारीफ कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने आई वाज मोदी हेटर। लोग कहते हैं कि मैं 2012 में उनको मर्डर कह चुका हूँ ओपनली, आज भी मेरा ट्वीट अवेलेबल है। मैं डिलीट नहीं करता क्योंकि वो मुझे बताता है कि हाउ द फेक नैरेटिव्स फेड टू अस और 2002 ये वो। सो 2016 में मुझे लगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की इस बंदे ने, मैं इस बंदे में दम है। कल तक हमारे घर में घुस के लोग हमें मारते थे, आज हम घुस के नहीं मार रहे, ठोक भी दे, हवाई जहाज भी भिजवा रहे। वो बहुत जरूरी था, वो मैसेज बहुत जरूरी चाइना, पहले चाइना, मैं आपको बताता हूँ, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था कि 40 से ऊपर बंदे मारे गए। अगर आप मेरा उस टाइम का नहीं, लेकिन नहीं माना, एंड में उन्होंने 200 से ऊपर माने हैं। मैंने फिगर दी थी, लास्ट फिगर दी थी 198 की। उन्होंने उनकी जो ग्लोबल टाइम्स ने फिर बोला इट इज मोर देन 200। तो आई वाज द फर्स्ट, जब नैरेटिव्स की बात आती है तो हमारी इंडियन मीडिया इतनी वाहियात हो चुकी है बहुत, और मैं इसलिए मुझे इस बात का एंड मतलब आई पोटेंशियल तो एक्चुअली बहुत फोर्स। है इंडिया में, लेकिन उसके बाद आई वाज द पर्सन, आप मेरे जून जुलाई के ट्वीट देंगे सुशांत के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, आई वाज इन क्वारंटाइन, और उसी टाइम पे ये चाइना का फेस ऑफ चल रहा था। उस टाइम के मेरे ट्वीट्स निकाल के आप देखेंगे तो मैंने बैंड बजाई थी और फोर्स किया था मीडिया को मेरे नैरेटिव्स को चलाने के लिए। मीडिया तो भाई बहुत इमेच्योर एक्ट करते हैं, जैसे कि कोई स्कूल इमेच्योर, गया ही नहीं, कोई पढ़ाई नहीं की है, कुछ नहीं किया, इमेच्योर कुछ उसको भी कहा बकते जाता रहते हैं। है विनीता, इमेच्योर उसको कहा जाता है जिसे नॉलेज ना हो। वो भी दे आर है। नॉट इमेच्योर, दे आर हाईली डेंजरस पीपल। नहीं, ये तो मतलब बहुत हम ही से लोग, हम ही से एक है, हमें अपना स्टैंडर्ड्स ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज सुधरेंगे। हम एक्सेप्ट करते रहेंगे तो नहीं सुधरेंगे। आज एक रिपब्लिक टीवी को छोड़ के किस चैनल की क्रेडिबिलिटी है? ट्रू। मैं तो रिपब्लिक भी नहीं देखता, मैं तो देखता ही नहीं। क्रेडिबिलिटी पता नहीं किसकी कहाँ है। मैं तो आप लोगों से बात कर करके सारी न्यूज ले लेता हूँ और दे भी देता हूँ। दिस इज बेटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रिपब्लिक पे नहीं आते। मैंने कहा यार बुलाएंगे तो आऊंगा ना, वो क्यों नहीं बुलाते कि उन्हें पता है बैंड में ज्यादा हुआ होता है ना, आफ्टर ऑल हर एक का एजेंडा उन्हें पता है। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा एक ही शर्त होगी, आई वुड बी अनप्लग्ड, आई वुड बी अनबायस्ड, आई वुड बी वोकल, आई वुड बी, मैं नाम लेने से घबराऊंगा। हाँ, लेकिन इसलिए आपको बात मुझे नहीं करने का बुलाया। मौका भी तो मिलना चाहिए ना, लेकिन आपको वहां आके मैं वो भी अच्छा था दैट और आई वुड कम वन ऑन वन, और भेड़िए जिसके जैसे साथ एक भी आऊंगा दूसरे को वन ऑन वन। नोचने की कोशिश करेंगे ना, किसी का कुछ बात सुनाई देता है, सब चिल्लाने की देखिए, आई डोंट नो व्हाट इंप्रेशन डू यू हैव ऑफ अर्नब, बट इन रियल लाइफ ही इज अ वेरी हम्बल मैन। आई एम श्योर ही मस्ट बी, आई जस्ट डोंट नो हिम पर्सनली। अगर थिएट्रिक्स दे वो सिर्फ कैमरे पे चिल्लाता है, ही इज अ वेरी हम्बल मैन। मुझे बहुत ही मतलब डिस्टेस्टफुल लगता है, इसलिए ये मीडियम मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से कि हम सिविल लोगों जैसे प्यार से बात करें, क्यों एक दूसरे को। I think I should flash that. That's a breaking news. ये जो आपने अभी बताया है, this is definitely a breaking news. क्योंकि हम लोग obviously we only see the person who is on the camera. We don't, or the screen. प्रॉब्लम यही है कि we only go for the real life people. उनकी रियल लाइफ में क्या, हम उसको देखना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं उल्टी हूँ जरा, मुझे ज्यादा 1-to-1 कांटेक्ट करके फिर we should be Vinita, we both should talk more often then. I agree. Anyway, the other question I had, because other people are waiting as well, is after I see all this, especially drugs and how inbuilt it is into the society, और ये बॉलीवुड की बात नहीं है, ये अभी बहुत लोकल मिडिल क्लास फैमिलीज में सब जगह है। मेरे भी
दूर के रिश्तेदारों में मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं। अब यार, इसको why should I talk about anyone else? I should talk about myself. I have tried everything. कॉलेज टाइम पे मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है, अरे ट्राई चरस, तो गांजा, ठीक है, कोकीन, लेकिन हैश, लत सब कुछ लगती है ना सब कुछ उसकी। किया। हाँ, मैं इस Why वजह से should I be afraid of accepting the fact? सब लोग करते हैं यार। सब लोग करते हैं इसका, लेकिन हर कोई उससे मरता नहीं है, ना ही हर कोई उससे एडिक्ट होता है। मैं मुझे डर इस बात का है कि एडिक्शन जो is a है myth. उससे, हाँ, क्योंकि मेरे घर के रिश्तेदारों में लोगों की मौत हुई है एडिक्शन की वजह से। तो मैं इस वजह Absolutely. से ये पॉइंट निकाल रही हूँ कि I was आपकी saying, आप बता रहे थे ना, आप मुझे बोल रहे थे डिप्रेशन। I was in depression and in addiction of alcohol. Thankfully, I'm over both of them now. I'm And glad you are. depression and alcohol is a very deadly combination. That led me to, जब मत्था खराब होता है तो डिप्रेशन, ऊपर से दारू पी लो तो हो जाता है, तो कर जाता है बंदा कांड। आप प्लीज ऐसे अभी अपने आप को जरा I spent 2 months in a rehab center. I spent 2 months, 3 months in a rehab center. I'm not ashamed of it. No, it was for my good. Yeah. You are who you are because of your environment and your experiences. So there's nothing to be ashamed of. But the reason I brought up the topic is, अगर आपके किसी पहचान में कोई ऐसे एक्सपर्ट हैं जिसको साइकोलॉजी भी पता है, लीगल भी पता है, केमिस्ट्री पता है, मतलब ये प्रोफेशनल्स हु हैव स्पेसिफिक स्किल सेट और नॉलेज who can warn youngsters. I'm also a mother of a young child. I'm concerned for the future of my child. Look. Only people who can क्या warning signs है as parents? हम क्या देखें, कैसे बचाएं अपने बच्चों? The only person who can warn you about these signs is a person who has gone through it himself. ये जो 4 किताबें पढ़ के अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना, इनसे आप मत जाइए। आप उन रियल लाइफ लोगों के पास जाइए जिन्होंने इसको सहा है, over into a lot of addiction, and they are into recovery. Varun, if you want, I can get the person who actually got me recovered. Absolutely, किसी को बुला के प्लेटफॉर्म पे अगर वो लोग खुल के बात करने की मैं अभी वही बात कर रहा था। मैं अभी वही बात कर रहा था। मैंने वही बोला, we can call the person who helped me out in the rehab center, who helped me out in coming out of this depression and this alcohol. He is right now, उसने पिछले 18 साल से he is into recovery. देखिए, if you want, I can get him. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये आइडिया। I don't know about other people, लेकिन we'll do something. We'll because definitely. everybody has something going on in their life. किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। अगर हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से और उसमें मदद होती है, उसमें अगर थोड़ा बहुत, if it helps, why not? Yeah, absolutely. Okay. So we'll get him. He's a dear friend. वो मेरे बड़े भाई की तरह है। So he not only helped me, he has helped thousands of people in last 18 years. और अब वो खुद को अपना एक rehab center चलाते हैं जहाँ पे लोगों को, आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल में देखेंगी, कर्मा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से होगा। You can go through it. How these people are the Karma Welfare Society. Okay, I'll look. Thank you. It was nice chatting with you. Thank you so much. Same, Vinita. We'll share. And on that note, I'm taking a 5-minute break. Okay. All right. बहुत सारे लोग बड़ी देर से वेट कर रहे थे, but yeah, go for it, Vibhor. And thank you. Yeah. Thank you very much. Thanks. All right. So I would suggest and encourage everyone, and I think I'll do a better job at moderation. Please stick to the question and let's not spend that much time. Because a lot of people are waiting at crazy hours. जैसे लोग, I don't know what countries you are from and what locations you are from. I'm sure it's pretty late. So I'll request you guys to please respect everyone's time. That's the only thing I can ask for. I understand you are very emotional, very charged up. You have so many questions, thoughts, ideas, and you really want to do that. But we also have to be mindful. Mary screen pe I can already see there are people waiting in the queue. So if I have to get them, you need to ask your question and go out. And I think the other thing I would really want to say is, let's stick to the Sushant Singh Rajput and what we are talking about. Let's stick to that topic. And we all know the mental जो picture एक बनाई गई थी, polar disorder and all that stuff, that was all BS. एक और
you know, again, I get very passionate and मेरे wording change हो जाती है. You know, I'm a typical Punjabi guy, so बहुत बकवास हमने सुनी उस related. I give a damn about that mental polar disorder and nonsense that went through. वो एक बहुत ही वाहियात टॉपिक को छोड़ा गया था. You know, that he was a very smart guy. We all have seen it. We all believe in that, and he was not crazy. So let's not get into the mental aspect. Yes, we will still, you know, talk about it offline on different shows and different events, but this is not definitely the platform where we would like to encourage, क्योंकि हर किसी ने एक different narrative बनाया है around Sushant Singh Rajput. The only narrative which is very clear is he was a very sharp guy. He was not a average, you know, human being. He had big aspirations. कोई नहीं बैठ के अपने नोटबुक पे अपनी, ऐसे बहुत कम लोग, आई वुड नॉट से कोई नहीं, बट बहुत कम लोग अपनी नोटबुक पे ऐसे लिखते हैं द 50 थिंग्स दैट यू वांट टू अकम्प्लिश इन योर लाइफ, you know, and he was able to achieve a lot of them already at the age of 34 तक तो आधे लोगों को समझ ही नहीं आता कि, you know, आज की डेट में कि करना क्या है अपनी लाइफ के साथ. So, you know, so let's kind of respect the man he was, and let's cherish his life, and not kind of create another picture. Okay, maybe he was going through any kind of mental, you know, or stress. किसको नहीं होता, you know, I have stress. I'm sure everybody who's watching, who's listening, everybody goes through the same kind of stress. जॉब का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, लोगों के बाल उड़ जाते हैं इस चक्कर में, लोग, you know, क्या क्या नहीं हो जाता है, you know, and people resort to different things. And drug का angle भी, I think that's also another BS that has started. I know it has kind of connected to this, you know, death. You know, again, I don't want to discount that, but seriously, this is not how we want to see Sushant Singh Rajput. He was not a drug addict, a चरसी, जैसे कि एक किसी स्क्रीन पे मैं देख रहा था कहीं पर उसको चरसी तक बोला गया. You know, that's again something which is very nonsense. He's gone. वो कहीं किसी रिहैब में बैठा हुआ इस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहा. He's bloody dead, man. So stop using such kind of words for someone who has done so well, who lived a royal life, no doubt. You know, अगर आप भी कल को उस level पे जाते हैं, if you become a movie star and you're a hero, you have all the rights to lead a very, you know, kind of flashy life, and इतनी भी flashy नहीं उसने कोई जी life. You know, he had passion for life. He enjoyed. He had a Maserati. Yes, if I have that kind of money, why would I buy a Maserati? You know, why would I not buy a Lamborghini for that matter? So if he lived that life, he deserved it. He earned it, and he worked his ass off. His not, pardon my language, but you know, that's the passion that gets into me, because I give a damn about all these different narratives. Get to the point, guys. I mean, you know, there is a life lost, and there is not a single life actually. पता नहीं कितनी सारी और deaths हो चुकी हैं, जितने सारे ये news में आ रहे हैं, we don't know. So I really want to focus on that, and that's the reason why I'm doing it, because just like all of you, I'm also equally as passionate about this, and I will continue this till the time we all get the answer. So, but yeah, you know, I'll open it for you guys to speak while we are waiting for him. Anybody who wants to share their thoughts about Sushant, and you know, what kind of a guy you feel he was, and so please feel free. You are mute. You're talking. I can see you, Vinita ji. Let me unmute you. Okay, so you are mute. I cannot unmute you, so you'll have to unmute yourself. Okay. I'm saying he was great. He was awesome. He was excellent. And he was not bipolar. I'll tell you why. I have a buddy who lives in the Bay Area where you live, in the San Jose district area. Okay. She is bipolar, and she is known to me for the last almost 25 years of my life in the Bay Area. Okay? She's my friend. She's bipolar. She's schizophrenic. But it's not overnight that she got bipolar. It's been 30 years she's been bipolar. Bipolar doesn't come in 1 minute. So all these stories about his being bipolar and this and that and depression, it's crap. Okay, I was asked by my doctor what I felt when I was working and I was overstressed. I told him, give me some medication for stress. He gave me medication for depression. And I told him, but I'm not depressed. I'm a lively, happy person. It's just that I'm overworked. I'm working 10, 12 hours a day. He said, but then that you'll have to make it on your own. You'll have to ease out your work. I said, well, what can I do? I've got so much of work. What do I do? He says, no, this is the only medicine I can give you. I said, but I'm not depressed. Why do you want to give me that medicine?
He says, well, then there's no alternative. Just take a sleeping pill and sleep every night. That was it. Doctors over here do that. Exactly. But and I definitely think Sushant was not, and I can make out from his the way he thought things. He doesn't look at all as a depressed person. I mean, I've been seeing him from Pavitra Rishta days, okay? Yep. So this whole thing is really a big made-up story. Okay, Vibhor is back. Yeah. So I'll tell you before I go back to Vibhor. You know, if you look at Govinda's face right now, he looks more sick, more bipolar, or more depressed than anybody else that I've seen in the industry. Now, do you think he will commit suicide, or will he be, treated like that? No, and that's what we are out here. That let's cut this nonsense out of this whole discussion. All right, since Vibhor is back, please go ahead with your question. We have Hi, a breaking news. We have a What? breaking news. Smita Parekh ma'am has been called by CBI. Yeah, I heard. I just Okay. heard that in the chat as well. I was just about to say. Okay, good. So at And least he'll give the and I have a update to make regarding my yesterday's tweet that there were some people were having a watch on me. These people have been identified as people of our own agencies. They were having a close watch, and I have been placed under unofficial surveillance, so that nothing happens to me. So be assured, SSRians, I'm safe. Government of India is looking after me. Great. good. All right. Go ahead. So hi Vibhor, this is the second Hi, Vinita when actually Varun called out for me, but the other Vinita started off, so I didn't know what to do. No There were problem. two Vinita. No He should have problem. said Vinita Jayandani. Instead of that, he just said Correct. Vinita Ji, go ahead. And so naturally she went ahead because her name was Vinita. I can't blame her. Okay. Vibhor, first of all, I followed you on Twitter and then I shut you off because people were saying that you were trying to make a big deal about Subramaniam Swamy and stuff like that. And then I saw a few other tweets which said that you were not doing that. In fact, you like Subramaniam Swamy. So I went back on Twitter with you. So I'm not on Twitter with you, okay? And I don't follow very many people, although I live hop, skip, and jump from the Twitter office in San Francisco. All my friends work at Twitter, okay? By the way, I know you are in Milpitas, Varun, right? I stay somewhere else, but that's my radio station. Yeah. Okay, yeah, because I know because you deal with all these people in San Jose, Milpitas area, ICC and all that. Okay, now story is what I want. Two questions, Varun. I mean, two questions, Vibhor. One, what is the punishment a pedophile gets when he's caught with all this crap? How much punishment? How many years? Life. Okay, perfect. So we are hoping someone will get the life imprisonment. Okay, and what about this child trafficking? Again, life. Perfect. So these are the two questions I wanted to know. I got my answers after waiting for 2.5 hours, but that was worth it. So thank you, Vibhor. And Varun, I'll push you because I'm right here. I'll push you one of these days at Milpitas. Sure, absolutely. Okay. Absolutely. I'll come and say hi to you at Radio Mirchi. Good night, Vibhor. Good morning, and for me, good night because now Varun knows where we stay. Yep. I'll talk to you. Thank you. Bye, guys. Bye, guys. Bye, everyone. Oh, bye. Sorry, not everyone. All right, Raj, go for it. Hi, Varun and Vibhor. Thank you so much to putting this issue front. Sure. So I have two questions, very different. Day before yesterday, I saw in Times Now that NIA received a threat that kill Narendra Modi, and that mail received on 9th of August, almost a month back. 8th of August. 8th of August. I just want to know, first of all, I'm the SSRian and जो भी चल रहा है सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है, जो सुब्रमण्यम बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है. तो my side is Vibhor side, सबको देख रहे हैं, सबको समझ रहे हैं. रही बात कि वो बाइपोलर था और ये सब था, यार ये हम लोग को समझ में आता नहीं है. लोग कितना ही बोलें, और मैं ये सब बोलना भी नहीं चाहता हूँ. मैं वरुण से ही बोलूंगा हम लोग इस पर बात भी ना करें, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना तो ये वर्ड बार बार आता है, और ये जितनी बार वर्ड आएगा वो वही चाहते हैं. इस पे बोलना बंद करना पड़ेगा. मैं दूसरा, विभोर,
ये जो थ्रेट है, क्या इस थ्रेट को हम एसएसआर के इस केस से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि अब शायद से कुरुक्षेत्र बन चुका है और महाभारत शुरू हो गया है, सो दिल्ली पे अटैक, इट्स अ रिटेलिएशन ऑफ द वे दिल्ली कम। देखिए, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज द न्यू लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। करेक्ट। ही उनका जो थ्रेट परसेप्शन है वो हमेशा हाई लेवल पे रहता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर हिम टू गेट थ्रेट। और उनका थ्रेट परसेप्शन इसी लेवल पे 2002 से 18 साल में तो उनको कोई टच कर नहीं पाया, तब भी नहीं कर पाया। सेकेंडली, आपने पूछा वेदर इट इज कनेक्टेड टू एसएसआरियन, आई डोंट थिंक सो। मेरा पर्सनल कैपेसिटी में ये है कि एक मर्डर केस के लिए प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट देना, दैट इज नॉट द स्टाइल ऑफ दीज पीपल। कोई होगा जो फिरा होगा जो कहता है कि मैं मेल कर देता हूँ नरेंद्र मोदी को, मैं जान से मार दूंगा, क्योंकि वो मेल ओरिजिनेट हुआ था मुंबई से, एंड जो उसका ईमेल आईडी था वो भी एक सिंधी फेलो समथिंग एंड gmail.com, तो ऐसा लगा कि शायद जस्ट टू इसको न्यूज में फ्लैश होगा, 1-2 दिन भी अगर न्यूज ड्रॉप होती है तो कहीं ना कहीं इश्यू डाइवर्ट होता है, राइट। एंड अच्छा हुआ कि टाइम्स, हाँ, इसलिए किया होगा, थ्रेट नहीं था वो। मैं समझ सकता हूँ कि मोदी को हाथ नहीं लगा सकते, दैट आई अंडरस्टैंड, बट इसीलिए कई चीजें ना पब्लिक डोमेन में बहुत दिनों बाद दिखाई जाती है। एग्जैक्टली। सेकंड, विभोर, कहीं ना कहीं अभी हम काफी टाइम से यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं, कई सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं। एक जैसे अभी ब्लूमबर्ग पे एक न्यूज थी कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है हॉलीवुड में, राइट, एंड दैट सेम वे इंडिया के बॉलीवुड में भी चाइना का इन्फ्लुएंस है। जैसे आमिर खान की जो मूवी है, सपोज जो दंगल मूवी थी, उसने चाइना में 1300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो पॉसिबल नहीं था। 9000 सिनेमाज में वो मूवी लगी थी, जिसमें से वो सबटाइटल इंग्लिश था और हिंदी में मूवी थी। चाइनीज नहीं समझते, ना इंग्लिश समझते, ना हिंदी समझते हैं, इतना पैसा आ रहा है, राइट। ऐसे ही उनकी कॉल सुपरस्टार को एक लड़की के साथ मूवी बनाई थी उन्होंने, जो सिंगर थी, वो मूवी भी वहां पे बहुत सुपरहिट रही है चाइना के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जस्ट टू सेट द नरेटिव्स, कि पैसा आता है वो नरेटिव सेट करेंगे। मैं बताता हूँ, ये जो सारा का सारा गेम प्लान है, ये कम्युनिस्टों का बहुत टाइम से चल रहा है। ओके। They have made a lot of inroads into the Indian system in the last 60 years of Congress rule, और जो हमें समझ में नहीं आया था पहले, अब हम एनालाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें समझ में आता है। एंड वी हैव बिकम सो विजिलेंट कि हम पता लगा लेते हैं कि इसमें किसका हाथ। एब्सोल्युटली यू आर राइट। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी को देखेंगे तो ही इज अ डाई-हार्ड कम्युनिस्ट, राइट। वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदुवादी नहीं है। जिनकी खुद की बेटी मुसलमान से शादी करके बैठी है, वो हिंदुवादी he क्या is a होंगे? opportunist, he is completely opportunist and everybody knows that. मैं भी हूँ यार, मेरे को तो आज बोल दिया अपॉर्चुनिस्ट हो सबसे बड़े। ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट पब्लिकली लोग एक्सेप्ट करें, आपके अपॉर्चुनिस्ट को, आपके अपॉर्चुनिटी को लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है, चलेगा। ऐसे अपॉर्चुनिस्ट हो तो हमारे लिए अच्छा है। One has to be a positive opportunist, not a पब्लिक negative इंटरेस्ट में one. होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। एंड विभोर, इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि जो एसएसआर का अभी जो एसएसआर का जो केस है एंड बॉर्डर पे जो टेंशन क्रिएट हो रखी है, क्या आपको लगता है कि जब इतना इन्फ्लुएंस है कि पैसे का बहुत बड़ा काम है बॉलीवुड से, जहाँ पे पूरा माफिया, बॉलीवुड तो एक नाम है, उसके पीछे ड्रग्स है, ट्रैफिकिंग है। सो ट्रैफिकिंग सिर्फ यही ट्रैफिकिंग नहीं है, गोल्ड ट्रैफिकिंग भी है, अगर हम जाएं तो बहुत सारी ट्रैफिकिंग है। मैं इसको सिंडिकेट कहता हूँ। तो ये इंडिया को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि मीडिया भी क्या दिखाता है कि इंडियन मीडिया एक ऐसा है, अगर हम यूएस यूके जाते हैं तो वहाँ पे आम लोगों की आवाज भी मीडिया रखता है, लेकिन हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सेलिब्रिटीज की आवाज रखी जाती है और लोगों को दबा दिया जाता है। जैसे कल ही मैं देख रहा था एक रिपब्लिक पे डिबेट चल रही थी, जिसमें गणेश, आई थिंक गणेश जो उसका एसएसआर का पुराना जो असिस्टेंट था, एंड इधर संजय गुप्ता जी थे, तो संजय गुप्ता ने जोश जोश में आके बोले तुम्हारी औकात क्या है। तो चैनल ने भी बोला नहीं कि उसकी औकात क्या है, इज अ पब्लिक बॉस, उसकी औकात है इसलिए तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे बात करने की। सो मेरा कंसर्न है कि यहाँ पे जब इतना इन्फ्लुएंस बॉलीवुड का है और चाइनीज का पैसा अगर इतना लगा हुआ जो दिखता है, नंबर्स भी हैं, सब कुछ है,
तो जो बॉर्डर पे टेंशन है, क्या वो एक इशू रहेगा कि आज बॉर्डर पे सिचुएशन क्रिएट की जाएगी सो दैट इस केस को डाइवर्ट किया जाए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसको जितना लंबा डाइवर्ट करेंगे उतना ही एजेंसीज के लिए मुश्किल है इस काम को प्रूव करने के लिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए डाइवर्ट कराया जाता है मीडिया में, पब्लिक परसेप्शन में, ऑन ग्राउंड डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऑन ग्राउंड तो नहीं कर पाएंगे डाइवर्ट, लेकिन अभी हम पब्लिक परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं क्या? लेकिन विभोर आज अगर हम बात करें कि पब्लिक परसेप्शन की, पब्लिक परसेप्शन था आप थे और लोग थे जिसकी वजह से केस सीबीआई तक गया है। अदरवाइज अगर ये लोग अगर नहीं खड़े होते, ये लोग नहीं खड़े होते तो सीबीआई तक केस हो सकता था। आगे भी हम लोग ही होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, वजन भी होना पड़ेगा, आई मीन होना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जा रहे, देयर इज नो अदर हम वे। कहीं नहीं जा रहे। मैंने किसी से वादा किया है कि जब तक इस केस में जस्टिस नहीं लेके आऊंगा तब तक हार नहीं मानूंगा। वादा निभाना है मुझे, और ये वादा मैंने पूरी एसएसआरएन फैमिली से भी किया था, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। नहीं, और लोग बहुत हैं। कल आपकी लाइव वीडियो में तो बहुत अच्छी बात आपने बोली थी, एक विभोर जाएगा तो दूसरा विभोर आएगा, तो एक भी विभोर नहीं जाएगा, सारे विभोर रहेंगे और रहने वाले हैं। सो मेरा एक कंसर्न है वरुण आपसे कि जैसे हम जो लाइव वीडियोस कर रहे हैं ये बहुत बड़े वीडियोस होते हैं, राइट। तो जब कोई वीडियोस देखने जाता है तो उसका टाइटल में या 2 या 3 चीजें हम लिख देते हैं कि यार ये अक्षय कुमार से रिलेटेड है या समथिंग आदित्य ठाकरे से रिलेटेड है, तो वो जब उस वीडियो को क्लिक करता है तो 4 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखता है। तो ये मेरा कंसर्न है, आई विश कि सभी लोग इसको समझते हैं। जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारा विभोर के साथ रहता है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक वीडियो को हम कट करके हम एक सीरीज डाल देते हैं वीडियोस की, तो कोई भी क्लिक करे और देख सकता है, सो दैट हम, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये जो टीम है ना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ कॉल फॉर द टेक्निकल आइज इन एसएसआरएन फैमिली। नहीं, मैं इस चीज का जरूर जवाब दूंगा, सिर्फ आप नहीं है ये, दिस इज नॉट ओनली योर कंसर्न, सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, यू नो, आई हैव समवन हु विल बी टेकिंग अप ऑल दीज वीडियोस, और हर एक को स्निपेट को करके क्वेश्चन को डिफरेंट जो की क्वेश्चंस हैं जो इसमें आंसर हुए हैं वो अलग वीडियो सबको मिलेंगे, सो दैट एवरीबॉडी कैन लिसन इनटू दैट 2, 3, 4 मिनट्स ऑफ कन्वर्सेशन रादर देन ये 3, 4 और ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ, यू नो, आई थिंक वी बीन लाइव फॉर 2 hours. So I think obviously this feedback is definitely taken and we are work in progress right now. क्योंकि इसमें उज्जवल त्रिवेदी ने बहुत अच्छा काम किया, वो 3-4 मिनट का एक वीडियो बनाता है। हाँ। सो अब लोग उससे अटैच हो रहे हैं, ठीक है 3 मिनट का वीडियो चलते फिरते भी देख सकते हैं, अगर मैं अपने लिफ्ट से नीचे आ रहा हूँ तो वीडियो देख लूंगा उतने टाइम में मैं, तो लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं और उसको लोग शेयर कर रहे हैं। I would add a point, उज्जवल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो सिस्टम था ना, what I said that I want to connect with maximum people with the maximum time. It's all about narrative. Narratives 2 या 3 मिनट में नहीं समझाया जा सकता. It has to go for hours and hours and hours and hours. Correct. Sure. When we are challenging the narrative, when we are challenging the narrative, when we are changing the narrative, then we have to devote time. This is an investment. Right. So which we all अब 2 घंटे से लोग लाइन में लग के बात कर रहे हैं हमसे, so they are also investing their time. And this is the big investment of time, is the biggest investment than money. This is what the I hope you would agree. Varun, you would agree to it. Who else can agree, Vibhor? You know, just for everybody else, you know, I also have a family, I also have a job, and this is something which I'm only doing it for the passion around SSR. और कुछ नहीं है, you know, I'm not making money, I'm not, you know, कोई मेरी ज़्यादा publicity नहीं हो रही. This is because I am passionate. And as I said in the beginning, it's not about only SSR now. It's about India. It's about Indians. It's about justice. It's about justice. Change the system. It's about mafia. It's about mafia mukt Bharat now. We are fed up of this mafia. Correct. And Varun, one more thing, क्या हम ऐसा कुछ, जैसे अभी कई सारे पॉजिटिव चैनल्स हैं, जैसे किशकन भंडारी भी चला रहे हैं, आई नो, मुझे ऐसा लगता है सर पॉजिटिव हैं, उज्जवल त्रिवेदी भी हैं, तो 2 लोगों को मैं फॉलो कर रहा था और काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, कि ऐसे कुछ लोगों को हम वीकली एक सेशन साथ में किया जाए, सो दैट हम एस्केलेट कर पाए अपने इस मुहिम को, कि यार लोग बहुत ज्यादा जुड़े, स्पीड अप हो जाए, सो दैट जो एजेंसीज है ना उनके ऊपर भी प्रेशर रहे, और जो अपोजिट में बैठ के थ्रेट दे रहे हैं या किसी के हाउस को वॉच कर रहे हैं उनके अंदर एक डर पैदा हो जाए कि बॉस अब बच नहीं पाएंगे. Very good suggestion. I already am in touch with, क्योंकि उज्जवल के साथ I think we've done couple of sessions already. So that's a very good suggestion. I'll reach out to Ikaran as well.
Okay, if a couple of us can get together and then have such sessions, I will definitely take it up with Ujjwal first, and अच्छा, then इट्स अ कैलेंडर लाइक अ होल मंथ कैलेंडर एवरी वीक, सो दैट वो एक एक्सेलरेशन हमको मिल गया फॉर अ मंथ ना, तो ये सब ना फट जाएगी, ऑलरेडी फट जाएगी सबकी. sure, we'll take it. Thank you so much, Thank you. Varun. Thank you so much. Thank you, Vibhor. We'll connect All right. again somehow. Thank Bye you. bye. Thanks. Take care. Good night. All right. Go for it, Rajat. You've been here for a very, very long time. Yeah. Can you hear me clearly? Yes. Awesome. Well, thank you for letting me have the opportunity to talk to you guys. Yeah, but I am from Gwalior, Madhya Pradesh, but I'm currently based in Iowa. It's 2 a.m. right now, but doesn't feel like it at all. Being engaged with all of you guys and Vibhor and everybody. So बहुत लोगों ने बहुत तारीफें आपकी कर दी हैं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग और बात करना चाह रहे हैं. स्टिक टू द क्वेश्चंस, बट यू डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड कीप डूइंग इट. मेरा पहला सवाल जो है, आपने आज शुरुआत में शायद मेंशन किया था विभोर कि ये जो पैटेंट फाइल किया है वो एक अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर सुशांत ने अमेरिका में किया है. तो अगर इस क्योंकि पैटेंट अगर फाइल हो चुका है कंप्लीटली, क्योंकि पैटेंट फाइलिंग की भी काफी स्टेजेस रहती हैं, जो फाइनल स्टेज जो 18 महीने का टोटल हाँ, वो फिर वो पब्लिक हो जाता है. तो हाँ, तो आई डोंट नो कि वो पब्लिक हो चुका है कि नहीं. अगर वो पब्लिक हो चुका है, हाँ, और अगर वो नहीं भी हुआ है तो भी अगर वो यहाँ के सिस्टम में फाइल्ड है तो इजीली हम लोग जो कम्युनिटी बन गई है, आप देख रहे हैं इंडियन अमेरिकन तो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस इशू में, इजीली कोई भी अपने कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करके जो लॉयर्स हैं उनसे यहाँ पर ही एक पैटेंट के खिलाफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस किया जा सकता है अगर हमको इनटू दिस मैटर. ओके. और उसके बाद बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ माफिया, तो वी डोंट वांट कंपनीज के ऊपर भी कुछ बात है. So we are in touch with them, and hopefully I would be giving Varun a very good news in a few hours from now. I already have the news, but I'm waiting for the session to end and so that I can get in touch with him. ओके, तो मेरा सेकंड सवाल है वो थोड़ा दोनों जो बाकी जो क्वेश्चंस है मेरे वो थोड़े मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक जो ड्रग्स की बात चल रही है, तो मैं ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी रीजन की वजह से ही इतनी ज्यादा ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिस वजह से एनसीबी इन्वॉल्व हुई है. बट एक बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये सिर्फ मैरिजुआना रिलेटेड हो, क्योंकि मतलब अगर सुशांत अपनी मर्जी से मैरिजुआना पूरे दिन भी लेता था तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता. मेडिसिन, मतलब ये तो सभी जानते हैं. अगर आप मैरिजुआना की हिस्ट्री में जाएं, व्हाई मैरिजुआना वाज बैंड इन इंडिया बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इट वाज अ वेरी डीप रीजन. फार्मास्यूटिकल कंपनीज परेशान हो चुकी थी. कैंसर, the war on drugs that was started by Reagan had its impact in India too. की ग्रोथ को खत्म कर देता है मैरिजुआना. इफ यू गो बाय द आयुर्वेदिक थिंग, हमारे देश में किसी हम सारा दिन ये मैरिजुआना फूकते रहते हैं साधु बाबा, इनको तो कैंसर ना होता. मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, मैं क्योंकि एक फूड साइंटिस्ट हूँ, मैंने अपनी पीएचडी जो है वो फूड साइंस में की थी, तो मैं एक प्रोफेसर के टच में था स्पेन में, जिन्होंने एक्चुअली she had published many articles. I can get you in touch with the people who are actually campaigning for making cannabis and marijuana legalized in India. You please DM me. It has to be made legal. It is ridiculous जो हमने अपने कल्चर के इतने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को जो है वो इस तरीके से दूसरों के कंट्रोल में आके, anyway, थोड़ा टेंजेंशियल चला गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो वापस मैं आऊंगा इस पे वो ये है कि क्या आपकी नॉलेज में ये है कि हार्ड ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें, उसके एविडेंसेस एजेंसीज पे हैं? क्योंकि जो भी मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है वो सिर्फ आप देखोगे इनकी कैंप जो रिया का भी इंटरव्यू था वो भी बार बार वीड अर्नब टाइम्स नाउ MDMA, कोकेन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, सिंथेटिक, अब जैसे चिट्टा विट्टा दुनिया भर की चीजें अब बन चुकी हैं हिंदुस्तान के अंदर. एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, पाकिस्तान से आता है, लेकिन मंगवाने वाले तो हिंदुस्तानी है.
उसका सप्लाई करने वाले हिंदुस्तानी है। देश अब प्रॉब्लम ये है कि इट हैज बिकम अ मल्टी बिलियन इंडस्ट्री इन द लास्ट डेकेड। अब इस मल्टी बिलियन इंडस्ट्री को खत्म करके उसके उसके एक साइमल्टेनियसली एक नई इंडस्ट्री खड़ा करना इज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। तो दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। मल्टीपल एजेंसीज इसीलिए लगी हैं इस केस के अंदर ताकि एक सिस्टमैटिक वे में इसको खत्म भी किया जाए और उसका एक अल्टरनेटिव लोगों को दिया जाए। अब एक शराबी को बोलोगे तो शराब छोड़ दे एकदम से, तो उसके लीवर पे तो इफेक्ट होगा ही होगा। Because I have been an alcoholic तो आप कह myself. रहे I हैं know what it takes to quit alcohol. या तो आप कह रहे हैं कि एजेंसीज पे marijuana के अलावा भी जो ड्रग्स सुशांत के केस में यूज हुए हैं या सुशांत को दिए गए हैं सब कुछ या ये लोग उनकी बिल्कुल है, उपस्थिति के बिल्कुल एविडेंसेस होंगे उनके पास और बिल्कुल उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। That is the reason शोभिक चक्रवर्ती is now behind the bars. हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन कि जब इन लोगों के टेस्टिमनीज मैंने बड़े ध्यान से सुने, ये जो 3 लड़के थे सुशांत के साथ जिन्होंने उसकी डेड बॉडी देखी है, दीपेश, केशव, और केशव का तो कोई इंटरव्यू ही नहीं आया, और ये लड़का जो नीरज उसका कुक था, और पिठानी, तो वो तीनों एक, हालांकि बाद में जब उनका बहुत तगड़ा इंटेरोगेट किया गया तो उनके स्टेटमेंट्स में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस मिले कि वो नरेट क्या कर रहे हैं स्टोरी की, सुबह से क्या हुआ। बट मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने काफी मर्डर केसेस में काफी देखा भी है, तो इनको ये जो इनके स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशंस भी कराई गई कि तुमको क्या स्टोरी बोलनी है सुबह से उठ के देखिए जब ये मर्डर हो उस चुका टाइम था? पे नहीं बताई जाती जब मर्डर हो चुका था, ये बाद में बताई जाती है कि अब तुम्हें ये बोलना है। हाँ, और 1 महीना तो हो ही चुका था, प्रॉब्लम ये थी, मतलब जब प्रॉब्लम तक इन ये थी, लोगों को यही इंटेरोगेट इनकी किया है, खराब जब हुई कि इनको इतना कंफ्यूज कर दिया गया। अब तुम्हें ये बोलना है, नैरेटिव चेंज हो रहे हैं, अब तुम्हें ये बोलना है, अब तुम्हें ये बोलना है, मीडिया में ये जाना है, ये जाना है। तो अपनी स्टेटमेंट, इंसान तो जब सच बोलता है ना उसको याद रहता है, जब झूठ बोलता है तो भूल जाता है कि मैंने बोला क्या था। हाँ। तो ये बस इसी का लास्ट पार्ट है कि ये जो लड़के हैं 3, आपके हिसाब से ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे मर्डर में या इनको इनको सो ये थे अब वहां पे उस जगह पे, मैं अब मर्डर इसमें हुआ और ज्यादा उनको चुप कमेंट रहने नहीं के लिए कर बोला सकता क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टोरी दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज। जहां तक मैं कर सकता हूँ मैं कर दूंगा, एंड यू हैव टू माफ कर दीजिएगा। ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं आप बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से उस चीज की सैंक्टिटी को समझ रहा हूँ, और बिल्कुल बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि उनका आपके आपके हिसाब से कितने लेवल का इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है इन 3 देखिए लड़कों में? इनका बस। इन्वॉल्वमेंट अगर ना होता तो अब तक ये छोड़े जा चुके होते। तो दे न्यू समथिंग, they knew something, we know what they knew, and very soon everyone will get to know. Okay, well those were my 3 questions. Thank you guys. Thank you so Varun, much. you're doing a great job. Thanks Thanks guys. Rajat. Take Bye. care. Good night. Thank you, sir. Viper Thank Ajay, please go next. Thank you for letting me speak. I've got 3 questions. Sure. First about IABM, India Against Bias Media, वो वाला जो प्लेटफॉर्म है गूगल के साथ। के अलावा स्टीव पिंटो का जो इंस्टाग्राम का पोस्ट है जिसमें प्रवीण बाबी और सेक्स ट्रैफिकिंग और तो उनके डिकोडिंग के बारे में जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट है स्टीव पिंटो का, उसके बारे में। और तीसरा क्वेश्चन है सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएमओ को, जो आपके ट्वीट में ही था कि उन्होंने डायरेक्ट उनसे पूछ के लिए उनको बोला, यार आप तो उनके खिलाफ म्यूट कोई कर एक्शन लिया देंगे, जा रहा है उनको? I'm not able to hear. Can everyone mute their mics? Yeah, Jagjeet Singh ji, please, I am muting you. Please don't unmute abhi ke liye. There's a lot of background noise. Thank you. Yes, go ahead. तो आपका पहला क्वेश्चन था 3 IABM questions. के ऊपर। First one about IABM. इंडिया अगेंस्ट बायस हाँ। मीडिया मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट इन दिल्ली जो काम करती है बायस मीडिया के अगेंस्ट, तो फेक न्यूज को बस्ट करती है। पहले हम लोग बहुत वोकली काम करते थे,
पहले हम लोग बहुत वोकली काम करते थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमें थोड़ा सीक्रेटली अब काम करना पड़ता है, बट द ऑब्जेक्टिव इज सेम। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट फेक न्यूज एंड फेक नैरेटिव, और शायद तभी आप लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? स्टीव पिंटो के वो स्टीव इंस्टाग्राम पोस्ट। पिंटो का इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है उस पे जो भी हैशटैग उसने यूज किया हुआ है उसकी डिकोडिंग, क्योंकि प्रवीण बाबी का वहाँ पे देखो भैया, उसने ऐसा मैं बोला है, कॉन्स्पिरेसी प्लस थ्योरीज में नहीं ट्रैफिकिंग। जाऊंगा। जब मेरे पास मेरी एजेंसी की तरफ से कोई इंटीमेशन आएगी तब मैं आप लोगों को बता दूं, बिकॉज एवरीवन थर्ड इज क्वेश्चन था। गोइंग अप विद न्यू नैरेटिव। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी के ऊपर था, क्या था? हाँ, क्योंकि आपने ने बोला ना ट्वीट पे कि वो डायर कॉन्सिक्वेंस के लिए उन्होंने पीएम को कुछ बोला था ऐसा वैसा, तो प्लस कम्युनिस्ट है ऐसा वैसा, तो क्या उन पे कोई ऐसा अरेस्ट का या ऐसा कुछ होने वाला? भैया ऐसा है, ये तो एजेंसी के ऊपर उनके खिलाफ डिपेंड कुछ भी करता है। लीगल एक्शन? क्योंकि आप ले लो, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो आप मेरे ट्वीट को कोट करके उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दो। लीगल एक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी ये सारा जो गेम होता है ना, अनऑफिशियली होता है, मैसेज कन्वे कराए जाते हैं, तो टेक्निकली डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमेशा मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो सवाल के तौर पे देता हूँ कि आप बताओ ये सही है या नहीं है। अगर उनका जवाब आ जाता कि ये गलत है तो मैं गलत साबित हो जाता। Okay. ठीक है आपने बोला वो ब्लॉक किया हुआ है आपको, मतलब ट्विटर पे इस कदर ने ब्लॉक किया भैया, है? ब्लॉक किया हुआ है तो इसका मतलब ट्विटर ये पे थोड़ी है कि मैं और चार अकाउंट बना के उनकी ट्वीट नहीं देख सकता। वो भी तो देखते ही हैं, उनकी पूरी पीआर टीम है। जब मैं चार अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ अपने आईएबीएम के थ्रू, तो मेरी भी टीम है, मुझे भी सारे स्क्रीनशॉट आ जाते हैं। आज की डेट में कितना आसान है किसी पे नजर रखना। मेरे 40,000 फॉलोअर हो रहे हैं, 40,000 में से उनके कितने बंदे होंगे मुझे क्या पता। All right. So, इस टाइम पे पर मैं एक थोड़ा सा जरूर मतलब बॉलीवुड और क्रिकेट को जैसे इंक्लूड, क्या? Go ahead. बॉलीवुड और क्रिकेट को जिस तरह से इंक्लूड किया गया, तो एक केस था ना श्रीसंत वाला, जो शायद मुदगल कमेटी ने वो नाम वाम दिया था, मैंने वो रिपब्लिक पे ही देखा था, उसका ये डिबेट था जिसमें श्रीसंत इंटरव्यू था, तो उसका भी कुछ न्यूज है ऐसा, मतलब ये केस के तो? भैया देखो, ऐसा एंड में ना सारे एक ही थाली के क्योंकि चट्टे क्रिकेट और बट्टे, बॉलीवुड को जिस तरह से लिंक, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे बॉलीवुड वाले हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे। स्टीव विंटो का मतलब डेथ का जो प्रोबिंग है, क्या सीबीआई अभी तक प्रूव नहीं की हुई है डेथ हो भाई। गया ऐसा बोला? किसी ने कह दिया और किसी के कहने पे मान लोगे क्या? प्रूव नहीं हुई है ना अभी तक। ऐसे तो मैंने भी कहा नंदी दमन जिंदा है, प्रूव हो गया क्या वो जिंदा है? जब प्रूफ दूंगा तभी बात करोगे ना। उसकी फैमिली ने तो कुछ नहीं बोला। Okay. यूट्यूब पे या इसीलिए इंस्टा पे कहते हैं वायरल हो रहा था कि इसीलिए उसकी कहते नीज हैं या ऐसा थोड़ा कुछ। इसीलिए कहते हैं हर चीज पे ब्लाइंड फेथ मत करो, थोड़ा दिमाग कोट लगाओ। कोट किया मैंने, आईएबीएम को इसलिए कोट किया कि फेक न्यूज वायरल हाँ? हो रहा है उसी पे, इसलिए आईबीएम को पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो आईबीएम, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आई- फर्स्ट वन वो आईबीएम के बारे में, तो आईबीएम के बारे में, इंडिया अगेंस्ट बायस मीडिया, तो फेक जो क्या न्यूज वायरल हो नैरेटिव गया? फैल रहा है उसी के खिलाफ में है ना वो? हाँ ये बिल्कुल। मैंने पोस्ट पढ़ा था ना, जैसे ये इंस्टाग्राम पे स्टीव पिंटो का डेथ हो गया है, तो हाँ, तो ये आईबीएम का भी तो एक मतलब आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए कि ये फेक न्यूज है या नैरेटिव है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पे तो इसका कोई यार ये नहीं यार पड़ेगा ना। देखो, मैं क्या क्या करूं? जी। मैं आप लोगों को बिग ब्रेकिंग भी दूं, मैं आप लोगों को सबूत भी दूं, मैं सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भी काम करूं। यार बख्श दो। लोग मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं रात के टाइम, और ऐसा लगता है कि ऐसा ही वाले हैं। बख्श दो भाई, मुझे थोड़ा शांति से काम कर लेने दो। हर एक चीज इसीलिए मैं कोट नहीं किया कर था सकता। आईबीएम को। ठीक। मेरी टीम काम कर रही है। नहीं, आपने बोला एक टीम है आपकी वो। बिल्कुल है तभी। यार अकेला बंदा क्या सब कुछ कर सकता है? अगर टीम ना होती तो मैं क्या करता? टीम जब मुझे इंटीमेशन देगी मैं अपनी कार्रवाई कर दूंगा। रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी।
लेकिन लेकिन मुझे थोड़ा बस वो क्लैरिफाई करना था, मैं स्पैम कर रहा हूँ क्या सबसे कमेंट में वो। नहीं, स्टीव पिंटो के बारे में तब से हम स्पैम कर रहे थे कोई बात नहीं, कोई बात कमेंट्स में, तो थैंक यू फॉर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का ठीक है, काम थैंक है यू। कहना, स्पैम भी करना उनका काम है। स्पैम मैं ही कर रहा था ना, मतलब जानना था कि स्टीव पिंटो अच्छा अलाइव ठीक है है, या कोई फिर बात नो वरीज, वो जो इंस्टा ये पोस्ट आपका थे। अधिकार है स्पैम करना भी। Okay. All right. थैंक यू। Thank you. All right. I'm gonna take this before I take next one. Chat पे भी बहुत सारे questions आ रहे हैं, and I'm gonna randomly pick, but this one has been put many times before. You said Salman Khan is sacked from Big Boss. ये कुछ दिन पहले आपने बोला था. बिल्कुल, And and I stand by that statement. sorry, can you repeat, Vibhor? आपको आपको ये दिख रहा है कि सारे न्यूज चैनल्स पे अचानक से, जब से मैंने ये खबर ट्वीट की, सलमान खान की बिग बॉस की एड 5 गुना बढ़ गई है, बीट एनी चैनल। पहले खबर आती है 250 करोड़ की, उसके बाद आती है 450 करोड़ की, आने वाले टाइम में 600 करोड़ हो जाएंगे। पीआर कैंपेन कैसे काम करते हैं आपको भी पता है वरुण जी, मुझे भी पता है, लेकिन दुनिया को समझना चाहिए। छोटी छोटी चीजें एनालाइज कीजिए, यहाँ तक कि रिपब्लिक पे भी आ रही है सलमान खान की ज्यादा से ज्यादा ऐड है। Okay. एनालाइज कीजिए कि उस दिन के ट्वीट के बाद से कितना % इन्होंने पीआर कैंपेन बढ़ा दिया है सलमान खान के लिए। और सबसे बड़ी बात बिग बॉस के बारे में, जिन 14-15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें से आधे से ज्यादा बैकआउट कर चुके। Okay. ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। और बताइए। अब कलर्स टीवी इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, मुझे पता है। Okay. अंबानी साहब है ना। Right. So if I have to just get a final answer for everybody, has Salman Khan been sacked? Yes or no? क्या कह रहे हो? Yes. Okay. All right. So we'll all see when it happens, और जब officially disclose होगा, आप सबको भी पता चल जाएगा. All right. Let's go to the next questions. जो हमारे लाइन में बहुत देर से बैठे हैं, हर्षवर्धन जी, go for it. नमस्ते भैया, मेरा नाम हर्षवर्धन है. कैन यू हेयर मी? एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर. यस. हाँ भैया, जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ. जैसे आपने बताया था कल भी कि पबजी बैन होता है, एक दिन बाद फौजी लॉन्च हो जाता है और कोडिंग, प्रोग्रामिंग, उसकी डिजाइनिंग सब कंप्लीट हो जाती है एक दिन में ही और लॉन्च कर देते हैं वो लोग, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो मेरा सवाल ये है कि क्या पबजी का जो बैन होना है वो भी प्लान था, यानी कि पबजी इसीलिए बैन किया कि फौजी आ सके? देखिए, कुछ चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, लंबे टाइम से था। और जब सुशांत की डेथ हुई, उसी टाइम से ये चाइनीज एप्स को बैन करने का प्रोग्राम चल रहा था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि हम अपनी गेम्स को लॉन्च करेंगे, हम पबजी का भी लेके आएंगे, हम उसका भी लेके आएंगे। तो इसके साथ कोई लिंकअप नहीं है कि प्लान है, इनके साथ प्लान किया गया। जो उनकी टीम में भी लोग हैं ना, वो भी बहुत समझदार है। सिर्फ विभोर या वरुण ही एंटिसिपेट नहीं कर जाते कि आगे क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए देश चल रहा है। अच्छा, मतलब पबजी का बैन होना तय था, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए फौजी लॉन्च कर दिया. एब्सोल्युटली, यही हुआ. ओके, so that's all I wanted to ask. Thank you. Okay, thank you so much. All right, Joy, please go ahead. Hi Varun, hi Vibhor bhaiya. It's been a long time. I've been willing to talk to you both. So feeling so great. So I have been following Swami Ji, the great Swami Ji, for a very long time. उसका एक चैनल भी है, विराट हिंदुस्तान संगम, ठीक है, VHS, like that. So विराट हिंदुस्तान, हाँ, एग्जैक्टली वही है. तो वहाँ पे मैं उसका इंटरव्यू पहले सुनता था. पहले तो वो सब कुछ का बात कर रहे थे, बॉडीज का, 2 बॉडीज का, सब कुछ ओके. तो फिर अचानक से इन बिटवीन ही टर्न्ड 360 डिग्रीज. Okay, somehow I heard that he was telling the truth, but whitewashed, means half truths.
Okay, so no mention, only drugs, and no mention of dead bodies, and no direction to Matusri. Yes, there was no direction to Matusri. Yeah, uh, so उस टाइम मुझे समझ में आया ये तो हमारे दाल में कुछ काला नहीं है, डाल ही काली है, ठीक है। तो अब Absolutely. वीवर भैया का उस टाइम में ये देखा, एक ट्वीट भी देखा कि दिल्ली में कुछ हुआ था, कुछ मीटिंग उसके बाद ही ये सब, तो मैंने मतलब समझ में आ गया कि वही एक्शन था, इसका रिएक्शन यही है। तो मतलब ऑल अबाउट अ गेम ऑफ नैरेटिव्स। दे started the starting game was very good from the Ria side, but they are definitely going to lose the end game. ओके एंड जो ड्रग्स का एंगल मतलब ला गया, मतलब आ गया, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा टूल है। पहले तो इन लोगों को अंदर अंदर डालो, फिर पूछताछ करो इन लोगों को। ये मतलब पहले पूछताछ करके अंदर डाल दे तो चलेगा? हाँ हाँ, पहले पूछताछ करके फिर अंदर डाले तो चलेगा? नहीं ये तो एक देखिए टूल तो मिल गया इन लोगों को कि एक ड्रग्स का एंगल तो है ही, इन लोगों को तो एक मौका मिल गया। इन लोगों को तो पहले नैरेटिव्स ये वो बता रहा था, ये वो बता रहा था, तो अब ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर होगा। अभी ये लोग दे विल स्टार्ट टेकिंग नेम्स नाउ, दे विल स्टार्ट टेकिंग नेम्स। So this is a very good point. And my second question is, so when the mortuary guy was interviewed, okay, so India news, some that, so he said that doctors are saying that it is clearly a murder, okay, because there were multiple injection marks throughout his neck, and also Vibhor Bhaiya told that the final blow was given by Khatri, okay, I या so मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा है ये लोग मतलब ये जो मर्डर हुआ ना पूरा हिट ऑफ द मोमेंट में हुआ था, तो ये कवर करने में इन लोगों का कुछ जुगाड़ करना पड़ा। वो सुबह में ही हो गया था। और एबीपी जब 14 जून को जब एबीपी न्यूज में देख रहा था, उसमें 2 लड़के बाहर आ रहे थे, एक टोपी वाला। I'll interrupt you. It's time for a big breaking on Varun's show. The weapon used to beat up and break the legs of Sushant Singh Rajput was Sliger. Okay. स्लाइगर का यूज हुआ था। ये एक ऐसा वेपन है जिसपे जो आपकी स्किन पे निशान नहीं देता, लेकिन इंटरनल बोन्स पे ये बहुत इम्पैक्ट करता। अच्छा, वरुण, डिड यू हियर इट? यस, और मैं इमीडिएटली देखना भी लगा हूं व्हाट इज अ स्लाइगर। ओके, अच्छा, डिड यू अच्छा, से? ओके, और not getting the right spelling, but maybe I'll find it. I'll send you. Okay. इस वेपन की, इस वेपन से उसके हाथ, उसके पैर तोड़े गए, उसकी स्टन गन तो यूज हुई थी, वी ऑल नो दैट, लेकिन हाउ डिड दे ब्रेक द बोन्स वाज a mystery. It has come to the conclusion that the bones were it or it came into the interrogation of Imtiaz Khatri and other people who are into unofficial custody. They have spilled the beans that what weapon did they use to break the legs of Sushant Singh Rajput. Yeah, so maybe you'll have to send it because I don't see anything like was spelling check. I'll send you. Sure. I'll send you. Thank you. Okay. Okay. Thank you Okay. For permission. So मेरा और एक लास्ट क्वेरी है, ठीक है? सबका टाइम तो ये मतलब वो जो ये टेजर गन, स्टन गन जो यूज हुआ था, मुझे तो ये पूरा लगता है इसका मतलब कोई लॉ ऑर्गेनाइजेशन ही इसके पीछे है। मींस आई मीन डायरेक्टली टू द पुलिस or towards, I am pointing directly to Matosri because that is unofficially that headquarters, you know. Well, I'm happy though that people are starting taking the names Matosri now. And all of the Bangla, ye wo baby penguin. It is time that we name and shame them. Yes. So the more we take their name, the more they would get into their grooves.
उतने बिल में जाएंगे और हम उन्हें खींच के निकालेंगे. Yeah, so that is definitely a trap. Yeah, so यही मेरा query था. तो thank you वरुण भैया, thank you Vibhor भाई. I will keep connected. Thank you so much. Thank you so much. All right, take care. All right, let's go. Atul, welcome back. Thank you. Welcome back, Atul. Hari Om, Vibhor ji and Hari Varun Om. ji. Hari Om. Good to see आपके you guys again. आपके मित्र को आज सीबीआई ने बुलाया हुआ. पता है मुझे, बात हो गया मेरा. कल ही पता चला था मुझे. मुझे भी कल ही बताया उन्होंने, लेकिन मुझे बता दिया था. हाँ. होने वाला है बात. तो शाम थोड़ा शाम नहीं, अभी कितना हमारे इधर 12:30 बजे, तो हो जाएगा. अभी जब भी प्रभु का मन करेगा तभी कॉल करेंगे. हाँ, नहीं मेरे पास आया था कॉल, लेकिन I couldn't take it because I was live. हाँ, he told me he will be calling you. So good to see you though, guys. So couple of questions. Absolutely. Yeah. Sure. I think I may have missed that part where we were discussing Steve Pinto. So what is the angle with Steve Pinto? Because he was trying to reach out to, I think even Republic TV. यार देखो, स्टीव पिंटो के बारे में right now I am not authorized to open my mouth. Okay. So let me get Yeah. No, I understand. I missed that answer. I remember that, and I had also put it there. I think Varun, you might have seen that. Yeah. Varun, I don't know if you saw that. I had put it long time back when I chat started. I know. So, I think बहुत सारे questions थे. I'm pretty sure I saw. Yeah. Or second thing, what's the deal with Anandi Dhawan? Anandi Dhawan, she was working with Ishan very closely on various projects. नहीं, बट अभी तक उनको बुलाया नहीं क्या? फिर बुलाएंगे जब सीबीआई को लगेगा सही टाइम आ गया उनको सामने लाने का, तो बुला लेंगे. Some things are left to the discretion of the officers. इन्वेस्टिगेशन वो करे. हम यहाँ मैं शिमला में, आप लोग यूएस में, दुनिया भर से बैठ के बातें करना हमारे लिए बहुत आसान है. अतुल जी, what these people are facing, they only know. Oh, yeah. So let us salute them for the peer pressure that they are facing. Absolutely. Or the last thing, after you mentioned yesterday about Matoshri and Shiv Senega, connection, I remember very clearly when Sanjay Dutt had got arrested. I remember my father was there that time, and it happens to be my father's anniversary death. So just recall that he had specifically said that when Shiv Sena came in power, that now you'll see Sanjay Dutt being taken out of the jail, and exactly that's what happened. Absolutely. 13 महीने रहने के बाद जब आए थे वो. Correct. I remember very, very categorically that my father was a man of few words, so he clearly mentioned while watching the TV that now Shiv Sena is in. See, Sanjay Dutt will be out. That's what happened. So I don't know whether it was a hidden secret or whatever, or kind of a public secret or whatever. Shiv Sena is nothing but the originator of mafia in Mumbai, with the great Bala Saheb Thackeray as the original D. ये सारे जितने हैं ना, दाऊद ये वो सब बच्चे थे उनके. Okay, बच्चों को उन्होंने कहा. One second before, sorry. So, guys, please, if I don't know if I already kicked him out or not, but if somebody is smoking, please don't be on the screen. I don't know who was smoking. I might maybe missed it, but people are putting comments. We cannot smoke on this medium, please. So if I've already kicked him out, it's okay. But if you are still there, please don't do that. Sorry, Vibhor, go ahead. No problem. Thank you, Varun. So another thing what came into the picture was आपने जो 1970 का बोला कि Bala Saheb Thackeray fostered all the underworld, starting with Haji Mastan. There is a very darkest chapter in the history of Bombay about mills getting closed and why they got closed and what were the stakes. It was all about who has the maximum amounts of automatic weapons, and for that you need the money, and for that they were targeting the mill owners who were not willing to even sell their mills. And I think some of the murders, like I think what was that name? Khatau Mills owner was killed. Yes. Right? Yes. And that was the
starting point of the Mumbai underworld Correct. mafia. Correct. And that actually made me think, because I had read a big article around 12-13 years back on Midday. काफी बड़ा था. What I mean, happened was, I have only one question: why all the other organizations were banned in India and Shiv Sena was not banned yep. during emergency? ठाकरे पिक्चर को अगर आप देखें तो बहुत आसानी से उनको कह दिया गया कि अनुशासन होना चाहिए, ये होना चाहिए. बुलशिट. मैंने देखे नहीं. वो संजय राउत बनाता है. मेरे पास इधर इतने 500 डीवीडीज पड़े हैं. ठाकरे मैंने देखा ही नहीं. द मोमेंट आई हर्ड संजय राउत अरे मेकिंग इट, मैं बोला नहीं नहीं अतुल भाई, प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे लोगों को देखनी पड़ती है कि वी हैव टू, व्हाट आर द नरेटिव्स गोइंग ऑन. करेक्ट. हमें आई डोंट गिव अ डैम अबाउट मूवीज, बट हमें मजबूरन में देखना पड़ता है कि नरेटिव ही क्या है, व्हाट इज द नरेटिव, इज इट ट्रू और फॉल्स. अब मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आपने दिल्ली क्राइम्स देखा होगा नेटफ्लिक्स पे? नहीं. ऑन दिल्ली गैंग रेप केस, निर्भया केस. नहीं देखा, बट मैंने निर्भया केस मुझे पता है. मेरे से ज्यादा नहीं पता होगा, मैं उसमें था. नहीं आई नो दैट. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एब्सोल्यूट अपोजिट नरेटिव ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड. और तो उसमें एक नरेटिव सही था कि जो उसका लड़की का फ्रेंड था अमरिंदर प्रताप पांडे, दैट ही गॉट सोल्ड आउट टू मीडिया, दैट वाज द करेक्ट. बाकी सारे नरेटिव पुलिस से लेके ये वो, दे एक्चुअली एक हवा ऐसा बना दी. पॉलिटिशियंस ने एक्चुअली इस केस को सॉल्व किया. तो पॉलिटिशियन को तो घुसने नहीं दिया था, सीधा दूसरे को कैसे मार मार के भगाया था, हमें हमसे पूछो. Yep. So नहीं, thank you. It's all about narratives. Yep. And when you meant that is why I said that is, sorry to interrupt. No, I'm sorry. Yeah. That is why when I said last to last जब मेरा 4.5 घंटे का सेशन हुआ था, that after this session many people would believe in the new narratives of Matoshri and Bala Saheb Thackeray. Oh yes. वो कोई खुदा नहीं थे, वो भगवान नहीं थे. Sorry to थे वो गुंडे. It made us think and go back. In fact, and I would want to highlight this, 1996 when Broken Arrow was released, a normal middle class person who was supposed to sell his plot, he was killed in a theater while watching Broken Arrow. That was way back in 1996, and it was Shiv Sena who was doing that in Pune. I'm from Pune basically. Okay. So तब से that it actually makes all linkages कि probably it's a knot, or it's throwing down the building, or going into a theater and killing a normal person, common man. यार देखो, at the end of the day, मुंबई की जो हालत है, that is only because of Shiv Sena. And again I would say it is not about justice anymore. It is all about taking control of the waters of Mumbai. जो इंसान या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो पॉलिटिकल पार्टी या जो सरकार मुंबई के समुद्र पे कंट्रोल करेगी, वो मुंबई पे कंट्रोल करेगी. Absolutely. And for the last 50 years, Bala Saheb Thackeray and Thackeray family had a control over the waters of Mumbai. Either Suhaji Mustaf, ये मैं now I can relate कि जो once upon a time मुंबई में अजय देवगन का डायलॉग था कि जो समुद्र पे राज करेगा वो मुंबई पे राज करेगा. Now I can relate to that. Oh yes. दयावान में भी वही दिखाया ना. दयावान में क्या दिखाया? समुद्र, विनोद खन्ना मैनेजेस द समुद्र, शक्ति वैल्यू. Absolutely. So it's not about, क्योंकि आज की डेट में सारे के सारे पोर्ट्स पे जो महाराष्ट्र के हैं, सब पे शिवसेना का कब्जा है. सारे ड्रग्स वहीं से आ रहे हैं, सारे इलीगल वेपन्स वहीं से आ रहे हैं, सारे ऑटोमेटिक वेपन्स वहीं से आ रहे हैं. पाकिस्तान ये वो. तो नाउ दे वांट टू एंड दिस control of the mafia. That is why I again said #mafia mukt Bharat. Sure. That is a clear statement from Delhi. Yeah. By the way, विभोर जी मैं आ गया ट्विटर पे, आपको हाय बोला था. अरे उसी रात. तो मेरे को डीएम किया आपने? नहीं करूंगा. मुझे डीएम पता ही नहीं क्या है. आप डीएम बोल रहे थे, मैं नया हूँ ट्विटर पे, तो डीएम देखूंगा मैं क्या करूंगा. मेरे को मैसेज भेज देना. ओके. थोड़ा इलिटरेट हूँ उसके मामले. मैं भी 10 साल पहले था. Now I'm a postgraduate. मैं अभी. Cool. Thank you though. Thank you. Yeah.
Thanks, Jai Atul. Mahadev. Thank you. All right, Anupma ji, please go ahead. Welcome again. Go ahead. आप म्यूट पे हैं. My Okay. mic is muted, I think. Yes, go ahead. Yeah, we can hear. Uh, okay, Vibhorji and Varunji, namaskar. I think Varunji, you will see NCB on your doorstep very soon क्योंकि आपका जो शो है वो एक cocaine addiction की तरह होता जा रहा है सबके साथ. And now not only I am addicted, my husband is addicted too. So I congratulate you on that. Thank you. You know, आपने एक second तो डरा दिया था. You are but very sweet, Varunji. What you can do is you can shorten the time of the persons who are coming on your show. Give them a limited amount of time and just 2 or 3 questions where Vibhor is comfortable so that all of us can hear Vibhor more, and then you will not face this problem of, on your comments is always coming, then some bad comments are coming. Exactly. So I know. I want to ask Vibhorji, and yesterday night was very scary when we could not see your show and so many things were coming in the mind. I had a bad dream also. So that's the case. Anyways, Vibhorji, जो लोग बोल रहे हैं कि there is no drug connection in this murder case, मुझे क्लियर कट ड्रग कनेक्शन दिखता है क्योंकि अगर ड्रग कनेक्शन नहीं है तो उसको कोई प्लॉटिंग नहीं होती उसको बायपोलर और डिप्रेस दिखाने के लिए. उनके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जाते उन ड्रग्स को खरीदने के लिए और ये सुसाइड नहीं दिखाया जा पाता. पीडोफाइलिक एक्टिविटीज को स्टॉप नहीं किया जा सकता था. एंड जो शायद सुशांत और उसके फ्रेंड ने किसी पार्टी में बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंट देख ली थी जिसकी वजह से उनका दूसरा जो उनका प्लान्ड वे था कि उसको एक बाइपोलर डिप्रेस सुसाइड की तरह दिखा देंगे, वो उनको दूसरा प्लान शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पीडोफाइलिक एक्टिविटी देख ली थी शायद किसी बड़े स्टार या डायरेक्टर. तो दूसरा आदित्य ठाकरे की. हाँ जी, पीडोफाइलिक एक्टिविटी. और भी एक उसमें एक फिल्म स्टार और डायरेक्टर का भी नाम आ रहा है. They are too very much fond of. Shit. What happened? I don't know. Anupama ji, are you all right? Are you okay? Okay. I don't know what happened. Maybe she'll join back. I'm having a call. So I'll be back in 2 minutes. Sure. Go for it. Okay. All right. So we'll wait for his call to get over and then we'll ask questions. But एक बार फिर से, just a little bit of kind of suggestions and warning. Yeah, some guidelines. Please don't smoke. I maybe have missed who was smoking, but because of that, it's possible our video might just be stopped later. Yeah, बाद में delete भी कर दे. So please be mindful. Don't do any such activity on live right now. You cannot. He has left the group now. Sorry, what? He has left the group. No, I kicked him out. I maybe missed it. Who he was initially? I kicked somebody else. He was smoking actually on the screen. Yeah. So that was very, very, I mean, that's very common sense thing. You should not do it. Good. Exactly. And not even from a look perspective, it's not allowed. Movie देखने जाते हैं वहां पर it has to be a warning, right? या तो मुझे बता दो यार. I put a warning that it's injurious to health, but this is a live video. You're not supposed to do that. So thank you everyone who are pinging me, and good that I saw those comments. Otherwise, I would have missed it. And दूसरी चीज ये है कि if you're watching, please make sure when Vibhor is talking, please mute yourself. कई बार पीछे से background noise बहुत आती है and we are not able to hear, so please make sure. So once he is back, Jagdeep, of course, you are the next one, and I see a lot of people waiting, I think, in the queue, and it's been almost 3 hours, I would say. Yeah, 3 hours. So I think it's almost time to wrap this up as well. I know आप लोगों के बहुत questions होते हैं और खत्म तो होंगे ही नहीं, but I think we also have to limit this video. This is like a 3-hour long video now. And let me see, who is this guy?
Sherry, if you can turn on your camera again, otherwise I'll have to remove you from the stream. We've already discussed this. Jo bhi aayega, you have to show your face, otherwise we won't be able to take you on. Sorry, we've had some experiences, so I really want to be mindful. Okay. I know आपका न्यूयॉर्क आ रहा है, so I'm pretty sure it's middle, almost morning now. 3 बज रहे हैं आपके almost. So thank you for joining. And but it's very important to have the face. हमारे last show पे पता नहीं कौन आया था जो mask man था. अभी तक we have some theories and Vibhor has some answers, but till the time we are not sure who's joining, we don't want to entertain that. Sorry. Alright, so लोग अभी से पूछ रहे हैं कल का क्या सेशन होगा. I don't know कल होगा कि नहीं होगा, but इतना मैं जरूर बता देता हूँ for everyone else. Quite possible Saturday evening 8:30. मैं अभी I'm gonna formally tell you guys online, और शायद मैं YouTube पे भी आके और Facebook पे I'm gonna tag it, but I'm very very hopeful. Saturday evening 8:30 p.m. पे there will be another live with another very क्या बोलूं मैं, I mean he's a very critical piece of this case of Sushant Singh. So he's gonna be on the show. We are just locking the time right now. I'll tell you guys who that person is, and he's very very crucial because he was very close and very in sync with the whole situation with Sushant Singh Rajput. So naam or details will be shared tomorrow. So and everything will be on both YouTube as well as Facebook, and do join that. And obviously, a lot of things have been happening around Sushant Singh, so we also wanted to do a little bit of a lighter stuff. So on Sunday evening, your time, 10:30 p.m., I will also have Salim Suleiman, Janita Gandhi, and Ash King on the show. So another kind of a different kind of show, thoda sa sadness or unse thoda alag. We'll have a good kind of discussion with them as well, and some music as well. So there's couple of things happening. And okay, जो 8:30 पूछ रहे हैं, 8:30 p.m. US time, which means 8 o'clock morning India, sorry, 9 o'clock India time. So यहाँ पर अगर 8:30 होंगे, इस टाइम पे 12:48 है. So yeah, India में I think yeah. So 8:30 my time means around 9 o'clock morning, Saturday morning. Oh, Sunday morning. Yeah, Sunday morning your time. It will be someone you will love to hear, someone who will give a lot of details, someone who will also tell us a lot about who and what kind of a person Sushant was. So someone very close and someone who has been, let me put it this way, someone who was maybe there itself on that day or that couple of weeks back, or we'll tell you more. So वो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में. I might get a confirmation by early morning my time, and then we'll do it. So we're just waiting for Sushant, and meanwhile let me just go around the table again. एक बार फिर से सबसे पूछते हैं. Let's start with you. Where are you from? And Jagjit Singh, let's start with you. Got a very nice name, actually. Brings down a lot sorry, of memories. come again, please. Very, very, very nice name, because we all related to the legend. So go ahead. Yeah, I belong from a Punjabi family, and I'm in Kolkata right now. Acha. Yeah. Okay. So so it's just having a day off from work. Got it. So I'm lucky that I'm on the screen now with you people. Absolutely. All right, Chris, where are you from? Varun, hi. A very good evening to you. Thanks for having me on the show. The only reason I'm here is to kind of support both Vibhor and you, and congratulate you on this feat. I think we have made a lot of inroads. I'm from Bangalore. I've been following Vibhor from from the day he started voicing his on Twitter platform. So I just wanted to thank you and Vibhor for I'll having me on ask the others show. later, but since Vibhor is back,
पहले तो विभोर, जब भी आप आते हो ब्रेक से कोई ब्रेकिंग न्यूज ले आते हो, कुछ ब्रेक तो नहीं लेके आए अब? बिल्कुल है ब्रेकिंग, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, ओके, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसे लाने. It's a big news. Okay. And it would directly connect Akshay Kumar to the murder of Sushant Singh Rajput. Holy okay. All right. So at this point of time, Jagjit ji. मैंने कहा था किसी को नहीं बख्शा जाएगा. All right. Go ahead, Jagjit ji. Yeah. Hello, Vibhor ji. Hello, Varun ji. You are doing a great job. I mean, I can't tell you how much we all people of India are liking about this show and everything what you're doing for us, for the nation. So, I mean, it's really great. Thank you. So, मेरा एक ही question है, Vibhor ji. It's related to Imtiaz Khatri and Sandeep Singh. I mean, is it true? वो आपने बताया था या फिर मैंने किसी से सुना था? मैंने एक्चुअली वो शो देखा नहीं था आपका. तो वो if Imtiaz Khatri is in custody, I mean, why it's not coming up on the on the news or everywhere on Twitter or any social media account? तो उसके बारे में मुझे I mean आपसे जानना था, क्योंकि I feel like Imtiaz Khatri is the main culprit. I mean, पहले No, 2 महीने तक he is not the main culprit. He is one of the main accused who actually killed Sushant Singh Rajput, but he is not the person who conspired, who actually had definitely, the I believe he has not. He is the main pawn, but not a main conspirator. No, because पहले 2 महीने तक उनका नाम कहीं किसी भी चैनल्स पे नहीं आया या फिर किसी ने भी लिया नहीं. बट वो जिस तरह से कई वीडियोस में सुशांत के पीछे वो हाथ में ग्लास लेके, या फिर कई वीडियोस में भी देखा है कि जिस तरह से वो सूरज पंचोली के साथ था, या फिर आई मीन उनकी एक्टिविटीज जिस तरह से दिखती थी हमारे स्क्रीन पे, वो पुरानी वीडियो है, वो वाली पुरानी वीडियो है. हाँ जी, वो थोड़ी पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो होगी जी. तो वो क्या अभी वो इज ही रियली इन द कस्टडी? या he is into unofficial custody of CBI. Okay. And how about Sandeep Singh? He's still not been summoned by CBI or any other agency. देखिए, अगर उसको ऑफिशियली कुछ नहीं किया गया तो समझ ये मतलब नहीं है कि अनऑफिशियली उससे पूछताछ नहीं की जा चुकी. अनऑफिशियली सब कुछ हो चुका. अब एक ठप्पा लगना बाकी है. Cameras all the time. That is the reason, because he knows this time is up. Okay. So, is that all you have for Imtiaz Khatri? There are a lot of things, but I'm not at liberty right now to disclose. Otherwise, it would interfere into the investigation. No, I agree with you. No problem. Thank you very much, sir. You are doing a great job, and please continue. We will follow you all the time. Thank you. Thank you so much. Thank you for joining. Before I take others, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा. It's been 3 hours, 3+ hours, so we'll be kind of taking these kind of last set of questions. और दूसरी बात, आप लोग जो पूछ रहे हैं कि अगला, we'll let you know. अब एक आदत बन गई है, विभोर जब भी कोई ब्रेकिंग कुछ करना चाहते हैं तो he will ping me. We'll come online. We'll try to give you some advance notice, but otherwise, I think we will, keep it a little quiet till we have more updates. क्योंकि I think there is so much happening around this case. हर रोज कुछ ना कुछ है. But the moment we have, we will let you know. And secondly, once again, सबको मैं thank you कहूँगा जिन्होंने ये स्मोकर के बारे में बताया. Looks like this has made to the Twitter as well right now. And NCP को tag कर दिया गया है. पता नहीं क्या क्या हो रहा है Twitter पे. So I would please request you guys, please do not smoke, do not do any such activity on a live show.
I really respect your time. I respect what we, and so Man, it is nothing in front. Rajiv Dhawan, the senior advocate, was smoking hookah in front of Supreme Court hearing. I know वो मैंने देखा है यार, पर that's on a totally different level. Vibhor, मेरा एक बड़ा छोटा सा platform है और बहुत छोटा सा मेरा live है. I don't want. I think you're getting a call or something. Yeah, So that's my only request, guys. Please continue of this. All right, please go ahead, Chris. Varun, thank you again. Vibhor, very, very namaste to you, and many congratulations on making this big breaking, and you're echoing the entire voice of India and for SSR Warriors. I had just one question. Since you had a first-hand experience of the so-called mafia, or they approaching you and trying to offer you money to lower the voices, or kind of shut the voices, I think it's important to talk about how can one protect, and I'm sure there are many people who might have experienced this, where the PR or the concerned party is trying to kind of mute a lot of us. So I think it's important to address that and explain to many how can one protect against how can legally, and also the other ways, how can one protect oneself from these elements. It's a very difficult question, I must say. Vibhor, 1 second. Looks like something changed. Your audio is very choppy right now. Is it okay now? No. Can you disconnect your headset and put it back again? Sure. And meanwhile, जब तक बाकी लोग हैं, guys, please make sure you all have your cameras on. I see few people joining. उनको मैं stream पे नहीं ले सकता if your camera is not on. We've had certain incidences, so please make sure your camera is on. Everybody can see who you are. But the camera has to be on. Am I audible now? Am I audible now? Yes. Okay. You asked a very difficult question. It all depends upon person to person, actually, how he deals with that. I have been offered money for the last 4 years continuously by Arvind Kejriwal's party when I filed a case for Office of Profit. 37 MLAs का 1 करोड़ रुपए पर MLA मुझे ऑफर किया गया था. 37 crore. It all depends upon your own consciousness, whether you want to go by it, you want to sell yourself or not. And trust me, everyone is sellable in this world. But money can't buy everything. मैं पैसे से नहीं खरीदा है. So it all depends upon your consciousness, what you decide at a given point of time, whether you would go by the truth, or you would go by the money. For me, मेरे पापा मुझे हमेशा सिखाते हैं. He is a senior lawyer now. उन्होंने मुझे, जब मैं लीगल प्रोफेशन में आ रहा था, तो आई वाज वेरी मच मनी माइंडेड एंड एवरीथिंग, दैट आई वांटेड टू अर्न मनी, क्विक मनी. पापा का पैसा तो बहुत था, लेकिन अपना पैसा नहीं था. So my dad called me up one day and we were sitting on a cup of coffee in the morning. तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा पैसा कमाना है. हाँ जी. तो बेटा पहले लोग कमा, earn the people, and when you would earn the people, you would earn the money in a right way. Great. So that is my philosophy in life. I prefer, मैं क्यों 4 घंटे 5 घंटे आप लोगों के साथ बैठता हूँ? Because I'm earning you all. Great. And correct me if I'm wrong, Varun. Absolutely not. Because it is because of your. Yeah, please. Yeah, exactly the reason. I mean, when I saw your post, I kind of anticipated that, I'm sure there are elements that are working against. So that's one reason I designed that banner yesterday saying "Nation with Vibhor." So that was me. I think. Yeah. I think this man has to be in my team now. Thank you so much, yeah. Thank you so much. Thank you again for.
and you have a very good compliment from one of the top RJs of this country. He especially Yeah. called me No, I was watching RJ. Varun live, and when you guys saw the post, and I was watching it, I was like, kind of, One of I my had friends, goosebumps. one of my friends is a top RJ in Red FM, and he especially called me up. कहते यार किसने बनाया है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ retweet कर दिया. कहता है it's very good creative. Oh, so he's the one So who did that? Yes, that yeah, was me. Oh, very nice. creation with Vibhor. Great. And that truly echoes our thoughts. I mean, we are with you in this. There is no hidden agenda. It's only that you're giving us a voice. So we want to appreciate and kind of continue the good work. Thank you again, Varun. Sure, thank you. We'll share it in the next session. I'll keep that handy and we'll share it with everyone else. Because काफी लोग confused लग रहे हैं, what are they talking about? It's a creative that he's created and it's on Twitter. Maybe Vibhor can tweet it again. Everybody will see. It's a very nicely done. I talked about it with Vibhor a few minutes ago as well. But good to know. Thank you so much. All right. Thank you. Let's go. Yogini. Hello, hi Varun, hi Vibhor. Thank you so much for this platform. Am I audible? Absolutely. Yes. Yeah. So Vibhor, I had a couple of questions over here. Yeah, please. Go. Yeah, so Vibhor, I have a couple of questions. If any of the question is repeated, I would request not to answer that. I can go through the video postcard later on. So my first question is, there was a tweet from Dr. Swami relating to, Mr. Ayash Khan. He is present at SSR's house on the day he died. So what is your view? What is that all about? Can you मैं give ना some परेशान हो clarification चुका on हूँ that? सुब्रमण्यम स्वामी जी के नैरेटिव्स को काउंटर करते करते. By God. मतलब हर रोज एक नया नैरेटिव, हर रोज एक नया नाम, हर रोज एक नया. अब कल को कह देंगे मोदी जी इन्वॉल्व है नहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में. Before, if you say that thing is false, like there is no question, we don't need a why from you. Honestly, I haven't seen that tweet. And क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट ट्वीट नहीं था मेरे लिए, तो जो इम्पोर्टेंट ट्वीट आते हैं उनके वो मुझे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं कि उसके ऊपर मुझे काउंटर देना हो. तो इट वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू अयाश खान ये वो. एजाज खान, if you, he's a nobody who cares about him. No, he was mentioning Ayash Khan, some Dubai-based drug dealer. Oh, like, you're talking not about Ayash Khan. Ayash Khan, the Dubai man who came to his house. Don't bother. Yes. Don't bother. Yes, It's absolutely yes. false. It's absolutely false. Okay, no further counter on that. Then, based on there are a couple of few other questions also. If I can, if the other viewers are fine with me going ahead with that. Please go ahead. So there was in our last live session wherein Lovely was also part. We were mentioned that SSR Sushant was alive. When he was taken to hospital, when he was there at home, when he was found. So मतलब कि वो कहते हैं ना, मतलब कि मरने से पहले आखिरी कुछ मिनट. That's it. So even Meetudi was there. So our first instinct every time, whenever we face such situation, is we always call up a doctor to see whether our loved one is he still there. So it's not a question to them at all. I completely empathize with all of them. I just want to understand whether they are also in some kind of pressure and they are because of which they are not able to come forward. I have taken a stand and I would stick to it that I won't comment on the status of the family. It would give them more trauma if I say something, be it positive, be it negative. So let us respect the privacy and the situation that they are in the last 3 months. Let's be humans. अब हम बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थे, मीतू जी को पता था नहीं पता था. अब वो जब उनका मन होगा सामने आने का, she would come.
let us give that right, that she has a right to come on air when and as and when she likes. So can't we give her that? No, we are We, completely with them. so she has lost a loving brother. Her father has lost a loving son, and Yes. there are n number of conspiracy theories. He druggist tha, ye So tha, we wo tha. completely empathize with them. I'm completely with them. Absolutely. Only completely agree. Completely agree. My only worry is like if people like you, like who are public figures, are getting threats. So the family is an ordinary family like all of us. So are No, they no, no, also no. under They some are pressure, safe. and we They are can safe. help them They are in safe there. any way? अगर उनको कोई प्रेशर होगा तो we will handle it as a, we all are their family, and this is what their family members tell me when I talk to them. कुछ के साथ मेरी बात होती है, they are said कि हमें किसी चीज का डर नहीं है जब तक तुम लोग हमारे साथ. We'll fight it out and we'll get justice for our boy. He won't die. He died a horrible death, but his legacy would be very good, and people would remember him that he died for a cause. And let us pledge all pledge today that we would make sure that the narratives of against him would be destroyed at the earliest. All right. Oh, all right. Let's stick to one questions now, guys. Going forward, and thank you for joining, Yogini. We'll see you in the next session, hopefully. All right. Go ahead, Vishal. Hey, hi Varun, hi Vibhor. Hey, Vibhor, you are doing a commendable job. I really appreciate. And yeah, I'm from Bangalore. I'm Vishal. So I have forwarded your contact details and these videos to my contacts in Republic. So I'm quite hopeful they will go through that in this evening, and you might receive a call. I'll try in Z News Thank also. I you. have few. Yeah. So my question is about the leaked pictures from the crime scene, right? So everyone is saying that okay, the Mumbai police has done a very botched up investigation, or means they have done a cover up, right? But those pictures were leaked by someone, right? What do you think? Is that by police intentionally, so that somehow this cover up is undermined or something like that? Yeah, What do you think देखो about those? जो भी हुआ विशाल जी बहुत अच्छा हुआ, and it made millions of people work on the case and came up with evidence that this was not a suicide, that it was a murder. So we must be वो सब ठीक thankful है. to we must be thankful, चाहे उन्होंने intentionally किया, misguide करने के लिए किया, जो मर्जी किया, it came into it came into our favor to that we rejected the theory of suicide. क्योंकि ये नैरेटिव एक गौरव प्रधान ने डाला अपने गैप उसमें थ्रेड में कि भाई जो परमवीर सिंह है, इज एक्चुअली गुड पर्सन, बट ही वाज अंडर द ऑर्डर्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, राइट? सो बट स्टिल ही मैनेज्ड टू समहाउ लीक दोस पिक्चर्स, राइट? देखिए ऐसा है, परमवीर सिंह की सच्चाई मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, और तो गौरव बताओ प्रधान उसकी जी, क्या सच्चाई है? लेट अस नो, मैंने थ्रेड लिखा, इज ही गुड गाय और बैड? मैंने लंबा चौड़ा थ्रेड लिख रखा है उनके बारे में, उनकी उनकी ओके, डीलिंग्स के बारे में, उनकी इंडिया पुलिस के साथ डीलिंग के बारे में मैंने लंबा चौड़ा थ्रेड लिख रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और श्योर गौरव श्योर प्रधान जी के श्योर, बारे में ना ही कुछ बोला जाए तो अच्छा है। ओके. So he's a He is second not worth my, Subramaniam Swami or what? he is not worth my comment. Oh, okay. Good, So good. I don't comment on people who don't deserve my time. Sure, sure, sure. Okay. And this should Thanks for be answering. Yeah, go ahead. विशाल जी, ये सबको करना चाहिए। हर बंदे को अपनी अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन उसका टाइम डिजर्व करता है। इफ यू आर डिजर्विंग माय टाइम, आई एम टॉकिंग टू यू। Thanks, Vibhor. Oh, thanks, Varun. Sure. Thanks for having me here. Thanks for the answer. All right. Thanks, Vishal. Good luck. Good luck. Thanks. All right, Aparna ji, go for it.
एक minute. We'll have last 20 minutes now because I have a conference call at 2 p.m. Yes. This is the last So set it of will be, people. so I will be available till 1:55 today. Okay, sure. Go for it, Aparna, quickly. Not really. Good afternoon. Nope. Can you hear me now? Get the mouthpiece closer. Yeah, better. Absolutely. Can you hear me now? Hi Vibhor, hi Varun and everybody. Honestly, I would say I was not following this case thoda time pehle tak, but then I discovered and actually explored you guys working on this one, and I was actually moved by what you guys were bringing. So before I ask my question, I have a small thing to go. Anything that happens which requires public attention, there is a theory and there is a parallel conspiracy theory that goes on. So, with this narrative of Sushant that you guys are doing, my question is, was he collateral damage to a bigger picture of narcos or whatever is happening, or was it a heat of movement that blown out of proportion? Well, I would say both. The plan was to kill him. Right. And when you, yeah, let me To finish. kill him by drugs, but again something happened. They had to kill him immediately, and that led to all of us coming together. So by saying this, you really are like saying that this was a planned murder from a long time. Absolutely, it And was what would be planned. the reason behind it? Very soon you'll all get to know the exact reason behind the planned conspiracy, and all the faces behind it would be unmasked, be it whoever so it is. I assure you that. Right. And what would be the root cause behind it? Again, the motive is under investigation, and I cannot comment on the investigation process. I'm sorry for No, that. that's what my point was. But I'm really influenced by you, Vibhor, and I'm really appreciate what you guys are doing, and I wish you all Thank the best luck and safety for most of all. And I wish you get us all to the root cause of it. That's it. Because again, एक normal person के साथ ये होता है, there would be many murders and many incidents going on. एक ये हुआ है जिसने world attention को attract किया है, and maybe this is the time we guys work on uh, removing the root cause of any such incident that happens in future. Absolutely, I totally agree with you. All right. Thanks for the support That and was thanks my for question. joining. Yeah. All right. Let's quickly wrap this up. Raman, please go ahead. Raman Raghav. Hello, sir. Thank you so much. Sure. Quick question for you. You know, इतना time बीत जाता है, there's destruction of evidence and all kinds of things. How would you uncover all the destruction, the time delay, the lag and gap? वो सब कैसे वापस से recreate होगा? देखिए, there are some things that we cannot do. There are some things we can do, and there are something that can be done and cannot be done at the same time, and should not be done for the benefit of public at large. So कैसे लैग करेंगे, कैसे कवर अप करेंगे, that is the job of the investigation agency, and they are good at it, and they're highly professional people in covering up everything. So don't worry, everything is under control. Okay, thank you, sir. All right. Thank you. I Dheeraj. think Anupama ji is back. We She'll should be the ask her last one for tonight. She'll be the last one for tonight. So let's go, Dheeraj. Let's go. Hi, Vibhor. Dheeraj यहाँ Sydney से भाई Australia से. अरे I saw your tweet. Some people looking after outside your place. I was really worried for you. So hope everything is fine there. And just want to thank you all. That the job you guys doing is way beyond commendable. It's really good. And just want anything we can do from here. More than happy to help from any way. Thank you so much, Jesus. That's great.
And I just have a quick question. I saw a tweet from Sunena saying that she lodged a complaint against you because you spreading fake news. So I just want to question her through you that has she filed complaint against Aaj because they are the one spreading the most fake news again, in Sushant case. She won't answer to me. I hope she answers to you. I tagged her in the tweet and get no reply from her. So No, if she's I have watching, blocked I want to ask her. again. It is true that I had blocked her a long time ago, and I Yeah. unblocked her for Yeah. inviting her to the show last time, and I blocked her again because I don't want any negativity in my life. Yeah, Ignoring that's idiots is an art which I have learned very well, and I hope that you also learn ignoring idiots. we're learning hard way. We're learning it. Okay. All right. Thanks, guys. Thank you, and thanks for joining. Again, I know a lot of people want to get answers, but we're left with very few minutes. So let's make it quick, guys. I really want to respect Vibhor's time. Prateek ji, please go ahead. Prateek Agarwal. Prateek Agarwal, can you hear? Okay. Hi, Vibhor. Hi, Varun. I have come here to just thank Vibhor. Yeah. Am I audible? Yes. Hello. Yes, we can hear you. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes, you are. Hello. Yeah, looks like he has some issues. Yeah. Hi, Varun. Go on. And hi, Please go ahead. Virod. Thanks a lot for providing this opportunity, and you're doing a great job. You're doing a stupendous job. I'm calling from Netherlands. Just a question to you: is Subramaniam Swamy fair enough? Because in this game, because there are many flip-flops in his statements also regarding the drug case and regarding the murder angle. So that was a primary question because I follow him a lot, because I follow his Virat, Hindustan Sangam, and all those kind of things. The second thing is, So if you follow him, then you would know that what is his modus operandi for the last 25 years. He takes up a case, he builds up the hype, and then he returns. If you have been following him closely, then tell me one single case which he has concluded. Yeah, I agree with you. Even in the case of Sunanda Pushkar, I agree with you on that case. Sunanda Pushkar, National Herald, Palghar, Sushant Singh Rajput, Nirbhaya. Yeah, nothing has The been list is endless. Nothing. He builds up the hype, riding on his mass following. कुछ दिन तक चलता है, लोग भूल जाते हैं. हमारे देश की याददाश्त बहुत कमजोर है. And I think we should ask him every day. Let us remind him every day and ask him, what about this case? What about this case? And then he would realize कि अब लोगों को याद आना चालू हो गया. अब लोग मेरे लोगों को बेवकूफ बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. Yeah, agree with you. And second question, Vibhor, because the time is very short. Is Narendra Modi, Amit Shah, are they true enough to give justice to SSR? Because Absolutely. Absolutely. Then that is a wonderful thing. Last thing, Vibhor, ये जो drug में I have only 6 minutes left. I would have to cut you short now. Sure. Because I have 4 people waiting. Okay. Thank you so much. We'll catch up next time, or you can ask me on DM. Sure. Rohit, please go. विभोर जी नमस्कार जी. नमस्कार. सर ये मूवमेंट चलती रहेगी ऐसे ही आगे? बिल्कुल चलेगी अगर आप और मैं साथ हैं तो. हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम 1947 में आ गए महाराष्ट्र को आजाद करने के लिए. बिल्कुल जी. शायद आपने कमेंट भी किया था. हाँ जी किया था. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आप जैसे और 99 बंदे चाहिए हमें. आप तो एक हो ना, 99 और विभोर चाहिए हमें. नहीं आप विभोर के साथ रोहित, वरुण, अनुपमा जी, सारे जितने लोग जुड़े हैं सब रहेंगे तो अच्छा रहेगा. मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा बंदा देखा है जी. जिंदगी में मैं 50 ईयर का हूँ, पहली बार ऐसा बंदा देखा है मैंने. क्या बात है. Great. Kudos and more power. Thank you, Jay. Thank you very much. I think it motivates. All right, Anupama ji, go for it. Anupama ji, you are fine. Everyone is asking for you. You suddenly shut down.
बैटरी। नहीं, मैं भी आपको ही फॉलो कर रही हूँ विभोर जी। भगवान ने चाहा तो हम लोग जिंदा रहेंगे और साथ में लड़ेंगे। आपके बिल्कुल पास है। वक्त बहुत कम है। इफ यू कैन हियर मी, जस्ट गिव मी अ थम्स अप साइन। ओके, मैं आपसे बहुत जल्दी कुछ मेरे 2 सजेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, मेरा पहला सजेशन आपको ये है कि जो लीगल एडवाइसेस होते हैं वो हमारे पास नहीं होते अकॉर्डिंग टू फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्लीज ऑनलाइन क्लासेस लीजिए और उनको फ्री करिए, और हम लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। Varun, can we do it? Please. Varun is very sweet. He agrees to everything. And second suggestion is sir, जो बॉलीवुड का अभी हम क्लीन अप कर रहे हैं, जो बॉलीवुड का हम क्लीन अप कर रहे हैं विभोर जी, उसमें एक कंस्ट्रक्टिव चीज हम ये कर सकते हैं कि हम एक सेपरेट सेंसर बोर्ड बना सकते हैं जो कि रिलीजियस एंगल से जो मूवीज रिलीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए पीके जो हुआ, या किसी भी रिलीजन के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस या बुद्ध के लिए, या जो भी रिलीजन हो, उनके लिए एक सेपरेट सेंसर बोर्ड होना चाहिए जो उसके अप्रूवमेंट के बाद ही आप मूवी को रिलीज कर सकते हैं। Absolutely. तो We उससे would किसी की भी surely. फीलिंग हर्ट नहीं होगी, किसी की भी रिलीजन की। तो ये देखिए मेरे 2 बताऊं क्या है, सजेशन मैं थे। बताऊं। देखिए अनुपमा जी, मैं बताऊं क्या है? इस जी। देश में ना, इस दुनिया में 3 चीजें बेचना बहुत आसान है, आपको बेचना आना चाहिए। धर्म, नफरत और डर। राइट। फियर, रिलीजन एंड क्या था, और एक चीज थी, डर। ये हाँ। तो ये अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी परफेक्टली बेच देते हैं ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर सेल्समैन में से एक। तो ये सर जो लेकिन मूवीज आप बना क्या वो, कुछ कर सकते हैं इस सेंसर बोर्ड के लिए जिससे हम लोग आगे बढ़े उसमें? देखिए आप एज अ वकील आप कुछ कर सकते हैं क्या? आप मुझे कह रही हैं कि मैं दुनिया के सबसे तगड़े सेल्समैन को चैलेंज करूं, तो मैं आपकी बात मानता हूं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, जरूर चैलेंज करूंगा। थैंक यू विभो जी। एंड द वन लास्ट सजेशन, मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछना है। स्वरा भास्कर जैसे लोग, आपने कहा था नेम और शेम करो, तो मैं आपका ही प्रिंसिपल फॉलो कर रही हूँ। जो स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं जिन्होंने सीए के टाइम पे बहुत गलत सजेशंस दिए थे, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग वहां पे आके बोले भी थे, तो इन लोगों के ऊपर कोई क्रिमिनल एक्ट चार्जेस क्यों नहीं लगते? क्योंकि देखिए जाने तो वहां पे गई हैं दिल्ली में, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे वो हिंदू की हो, तो ये जाने जो गई है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के ऊपर किसी ना किसी तरह तो लगती ही है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। और आपको शायद पता नहीं है, दिल्ली पुलिस हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड एक्शन। दिल्ली पुलिस हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड एक्शन ऑन माय कंप्लेंट। मेरी, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो मैं उसमें वी वर इन लॉकडाउन। उसके बाद मैं हिमाचल आ गया 3 महीने से, तो आई कुडंट डू इट। अब मैं वापस जाऊंगा तो आई वुड श्योरली मेक श्योर कि शी इज पुट बिहाइंड बार्स। ओके। विभोर जी, वरुण जी, नमस्कार। सॉरी मैं अनुपमा का टाइम स्लॉट ले रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं बार बार ऑनलाइन होके ऑफलाइन हो जा रहा था इसमें। सॉरी। विभोर जी, मेरे पास 2-3 बहुत छोटे छोटे सवाल हैं फिल्म स्टार्स को लेके। जो बड़े बड़े स्टार्स हैं बेसिकली, सो हम लोग देखते हैं कि मूवीज वगैरह कलेक्शन वगैरह पे डिपेंड करती कितना कलेक्शन किया। तो ये कलेक्शन जो होता है किस तरह से पता चलता है? क्या इसके प्रोपोर्शनेट ये लोग टैक्स देते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देते। अच्छा, तो मेरा एक सवाल आ रहा था। किसी के ऊपर हमारी कुछ कार्रवाई कर दी है। सॉरी, आई कैन नॉट मेक इट पब्लिक राइट नाउ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। विभोर जी, मेरा दिमाग में एक चीज आ रही थी कि जो छोटी स्टेट्स हैं, जो छोटी स्टेट नहीं, छोटी जगह हैं जो, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ के, कि क्या ये टैक्स वगैरह जो देते हैं इसके बेसिस पे दिखाते हैं क्या? क्योंकि उसमें अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है जो, ठीक है ना, टिकट्स वगैरह कैश में परचेज करेंगे। पहले तो टिकट आपको याद रहता था कि टैक्स डिपार्टमेंट की रेट्स पड़ती थी सिनेमा हॉल्स पे, और ये टिकट्स के ऊपर अपना ये एक्साइज या पता नहीं जो भी टैक्स रहता है उसका टिकट्स ये पेस्ट करते थे, और वो कभी कभी देखा जाता है कि हॉल्स फुल हैं, कि मतलब लोगों ने टैक्स, जो पिक्चर देख रहे हैं टैक्स दे के देख रहे हैं कि नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये जो सिनेमा हॉल के मालिक वगैरह हैं ये टैक्स देते हो पूरा, और वो बेसिकली मनी कैश में कलेक्ट करते हो? ये देखिए सर, अब हर कोई चोर है देश। जी। मैंने भी चोरी कर रखी है, आपने भी कर रखी है, वरुण ने भी कर रखी है, सबने कहीं ना कहीं लॉ ब्रेक कर रखा है। तो अब हर किसी को अगर हम इस डेफिनेशन में ले आएंगे ना, तो मेरा विभोर जी दूसरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्या इसमें ब्लैक मनी इस तरह से आता है क्या, कि जैसे इनने का 100 करोड़ का या 200 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक है, और प्रोपोर्शनेटली अपने सिनेमा हॉल मालिकों ने इनका टैक्स दिया,
और वो हो सकता है कि वो कैश में टिकट्स खरीदे गए हैं सारे के सारे, ठीक है, और सिनेमा हॉल मालिकों ने ब्लैक मनी उसके थ्रू चैनल किया है, और जबकि हॉल्स में टिकट मूवी चली ही नहीं है। देखिए इसमें it requires a lot of deep investigation into everything, and it's again a mafia. ओके, ठीक है, बस एक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्या इस तरह से ब्लैक मनी चैनल किया जाता है क्या, जैसे इंटीरियर्स ऑफ यूपी बिहार। टाइम ओवर हो चुका है और आई स्टिल हैव 2 people left. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच साहब, नमस्कार। We'll talk again. All right. Last Please 4 go ahead. minutes, 2 minutes for each. Yes, Vijay ji, please go ahead. विभोर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे नैरेटिव आ रहे हैं ड्रग्स के लिए, और ये कुछ सुशांत ने जो गेम ये किया था A1, ओके, तो इसमें ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मेन रीजन है, जो भी मैंने व्हाट्सएप पे या ऐसे ही सब सुना है कि कोई माइनर पे रेप हो रहा था तो उसको देख लिया, उसके बाद ये सारा मर्डर हुआ, ये हुआ, तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए ये क्यों ये जो मेन मुद्दा है वो पीछे जा रहा है, और ये बहुत खतरनाक चीज है। सर कुछ पीछे नहीं जा रहा, बस अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है तो अटैक करने के लिए लेता है, डोंट वरी, वी वुड अटैक सून। कुछ लेकिन ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, जैसे अभी बहुत सारे नेता अभिनेता का हम लोग ने नाम सुने हैं, तो इट्स रियली शॉकिंग कि ऐसा भी होता है। दे आर रियली वेरी क्रूअल। हम शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत शौक देने बाकी हैं सर अभी आप लोगों को। वी हैव जस्ट स्टार्टेड नाउ। अच्छा, बट ये कहाँ पे मिसप्लेस में होगा, ये आएगा, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल जरूरी होगा, है। जब तक नहीं आएगा मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। Great. सर एक दूसरा क्वेश्चन है, मे बी दिस इज अ सिली क्वेश्चन। So sorry. With 3.5 घंटे and he has to go. He really has to go. मेरे को 2 मिनट है, and I have to take the last. Please. Thank you so much. Okay, go for it, Prerna. Prerna, yeah. Hi. Your mic is off. Sorry. Hi, Varun. Hi, Vibhor. Hello. Thank you so Hi, much hi. for having me over. I know you have just maybe a minute. I don't have any question. I've been following everything around. I just want to say one thing, that I live in Dubai, and I would like to connect with people who are in this city around me, and if we can do anything to do with SSR. And if I just I just came to this live show just to use this as a platform. I'll send my details to Varun, and if anybody would like to connect with me and we can do something. I've actually started to work on one of his 50 dreams, which I will announce once I finish with it. But seriously, that's all I wanted to say. Thank you so much, and all the best. Stay safe. We'll get you connected. We'll get you connected very soon in Dubai. That'll be great. Absolutely. Thank you. All right. You can Thank you. DM me or Varun anytime. We'll get back to you. Sure. Thank you. All right. Thank you, Prerna. Thanks for joining. Bye-bye. All right. Thanks, Vibhor, for all this time. आज तो कुछ ज़्यादा फिर से बात हमने करी, but at the same time, let me go. Yeah, but the last thing is, I think Ria also has been summoned. That's another news which I wanted to kind of flash. And thank you once again, Vibhor. We'll talk soon, and we'll go live again very soon with some more updates. Absolutely. All right. Thank you. Goodbye. Good night. Bye for now.